यो चैट, आई एम लाइव। भाई किसी ने लिखा था मैग्नस इज ब्लैक, यूट्यूब ने हाइड ही कर दिया मैसेज। भाई हम कितना हो गए ना आजकल। भाई मैग्नस इज ब्लैक इज लाइक रॉन्ग स्टेटमेंट, क्रेजी। सो दैट्स द पावर ऑफ इंग्लिश चैट। इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हमने बनाई है कि एक इंसान और उसके पीसेस का हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सो एनीवेज चैट, क्या हाल है भाई, कैसे हो भाई? लेट नहीं है, बिल्कुल ऑन टाइम, बिल्कुल ऑन टाइम। एंड आज भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस है। टुडे वीडी हैज प्लेड 1e4 अगेंस्ट ममेद्यारोव। सो आज के पेयरिंग देखते हैं भाई। सबसे पहले इट इज chat wise, by the way, I must introduce Pragg has already won against Dubov. What a beautiful performance by Pragg with the black pieces, crushing Dubov literally in like 0 moves. What a beautiful performance by Pragg. So Pragg has already won against Dubov. Van Forest is playing Duda. Karakin versus Shankland. Anish is playing Grandelius. He's playing the Catalan. Then it is Rapport against Isipenko, Caruana against Carlsen, and Vidit against Mamedyarov. And challengers में we have Arjun against Nguyen Thai Daiwan. So भाई सब बढ़िया रहेगा। ये कैसे भाई? अक्षत, राघव, वेदांत, इंजन शाह, अरिन, अवनीत, अक्षय, कैसे हो भाई सब? भाई आज इटालियन ऑन द बोर्ड। बाय द वे कारुआना के बाल मस्त लग रहे हैं, आई हैव टू से भाई। इसके कर्ली बाल, हाउ टू पुल ऑफ अ कर्ली हेयर कट, लर्न फ्रॉम कारुआना भाई। करना है तो ऐसे करो, वरना मत करो भाई। एनीवेज, सो और चैट यू कैन विन चैनल का मेंबरशिप्स एज यूजुअल, प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैंने लिंक सारे के सारे शेयर करे कम्युनिटी पोस्ट में। एंड नाउ विल चेक आउट द गेम्स। बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया है हम, बिल्कुल बढ़िया भाई। गले की मेडिसिन भी आ चुकी है, तो होपफुली गला भी ठीक हो जाएगा कल तक। इससे घटिया एंट्री नहीं देखी मैंने। अरे एंट्री कहाँ कर रहे हैं हम, तो एग्जिट की प्लानिंग कर रहे हैं भाई। एनीवेज, सो चैट वाइड थिंकिंग हियर कि भाई C3 खेलना है कि D3 खेलना है, कैसल खेलना है कि Knight खेलना है कि H3 खेलना है कि क्या खेलना है, भगवान जाने की। D4 खेलना है कि B4 खेलना है कि भाई कितने मूव्स है वाइट के पास। ऐसे सोचा जाए तो C3, D3, D4, B4, कैसल्स, Knight G5, H3, ओ माय गॉड, Knight C3, ओ माय गॉड। भाई कितने ही चाले हैं भाई वाइट के पास। भाई कमाल ही है वैसे, इटालियन के जादू अलग ही है भाई। कार्लसन भी यही सोच रहा है। देखो कार्लसन, कितनी ऑप्शन है भाई, कितने ऑप्शन है यार। E4, E5, Knight F3, कितने ही ऑप्शन है इसके पास। मैं क्या करूंगा भाई? ओहो हो। कार्लसन भी यही सोच रहा है भाई। अरे एक्चुअली भाई, थैंक्स फॉर समोसे, लेट्स गो वीडी। यस भाई, लेट्स गो वीडी, थैंक्स अ लॉट भाई फॉर द सुपर चैट, मींस अ लॉट भाई। समोसे आते रहेंगे, समोसे की चलती रहेगी। वीडी सेविंग कैटलिन फॉर जीपी, नो कैटलिन सनी। भाई वो तो हमें पता लगेगा ग्रैंड प्री में क्या होगा, क्योंकि ग्रैंड प्री में सो फार डूबॉफ है उसकी कैटेगरी में, और डूबॉफ खुद कैटलिन खेलता है। सो आई एम नॉट श्योर दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। नाइट G5 भी ऑप्शन है भाई, खेल तो सकते भाई। खेलने में कोई मना नहीं है, अच्छी मूव नहीं है। ब्लैक एंड कैच सर्वर टेक्निकली पॉसिबल तो है। विदित शुड स्टॉप प्लेइंग D4। कल पिज्जा पार्टी नहीं भाई, क्योंकि आफ्टर ऑल कार्लसन ने ड्रॉ कर लिया भाई, बचा लिया हम सबको। हम सबकी डाइट का ख्याल रखते हुए न्यूट्रिशनिस्ट कार्लसन। वेलकम वेलकम इंकरेज भाई। GM हु स्पोर्ट्स अ फुल बॉल्ड लुक, मीन लाइक 10 years मे बी। प्राइम टिक्कू भाई, प्राइम टिक्कू के वॉचिंग बढ़ जाएगी भाई, डोंट वरी। वी शुड गो ऑल आउट और जस्ट लूज दिस गेम। ईशान, बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट चैट, लेट्स लुक एट द स्टैंडिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें चैलेंजेस की भी स्टैंडिंग्स देखनी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी 2 राउंड है भाई, आखिरी 2 राउंड। बाय द चैट, Pragg has already won as mentioned. Pragg has played a marvelous game. He's already won his game against Dubov. Let's check out the standings. First of all, challengers chat. चैलेंजर्स में अर्जुन के 9 पॉइंट है और इसके पास 7.5 है। तो अगर या तो जोनस जी हार जाए तो हम जीत गए। अगर जोनस जी ड्रॉ करते हैं तो हमें एक ड्रॉ चाहिए। सो बेसिकली एक ड्रॉ चाहिए बस 2 में। अगर आधा पॉइंट 2 बन जाए तो भाई हम गारंटेड विनर है, दैट इज गारंटेड। अर्जुन को आधा पॉइंट चाहिए 2 में। एंड देन इन द मास्टर्स ऑफ कोर्स भाई कार्लसन 7.5 पे, वीडी इज ऑन 6। तो वीडी को एटलीस्ट एक विन तो चाहिए ही चाहिए। ही नीड्स एटलीस्ट 1 विन। एक विन, एक ड्रॉ विल प्रॉब्ली गेट हिम इन टॉप 3 एंड 2 विन्स विल प्रॉब्ली गेट हिम इन टॉप 2 और समथिंग, डिपेंड्स ऑन द टाई ब्रेक ऑफ कोर्स। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स गो टू अर्जुन गेम। अर्जुन गेम में क्या खेला है इसने? लंदन है क्या? अरे यार लंदन नहीं है, शिट माय बैड। ओके बिशप F4। आई थिंक अर्जुन कंफ्यूज हो गया चैट, क्या है बस ये पॉन यहां नहीं है, बाकी तो लंदन ही है ना, बाकी तो सब लंदन ही है। सो ऑलमोस्ट द लंदन, 95% लंदन प्लेड बाय अर्जुन, वेरी वेल डन। We go to the game of Vidit now. Vidit Gujrathi game में Duo will be replaced by he cannot reach Berlin. Let's see if he cannot reach Berlin. अगर रिप्लेस होता है तो भाई कौन करेगा उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसी पेंको आएगा भाई, क्या एरिगेसी अर्जुन को चांस देंगे, क्या मुझे चांस देंगे? मे बी आई शुड हैव माई बैक पैक। यार चैट क्या बोलते हो, बैक पैक कर लूं क्या? क्या बोलते हो चैट? क्या पता, बुला ले यार, यू नेवर नो।
डुओ से वीडी का मैच होता, फ्री में 1 पॉइंट मिला था भाई, वो तो वैसे ही पॉइंट मार लिया ना, उसको पॉइंट भी मिला और रेटिंग भी मिली, दैट्स मच बेटर देन फ्री पॉइंट। अरेंज जी भाई पहले ही पॉलिटिक्स, D4 पीप्स आर सुपीरियर भाई, आज पता लगेगा भाई। D3 के बाद H6 प्लेड बाय Mamedyarov, लेट्स सी, प्रिवेंटिंग नाइट G5 बिशप G5। What a game by Pragg, masterpiece. Yeah, by the way, chat, I must again repeat, yeah, I think it's so rare we see somebody win like this. I mean, he has the black pieces to crush somebody with 0 moves. I mean, so rare, so beautiful game by Pragg. Really proud of him, and well played, very well played. So that means we already have 1 plus point in the for Indians already. What a good start to the Indian team. Let's go to the game of Carlsen once. देखते क्या चल रहा है। भाई आपको मैक्सिमम आर्बिटर की तरह बुलाएंगे भाई, ये क्या बातें कर रहे हैं भाई, ये क्या बातें चल रही चैट में भाई, हम खेलेंगे, प्लेयर खेलेंगे भाई। By the way, chat, E4, C5, Knight 3, Knight C6, okay, all castles, C3, D4. Caruana playing this setup against the Sicilian. Let's go to the game of Vidit. I also play like Pragg, अरे awesome भाई, फिर तो आप भी जीनियस बनने वाले हो। एशियंस में चेस इंक्लूडेड है इस साल, विशी इज मेंटरिंग, यस आई सॉ दैट पोस्ट, आई सॉ दैट बाय चेस.com इंडिया। बढ़िया हो शिवांश भाई, तुम कैसे हो यार? गाइस स्ट्रीम आते ही लाइक सब्सक्राइब तो कर देना। क्वींस गैम्बिट 95% रन वेरिएशन, एग्जैक्टली राघव भाई, एग्जैक्टली माय पॉइंट। एक सी पॉन का डिफरेंस है यार, एक सी पॉन से क्या मतलब हम ओपनिंग नाम चेंज कर दे, मतलब इट डजंट मेक सेंस। मतलब अगर आपने कपड़े पहने हैं, आपके पास ब्लैक शर्ट है, आपके पास ब्लैक पैंट है, अगर आप रेड सॉक्स पहन के आ जाओ, उस पर कोई बोले यार आपने रेड क्यों पहना है, दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल। सो ब्लैक बोलेंगे ना, यू हैव वर्न ब्लैक, सो दैट्स द मेन थिंग चैट। अर्जुन हैज प्लेड द लंडन ऑफ कोर्स। हाँ, डैड की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई भाई। विल डुबॉफ लूज रेटिंग पॉइंट्स बिकॉज लॉसेस? नो, ही विल नॉट लूज रेटिंग पॉइंट्स। चाय कॉफी कॉफी, टुमारो नॉट रेस्ट डे, टुमारो इज द फाइनल डे भाई। और बाय द वे टुमारो इज द फाइनल डे, इट विल स्टार्ट 2 hours अर्लियर। कल शायद 4:30 बजे भाई, कल 6:30 बजे नहीं है मैच, कल 2 घंटा पहले है, मैं खुद ना भूल जाऊं बस। Have you tried pick and gambit? No, I have not tried it yet, bhai. Italian and Rilo plays his tactical position knight move. True, bhai. True. I agree. It's very positional. By the way, castles के बाद h6 के बाद rook e1 played. अगर knight g4 खेलोगे तो I'll just play rook e2, then I'll push your knight back. So this is what Pranali plays. Black just castled. Now knight d2 played. Bishop b6 preparing for b4. And now I think the knight will go to f1. The pawn will go to a4. Black will go a5 and so on. लास्ट में बस मेरा कोर्स ले लो, बच गया। नहीं रे भाई, डुओ का कोविड डुकेसिस की वजह से हुआ है। अरे नहीं भाई, बढ़िया दक्ष भाई। कल के प्रेडिक्शंस कल करेंगे तो चलेगा बेस्ड ऑन टुडेस रिजल्ट्स? यस भाई, यू कैन डू इट टिल 8 PM, यू कैन डू इट टिल 8 PM टुमारो। सो आज का तुम्हें 8 बजे तक करना है, दैट्स ओनली थिंग। इमोशनल डैमेज, ओहो, कल के बाद साहिल भाई गले को थोड़ा मिल गया, वेल डिजर्व रेस्ट बाय द वे। भाई कल था स्ट्रीम भाई, कल था स्ट्रीम, परसों के बाद रेस्ट मिला। Bishop f4 played on 32nd move, Sahil 85% लंडन। यार देखो यार, ऐसी बात नहीं है, I do not live in a fantasy world. I mean, ऐसा नहीं है कि कुछ भी f4 खेल दोगे तो मैं लंडन बोल दूंगा उसको। बट हाँ, अगर 32 नहीं, अगर तुम लाइक अगर 29th मूव पे खेलोगे तो यस, आई थिंक दैट विल बी द लंडन फॉर श्योर। कैसे करें भाई? चेक द लिंक्स इन द कम्युनिटी पोस्ट। A4 A6 A4 इंक्लूड होता है, आई प्ले कैसलिंग, यस ऑफ कोर्स A6 A4 विल बी इंक्लूड फॉर श्योर। Why should really not play Catalan GP? Because you were playing it. Indian chat, the thing is, if you have a choice, if you have both prepared equally well, playing a system which your opponent does not understand is much better. For example, ऐसे मेरे साथ कोई लंदन खेलता है, तो because I played myself, I'll be better prepared to handle it as black. So that's sometimes very important. Yo, Pawan bhai, क्या हाल है? Doing puzzles helps. I am able to understand better patterns. Won a few games. अरे awesome भाई. Puzzles is the number one thing, man. It's the number one path to improvement. Puzzles and analyzing your own games. अगर बंदा ये दोनों चीजें करता रहे ना, I think they are sure how to improve, for sure. लंदन पे कॉपीराइट क्लेम कर दें साहिल भाई? भाई नहीं आ रहा है यार, ऐसे नहीं है यार। अगर कोई हमारा कंटेंट यूज कर रहा है, हमारी ओपनिंग यूज कर रहा है, तो हम इतने हम वो नहीं, हम क्लेम नहीं करेंगे। वी विल नॉट क्लेम इट चैट। ब्राइड कॉल्स ऑफ वेडिंग आफ्टर ग्रूम थ्रोस वरमाला एट हर, ये क्या है भाई? डज विदित प्ले इंग्लिश? आई हैव नॉट सीन हिम प्ले द इंग्लिश फॉर श्योर। ये मैंने खेलते हुए देखा तो नहीं है। I think he only plays D4 mostly and sometimes E4 as you can see. Attendance लगा दी अमन भाई, लगा दी भाई। Will he play the exact same line against Wesley last year? Yeah, he has played many times. I think ये opening तो बहुत normal है भाई। इतना I think I don't even play E4 and even I have played this many times in online chess. So this is very common. White plays knight E2, knight F1, knight G3, bishop E3 sometimes or knight E3, so on, knight G3 and so on.
समय को रेड करो, ये लो भाई। अब भाई लगता है मतलब तुम ये बोलोगे समय को रेड करो, मिस्टर बीस्ट को पैसे भेजो, गूगल को सर्च इंजन सिखाना बनाना सिखाओ, बढ़िया है भाई। ओहो अनीश नायक जी क्या हाल है भाई, हम अनीश गिरी का नाम मेरे थे, अनीश नायक जी आ गए। ओह टिक्कू बन गया हिकारू फॉर अ मिनट, भाई आई एम ऑलवेज हिकारू, असली हिकारू हम ही है। बाय द चार्ट लेट्स गो टू, अनीश का नाम आया तो अनीश गिरी की गेम देख लेते हैं यार, क्या खेल रहा है अनीश गिरी। बाय द वे अनीश हैज अ चांस ऑफ कमिंग, he can technically I think he can technically even he cannot come first. If Carlsen loses he can come first, if Carlsen loses Anish can still come first, that's definitely possible. और Caruana Carlsen को definitely हरा सकता है, that's very very important. So let's see क्या चल रहा है अनीश की गेम में भाई। अनीश की गेम ये है d4 knight f6, ग्रैंडफेल्ड खेला है ग्रेंडेलियस ने, queen b3 played, bishop g2 takes j, bishop f5 knight d7 a4 all opening theory and ग्रेंडेलियस लग नहीं रहा प्रिपरेशन में, आराम टाइम नहीं खेल रहे। Let's go to game with it now. कल तो क्या ही हराया अनीश को, या ये तो है भाई, ये तो है। अनीश को इतनी बुरी तरह मैंने हारते हुए लाइफ में कभी नहीं देखा। नोवा कुछ में 3 डॉटर्स पे क्लिक कर सकते हो तुम। बहुत लाइकली टू विन हिज लास्ट 2 गेम्स, अर्जुन इन 1 पॉइंट। मतलब बट व्हाई 1 पॉइंट? Okay, you mean he can win both, yeah? Maybe. But okay, even if this tie break, I think Arjun will win still. आज के गेम तो अनीश जीत गया ग्रेंडेलियस, ये तो है भाई, आज अनीश के पूरे चांसेस हैं। Find yourself a friend who speaks about you, by the way, send us speaks. No, ऐसा नहीं है, ऐसा दोस्त दुनिया में मिलते नहीं यार। If any friend treats you like the way I treat the London system, I think he's lying and he's going to stab your back at some point. आज भी विदित पे पजल लगाओ, विदित पे पिज्जा लगाओ क्या? आज का पता नहीं भाई, गेम थोड़ी बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। इकाइश आई थिंक मैंने देखा, तुमने इकाइश नाम से टैग नहीं किया था ना? आई थिंक आई सॉ इट बट आई वाज़न्ट श्योर कि इफ इट्स यू। विदित से शार्क इंटरेस्टिंग होगा गेम, हाँ भाई बहुत क्लोज होगा, बिकॉज आई थिंक विदित के वाइट पीसेस है, इफ ही वांट्स टू कम इन टॉप 3 दिस इज द लास्ट चांस ही हैज। भाई अगर ग्रेनेडियस अनीश को हरा देता तो मजा आ जाएगा यार। क्यों मजा आएगा? वी वांट अनीश टू विन, हम चाहते हैं कि अनीश जीते। अनीश आएगा तो वो भी अपना देसी खिलाड़ी है भाई, टॉप 3 में आना चाहिए। What leads to a top player like Anish losing like he lost yesterday? I think a bit of overconfidence is definitely a part of it. That is very sure. I mean, if let's say you are a bit overconfident, you'll probably end up ignoring threats. That's very, very common, yeah. So it's a combination of being less prepared, being a bit overconfident, and हाँ मैं लिंक डाल रहा हूँ यार, गेम लिंक डाल रहा हूँ मैं, गेम लिंक मैंने डाल दिया है, that's done. Bit डालता हूँ, that will make it a bit more, concise. ताकि लोग अपने डर ना जाए, बड़े लिंक देख के बहुत आता है, पीपल गेट स्कैर्ड, डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। गेम लिंक भी डाल दिया भाई मैंने, दैट्स आल्सो डन। अनीश डिडंट ईट समोसा बिफोर यस्टरडेज गेम। बसिंग का भाई ये तो है यार, हमारी डिलीवरी नेदरलैंड्स में उतनी स्ट्रांग नहीं है बेस, सो वहां पे जब भी बर्फ पड़ती है तो हमारे समोसे टक जाते हैं रास्ते में यार, तो उसकी वजह से वी हैव टू सीज ऑपरेशन इन नेदरलैंड्स स्टार्ट बिकॉज समोसे खराब हो गए तो बिजनेस का लॉस हो रहा था। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू ट्रांसफर समोसा टू द इंडियन प्लेयर्स इन नेदरलैंड्स। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ग्रुप ई में आई श्योरली ट्राई टू डू सो। म्यूट हो गया भाई, नहीं भी आवाज आ रही है। ओके या फिर मैं देखा था कैश में देखा था, अच्छा था। आज वॉचिंग कितनी कम की है, वीडियो की चांसेस टॉप 3 में आने के। वॉचिंग कम है बिकॉज आई थिंक विवेक की स्ट्रीमिंग समय, तो ऑब्वियसली भाई समय स्ट्रीम रहेगा तो फर्क पड़ेगा। एंड सेकंड बिकॉज आई थिंक मेरी आवाज सुन के लोग पक चुके होंगे। एंड थर्ड बिकॉज वीडियो के टॉप 3 चांसेस पूरे हैं भाई। एक बिटकॉइन फेंक के मार दो कोई मेरे मुंह पे प्लीज। अरे वाह भाई, बिटकॉइन शब्द दिखते ही यूट्यूब ने हाइड कर दिया उसको यार। जस्ट इमेजिन कितना लाइक दैट जस्ट टेल्स यू कि बिटकॉइन वाली स्ट्रीम रेकमेंड क्यों नहीं होती इस समय की, बिकॉज बिटकॉइन को तो हाइड कर दिया यूट्यूब ने। ये देखो फिर से हाइड कर दिया भाई। Anyway, chat, A4 played by VD. Now let's go to the game of Anish. Okay, nothing happening. By the chat, again mentioning this, Pragg has won his game. Pragg is clearly, playing some marvelous chess. He defeated Vidit. He almost drew Caruana, and now he has defeated Dubov as well. Great prospects for Pragg. Let's go to the game of Carlsen now. In Carlsen's game, we saw it till d4. Now d5 play, trying to counter in the center. e5, knight e4, bishop d3, takes, queen b6, queen e2, defending the bishop. And now I think Carlsen will probably push the bishop back with a6. Very important. Let's go to this game now. बिटकॉइन जा रहा है, तो आई गेस खाली बिटकॉइन ही है। आई थिंक मुंह पे मारना अलाउड नहीं है। मुंह पे मारना लिखो भाई, देखो मुंह पे मारना आता है क्या? मुंह पे मारना शायद वो फ्लैग हुआ होगा। किंग सैक, नाइस।
Tikku coin to the moon. Arjun Agassi, yes, we'll go to Arjun's game as well. By the way, important game for Arjun. If he wins today, he's the champion. ये मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ, but yeah, every day he's increasing his chances now. By the way, A3 is a very safe weapon for white. I've played this myself. This is what you play when you want at least a draw in hand. This is very, very common for white. And black will, of course, go B6 and you will take on D5 now. So you can also play E3, of course, but at the end, you will take on D5. मुंह में मारना बिटकॉइन, मुंह में, अच्छा भाई दांत टूट जाएंगे यार, कैसे नहीं यार. टिक कॉइन, नाइस. So Shaq has played ED4 chat, and I have a question for you chat. CD4, knight D4, like for example knight D4, bishop D4. Like what do you play as white now chat? What do you play as white? Like black is won a pawn, right? Black ने प्यादा फ्री का मार लिया. So has VD blundered already, or does he have a move here? Yo Anisha, how are you? आज Magnus का important दिन है by the way. If Magnus loses, that's the only way Anish can come first. So if he loses, Anish can come first. Okay. Anyways, yes, we want to play knight b3. If you go bishop e6, then we have a5, and we kind of trap the bishop. After bishop c5, we have knight c5, dc5, and we technically gain the bishop pair. We can push on with e5, e6, and we can play moves like queen b3. And this pawn sack is perfectly normal because even though black has 4 against 2 here, it's completely blockaded, and white has 4 against 2 here. So it's very interesting, and I think VD would be much better in this position. So okay, this is not the move, of course. So we go to this position now, and really has captured black. So black should not capture. He should probably play a move like rook e8, putting pressure on e4 first. भाई आप भी समय को बुलाओ स्ट्रीम पे कभी. भाई बुलाऊंगा यार फॉर श्योर कभी, अभी थोड़ा बिजी है. आई एम सो ग्लैड पीपल थिंक ऑफ मैग्नस नाउ व्हेन दे सी माय कमेंट्स. someday मैग्नस विल बी स्क्रॉलिंग यूट्यूब. ही विल बी लाइक, आज देखता हूँ क्या चल रहा है, कौन मेरे बारे में क्या प्रचार कर रहा है. Chess assist. Okay, let me click. Who is this Anisha? Complimenting me. So let me contact her. You know, who knows? भाई ये GMST कोई GST की तरह कोई टैक्स लग रहा है भाई. प्लीज भाई ये टैक्स वैक्स मत लगाओ. प्रग वैसे ऐसी पेन को है क्या? वो कल है यार, वो कल है. क्या बिजी पोकेमॉन? वही तो भाई पोकेमॉन खेलने बिजी है, वही तो बोल रहा हूँ. काइंडली से व्हाट इज ग्रैंड पिक्स चेस टूर्नामेंट? ग्रैंड फिक्स में एक वीडियो डालने वाला हूं चैट. आई पोस्ट इट ऑन सेकंड, बट इन द एंड इट्स द वे जहां पे 2 लोग कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्ट होंगे. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड वी होप कि वो 2 लोग अनीश, विदित और हरिकृष्णा में से होंगे. सो लेट्स सी क्या होता है. हे पल्लवी, हाउ आर यू? लेट्स गो टू द गेम ऑफ अनीश वंस. देखते हुए क्या कर रहा है. कुछ नहीं कर रहा है. सो लेट्स गो टू द गेम ऑफ वीडी बैक. ब्रो मैं सारा कोर्स खरीदा है क्या? सोचता भाई, हाँ मतलब वर्ल्ड रैपिड्स के लिए लेगा वो. When he plays the World Rapid and Blitz next, तो उस टाइम पे लेगा. उसने बोला था मुझे. चैनल लोगो अच्छा बनवा लो. ग्रिम भाई मेरे सेकंड चैनल का लोगो कैसा है वो बताओ. रैपोर्ट की गेम बहुत मस्त है. रियली? लेट मी चेक. रैपोर्ट की गेम. रैपोर्ट. ओके, मस्त तो है भाई. लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे. ओके, वी हैव वाओ. व्हाट? Okay, this is a line. I am not aware of this, to be honest. Knight c3, c6, bishop c4, d6, castles, h6, d4, queen c7, knight h4, g5, takes, queen f3, bishop g7, knight f5. This reminds you of the perk, yeah? Somehow I think rook d8 and so on. Makes sense. He's the only one who can afford to buy for $25. Yeah, but I think I'll offer him a discount because he's the world champion. So I'll offer him a discount for like I think around 23%, I think, because world champion 23 वही बनेगा. MVL has a lot of chances from GP. True भाई, true. Prediction वाले सारे लिंक भाई आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट पे. Let's check out the game of Carlsen again. कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ भाई यहाँ पे. Let's go to the game of Duda. ये तो अभी ओपनिंग में ही नाच रहे हैं. Let's go to Vidit game again. भाई नाइट की जगह बिशप से कैप्चर किया तो भाई बिशप से करेंगे तो फिर तो बिशप पेयर वैसे ही मिल गया ना भाई. फिर तो बिशप पेयर वैसे ही मिल गया. मार सकते हो. नाइट टेक्स d4, एंड आई थिंक व्हाइट हैज इनफ कंपनसेशन बिकॉज b4 खेलेंगे. नेक्स्ट खेलेंगे बिशप b2. ये दोनों बिशप भाई कतलेया मचाएंगे. सो वीडी हैज प्रिपेयर्ड फॉर दिस. सो अगर वो मारता है ये पॉन तो वीडी की प्रिपरेशन में सीधा फंसेगा भाई. आधा कोर्स 1000 रुपए मिल जाएगा भाई. डिपेंड्स कौन सा कोर्स होता है भाई. वन भाई फॉरफिट पिन दिस. नहीं यार भाई ऐसे मत बोलो यार. डोंट डिस्काउंट प्लस एफर्ट्स. आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस.
प्रग ने क्या ही गेम खेली, देखो भाई पीसेस के, इट्स लाइक मतलब रशिया ने पूरी आर्मी यूक्रेन के घर में पहुंचा दी, उनको डरा डरा के वो पॉलिसी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सेम चीज प्रग ने पीसेस बस खड़े कर दिए और ही स्कैर्ड नाउ, ही स्कैर्ड, सो दैट्स व्हाई आई थिंक प्रग हैज आउटप्लेड हिज ओपोनेंट साइकोलॉजिकली. नाउ वी गो टू द गेम. भाई प्रेडिक्ट करने रिजल्ट कब आएगा भाई? 8 बजे हम लॉक कर देंगे. काइंडली एक्सप्लेन व्हाट इज ग्रैंड प्रिक्स, आई ऑलरेडी डिड डेविल गाय. प्रग जुबोव का 1-0 कैसे हो प्लीज बताओ, मैच कहां देखूं? भाई यार कोविड है डुबोव को, भाई कोविड है. डुबोव मुझे जोक सुना क्या भाई? भाई नहीं भाई ये नहीं सुना मैंने. If PD comes in top 3, would you play the candidates? No, Abhinav भाई, candidates के लिए ग्रॉम्पी होने वाला है. This is problem with the world giving discount to people who can already afford rich and getting richer. Anisha, if you want to learn the learning system, just for you, a discount of how many moves Carlsen has played up till now in his game. जितने मूव कार्लसन ने गेम में खेले होंगे अभी, उतने का डिस्काउंट मैं तुम्हें दूंगा. लेट मी चेक कितने हैं. ओके 11%. 11 इज नॉट मच एक्चुअली, सॉरी. उससे बड़ा तो वैसे 30% मिल ही रहा है. माय बैड. सूर्यांश होगा, टीम डॉट पर क्लिक करो, वोट होगा भाई. आस्क ईशान इफ देयर इज एनी इशू ऑन डिस्कॉर्ड. आज 8 बजे लॉक हो जाएगा. क्या पेल रहे हो भाई? पेल रहा हूं मतलब कुछ दिख तो नहीं रहा पिलता हुआ मुझे. डुबोव ने डुबा दिया. अरे डुबोव लॉस बाय स्कॉलर्स मेट. सेकंड चैनल की इस वाले से अच्छी है लोगो. क्रिम भाई थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो. मैं बनाऊंगा भाई लोगो फॉर जल्दी. बाय द वे आफ्टर CD4 ही प्लेड D5. शाक ने कहा मुझे घंटा फर्क पड़ता है, प्यादे नहीं चाहिए हमें बिशप चाहिए भाई, तो प्यादे नहीं चाहिए. साहित्य को रॉबिन हुड टेक्स फ्रॉम द रिच एंड गिव्स टू द रिच. करण जौहर ऑफ चेस कम्युनिटी. अरे भाई आई मीन आज तो मैं कॉफी भी लेके नहीं आया यार. आज तो करण जौहर मत बोलो. कल चेस की स्ट्रीम पे डुबोव सेड एजिपेंको डिड समथिंग रशियन व्हिच इज इन्वेजन. ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग. आई डिड नॉट सी इट. हाउ हैज द पोजीशन बाय विदित एंड शैक नॉट बीन रीच्ड बिफोर? आरंट मोर टैलेंट पोजीशन रीच बिफोर? सत्यजीत आई एम श्योर इट हैज बीन रीच्ड बिफोर. अगर नहीं भी होगा तो इट्स बिकॉज प्रॉब्ली विदित केम अप विद सम आइडिया हियर. बट टू बी ऑनेस्ट आई डू फील कि टैलेंट में इतने सारे मूव ऑर्डर्स है ना, तो यूजुअली यू ट्रांसपोज इनटू सम अदर ओपनिंग बाय सम अदर मूव ऑर्डर. सो it might have happened maybe after ED5 knight D5 will transpose into something more normal. So transpositions बहुत है and sometimes it can feel like कि कभी खेला नहीं है, but ऐसा नहीं होता. क्या है कोड मुझे पता नहीं था. कोड है टाटा स्टील चेस. आई थिंक टाटा स्टील चेस कोड है और 30% ऑफ चल रहा है अभी. चैट यू कैन डेफिनेटली बाय इट. इट्स वैलिड टिल टुमारो बाय द वे. कल तक ही वैलिड है, कल बंद हो जाएगा. बाद में मुझे पक्का कोई ना कोई मेल लिखेगा यार आर देयर एनी डिस्काउंट्स गोइंग ऑन द कोर्स. मैं कहूंगा नहीं भाई नहीं है अभी डिस्काउंट. मेरा ट्वीट नहीं देखा आपने कल? भाई देखा अश्विन, मैंने देखा था मैंने. जॉब लगी टिक भाई समझ से भेजो. अरे भाई आपकी लगी तो आप भेजो ना भाई. टाटा स्टील चेसी है गारंटेड. डुबोव को रशिया में एंट्री नहीं मिली. क्या बात कर रहे हो भाई? वैसे भी एंट्री पे भी आर्मी होगी तो एंट्री देंगे नहीं उसको. कहीं यूक्रेन की साइड से तो नहीं एंट्री कर रहा था भाई. भाई कोर्स पर कोई डिस्काउंट है क्या? ये लो भाई स्टार्ट हो गए भाई. एज VD वांट टाटा स्टील आर देयर डिस्काउंट्स ऑन कोर्स? विल VD विन ग्रैंड प्रिक्स? भाई प्रोफाइल पिक में घोड़े जैसे लग रहे हो, चेंज करो. मेरी पूछ है क्या भाई? कौन था आदमी भाई? कौन था ये भाई? था कौन भाई? घोड़े ऐसे लग रहा. कौन था आदमी? कौन था ये आदमी भाई? गायब हो गया आदमी. ये बजिंगा जी. मेरी पूछ दिख रही है आपको कैसे है? दिख रही है कैसे? नहीं दिख रही ना, तो बस फिर घोड़ा कैसे हो गया? डुबोव शेडेड करयाकिन. अरे यार करयाकिन वाज लाइक चल यार अब वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हो गई तो हम पैचअप कर लेते हैं. तो लेट्स पैचअप. लाइक भाई घंटा भाई. जुबाव लंदन और नॉर्मल लंदन भाई. 9 का है खेलना है. पॉन खेलेंगे पे. Why समय don't to stream 2000 now he plays psycho. भाई मुझे क्या पता यार उसके मूड स्विंग से साइको होने के मैं कैसे कर सकता हूँ. दो डिस्काउंट एक्सटेंड कर दो, 2 को सैलरी मिलेगी कुछ भी भाई. Why some ओके भाई $25 बहुत ज्यादा है यार. हाँ यार उसमें ऐसे कुछ यार. तुमने भाई आपकी लिस्ट आपके लिए यार मैंने डॉलर हटा के रुपये कर दिया भाई. जाओ ले लो भाई, आप ले लो. डॉलर हटा दिया मैंने भाई. एंजॉय पार्टी करो. भाई व्हाट योर सिम सेटअप? सो यहाँ पे एक लैपटॉप है. यहाँ पे
दिस इज द कैमरा, यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे चीयर लीडर्स हैं, दे कीप चेयरिंग मी ऑन, दैट्स व्हाई यू सी कि कितनी एनर्जी है मेरे अंदर पॉम्पम्स के साथ. आई कांट शो यू देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्यूब विल नॉट अलाउ मी. एंड उसके अलावा बाकी सब कुछ नहीं है. बाकी कैरी उस कोने में बैठा है, कैरी मिनियाटी, वो अलग स्ट्रीम कर रहा है अपना, बस इतना है सेटअप भाई. काइंडली एक्सप्लेन व्हाट इज ग्रैंड प्रिक्स चेस. भाई ग्रैंड प्रिक्स चेस है भाई कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए टूर्नामेंट है भाई. वहां पे 2 लोग जाएंगे, पिलो फाइट करेंगे और उनको कैंडिडेट्स में से मिल जाएगा. So let's go to the game of, by the way chat, according to the engines, this is something better for white. After ed5, like in this position, apparently the best move was either a5 or bishop d4. d5 is not the best move. Now ed5, knight d5 is slightly better for vd already. So it does feel like vd is going to have a slight edge in the opening. So let's hope so he can do so. कहीं मिस्टर 20 तो नहीं बैठे? नहीं यार, वो यूएस में ना यार, तो आई कॉल्ड हिम अप. ही वाज लाइक कि यार अभी आप फ्लाइट्स बंद हैं तो प्राइवेट प्लेन लेके आना पड़ेगा. एंड ही वाज लाइक कि यार इतना अफोर्ड नहीं कर सकते अभी. चीयरलीडर्स आपको चीयर कैसे करती हैं भाई? पॉम्पम्स हिला के ऐसे, गो गो साहिल, गो 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 वीडी, ऐसे करके भाई. पैसा ही पैसा, पैसे के लिए नहीं यार, वो भी एक्सपोजर के लिए, सॉरी आई मीन सपोर्ट के लिए यहाँ पे है. कितने मूव्स हुए यार? मूव्स हो चुके हैं 12 मूव्स हो चुके हैं. COB6 इनकमिंग, हाँ भाई ऑफ कोर्स. वन शो अपने आप हो जाते हैं सबमिट, आई थिंक. जस्ट कंफर्म कर लो एक बार डिस्कॉर्ड पे. वीडी गेम फ्रॉम द स्टार्ट, लेट्स गो टू वीडीज गेम फ्रॉम द स्टार्ट. वी हैव द टिपिकल इटालियन, बट लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से वीडी ने खेला है. ही हैज प्लेड अर्ली नाइट d2 एंड नाउ d4. Because black played 97, so that's why d4, and now a4 takes d5, and he will of course take on d5. वो एक्सपोजर गलत निकल गया भाई एक्चुअली. समय अनाउंस bob6. भाई bob6 क्या है भाई? What is bob6? एक डर्बी है ईस्ट बंगाल को है भाई. आप तो बस मुंह दिखाया, क्या पता पूछो. ये अभिनव भाई यार कभी मिलेंगे लाइफ में तो पूछ, दिखा दूंगा अपनी भाई जो तुम्हें देखना है. COB6 ही मींस नाइस. आई एम वेटिंग फॉर 50 मूव्स इन मैग्नस गेम. बाय आदित्य भाई, बाय. डिस्काउंट के लिए क्या? अच्छा ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस. ये मैं सोचा नहीं यार 50 मूव के लिए करूंगा मैं. श्रीनाथ कैटलैंड कोर्स कैसा है? श्रीनाथ कैटलैंड कोर्स आई हैव नॉट सीन, बट श्रीनाथ है तो भाई फॉर श्योर. Some kids in here are so gross. या वो ऑनेस्टली भाई वो एक्सपोजर वाले मैंने जोक नहीं मारा, वो गलती से निकल गया. आई रियलाइज कि 2 मतलब हो सकते हैं, तो वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से. लंडन इज द बेस्ट. डिस्काउंट है भाई टाटा स्टील चेस. साहिल को टाइम आउट, रुको मैं अपने को टाइम आउट देता हूँ भाई, रुको भाई. दे दिया भाई, टाइम आउट गिवन. So chat now, let's go to Anish's game. We have this position, rook c8 खेला ब्लैक ने. I think chat idea is very simple. You want to go c5 at some moment, and इस rook को queen के opposite डालने का, very simple. But Anish is thinking, that's surprising now because he is prepared. Let's go to the game of Anish Giri. Oh, Anish Giri में ही है. Let's go to Carlsen's game. Carlsen game में 12 मूव हो चुके हैं. Queen e2 played, bishop d7, bishop a4. और chat एक interesting चीज करने की सोच रहा हूं मैं. लेकिन ऑफ कोर्स इट माइट नॉट वर्क. अब जब इसी गेम की बात हुई है, 12 मूव हो चुके हैं कार्लसन की गेम में, ठीक है. जितने मूव कार्लसन की गेम चलेगी, ठीक है, जितने मूव कार्लसन की गेम चलेगी उतने मूव का मैं उतने % का मैं डिस्काउंट दूंगा, लेकिन सिर्फ एक बंदे को, ठीक है. सो आई विल पोस्ट अ लिंक, ठीक है. आई विल क्रिएट अ लिंक आफ्टर द गेम एंड्स, एंड मैं उतने % का डिस्काउंट दे दूंगा एक बंदे को. वो लिंक एक ही बार यूज कर सकते होगे. जो फर्स्ट बंदा यूज करेगा ही कैन यूज इट, ठीक है. तो अगर 100 मूव चले गए तो 100% डिस्काउंट गारंटेड, ठीक है. लेकिन एक ही बंदे को मिलेगा वो, ओनली फॉर 1 मूव. आप 116 मूव हो गए तो 100 से ऊपर स्टिल मींस 100. मैं पैसे दूंगा नहीं भाई कोर्स लेने के लिए. Let's check out the game of video again. 5 people नहीं यार, 5 people नहीं, only one यार. अगर 100 में हो गया तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगी. हाँ भाई, अर्ली ड्रॉ लेंगे वीसी भाई, हो सकता है अखिल भाई, हो सकता है, ले सकता है. दैट इज ब्रेव.
रुपीज का डिस्काउंट देना परसेंट नहीं, नेक्स्ट भाई फॉर 1% आई डू इट भाई, 1% आई डू इट। सो भाई सारे उम्मीदें करो कि कार्सन की गेम बहुत लंबी चले। Whose chess course is best according to you? I think chess-based DVDs are really awesome, yaar. Apart from, I'm not saying my course is the best even. Chess-based DVDs are really good. I think Chessable I'm not a big fan of. It's too expensive. कपिल शर्मा इन COB6 क्या बात कर रहे हो? Seriously? क्या बात कर रहे हो तुम? Seriously? सही में? क्या बात कर रहे हो भाई? अरे वाह भाई, अगर ये हो गया तो कमाल ही हो जाएगा यार। चेस की तो पॉपुलैरिटी भाई स्टॉन्क्स। सागर शाह स्पेलिंग इन द बैकग्राउंड। अभी खालसा के मैनेजर को कॉल करके बताता हूं कि फिक्स करने के लिए 10। अरे यार ये ऐसा दर्दनाक स्कैम, ऐसा दर्दनाक स्कैम। मुझे दर्द हो रहा है यार, मुझे दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है भाई ये स्कैम सुन के। मैं इतना खुश हो गया था भाई, इतना खुश हो गया था भाई मैं यार, आंखों से आंसू आ गए भाई मेरे को। अरे यार, अरे भाई ऐसे स्कैम मत करो भाई, सच में आंखों में आंसू। सो हैप्पी भाई कि भाई वो कपिल शर्मा खेलने वाले 110 मुझे तो पैसे दोगे क्या भाई? मार लोगे मार। कपिल शर्मा कहां से चेस खेलेगा भाई? भाई तो बाकी सारे कॉमेडियन सबको आती है क्या भाई? जाकिर खान कौन सा मतलब चेस में ग्रैंड मास्टर है? Really thinking too long, but ठीक है यार, I think he must be remembering preparation यार। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है भाई, दिल तोड़ दिया यार, दिल तोड़ दिया मेरा, दिल तोड़ दिया भाई। नोवाक ने भी 8 बजे प्रेडिक्शन खत्म हो जाएंगी, सो 8 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। Let's go to the game of AG now. Rook C8 के बाद AG has played A5. It's an idea to prevent B5. अगर Black plays B5 now, White takes and the A file opens up. That's something AG can use for his Rook. उसके Rook को नाचना बहुत पसंद है, डांस करना पसंद है, वॉक पे चलना पसंद है, वो Rook जा पाएगा फाइनली। Now we go to Carlsen's game. Carlsen game भाई, Rook C8 played, 12 मूव हो चुके हैं, 12% का डिस्काउंट कंफर्म्ड ऑन द कोर्स ऑफ 1%। लेट्स सी चैट क्या होता है। लेट्स गो टू द गेम ऑफ Vidit। What about 95 in Carlsen game? 95 कैसे खेलोगे यार? There's a pawn on E5. भाई कपिल cannot COB6. I don't know भाई, तुम ही लोग बता रहे हो। प्रेडिक्शन यार लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में। भाई डिनर कब करते हो? जब 12 दिन करते हो। डिनर करता हूं मैं यार 5:30 पौने 6 बजे करना पड़ता है भाई। रात को फिर मुझे इतनी भूख लगती है ना भाई, रात को तो मैं भाई मतलब क्या ही खा जाऊं भाई, लिटरली। Ajit Singh and Amir Khan and Samayana versus Nikhil, super chat for sure 3-2-1. Yes, BD slightly better. So, slightly better because after ED5, Knight D5, it's like matlab, the pieces Black has, they're kind of limited, even though they look like they're very good. It's like after a move like let's say Knight E4, I defend my pawn on D4, and White pieces have more prospects. Yeah, you can clearly see बहुत ज़्यादा chances हैं, more ideas of White. Black has less prospects, and of course White is better developed also. But he has to be careful. अगर सारे पीस एक्सचेंज हो गए तो in the end game with an isolated pawn, Black will simply be better. So he has to be really careful. And isolated pawn में usually attacking chances मिलते हैं because you have more space. You have the E5 square for example and so on. Yeah, center is open and White can utilize it. Black के pieces थोड़े से pawn से रुके हुए हैं and all these pieces can be utilized on the king side at some moment. Yeah, but these pieces not really. नेपो न्यू ट्वीट, क्या ट्वीट किया उसने भाई? का कोर्स है भाई, टोटली आपके ऊपर है ग्रिम भाई, टोटली आपके ऊपर है भाई। अबाउट 95 इन Carlsen game instead of Rook C8. हाँ, बट हाउ कैन यू प्ले 95? अच्छा, यू मीन टैक्टिक? बट इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली बिकॉज D5 के बाद द क्वीन इज अटैक्ड and you have to move the queen now. So that's the issue, chat. You cannot play this. I understand if the queen was hanging, you would probably take on A4. But the queen is hanging, so it's not possible. Let's go to the video game again. Arjun did not play the London. He played Jugaru London. मतलब Jugaru London खेला है उसने. He played this position like London here with the pawn on C4. So मतलब like 95% London खेला उसने. बाकी सारे pieces तो same ही है ना. So almost he played the London, and after E3, bishop B7 takes. We have the Queen's Gambit, bishop for variation.
Can Chahal take part in COB6? He surely can, but I'm not sure if he has the time though. नेपो ट्वीट भाई प्लीज सी, क्या ट्वीट किया नेपो ने भाई? नेपो ने क्या ट्वीट किया? आई थिंक ही इज बैक या थोड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के बाद ही इज बैक. लेट मी चेक. हैं? पता नहीं क्या, छोड़ो भाई. आई कैन अंडरस्टैंड दिस ट्वीट भाई. If the game goes for 1-on-1, you will have money to buy who scores the. नहीं भाई, बॉस को डॉन जी हम ऐसा नहीं करेंगे. That is not what will happen. So 100% is the max first. Have you met Nikhilesh Jain? Yes, I have. I have played him. I have met him. I have talked to him over the phone. हाँ भाई, सब कुछ. I have shaken his hand and जो भी. Actually उसने कुछ ट्वीट किया है. Actually genuinely ट्वीट किया उसने कुछ. So it was not really 2-0 भाई. उसने actually कुछ ट्वीट किया है. Has your attention span to play classical chess reduced after streaming? इंजन शार्प बिल्कुल भी नहीं. I am desperately waiting to play classical chess. कब मौका मिलेगा भाई? मजा आ जाएगा भाई. In fact मेरे को टाइम ट्रबल इशू होते थे. So even if my patience has reduced a little bit, I think that will only help me. Yes, this is the live position. This is the live position by the way. This is the live position right now. भाई क्या मुर्गी पहले आया कि अंडा? हाँ, रुको मैं किसी मुर्गी से पूछता हूं यार. हेलो विवेक, मुर्गी पहले आया कि अंडा यार? अच्छा, वो कह रहा है अंडा है यार, बिकॉज वो अंडा खा गया. How did you decide to give the Magnus count 5 seconds after I bought your intro course? Did you buy the course? Really? Did you buy the course? क्या बात कर रहे हो? Really? I did not see it yet. अरे थैंक्स अरे भाई अनीशा जस्ट बॉट द कोर्स. अरे वाह, नाइस यार. सो बढ़िया. सो यूल गेट अ डिस्काउंट वंस मोर. दैट्स ऑसम इफ दिस हैपेंस. वेलकम टू द कोर्स अनीशा एंड होपफुली यू लर्न सम चेस नाउ. अब तक तुम मैग्नस को देखने आए थे तुम, अब तुम चेस को भी देखने आओगे. कैन यू collab with Nikhilesh bhai? Surely someday, man. Surely I would love to. Surely someday. This is the refresh position chat. This is the current position on the board. Yeah, this is the current position. How to buy a course? Go to chessassist.com भाई. आप कोर्स की पायरेटेड कॉपी कहाँ से खरीदे यार? पायरेटेड बन ही नहीं सकती अतुल भाई, बिकॉज वो कोर्स ही ऐसा है, उसका पायरेट बन ही नहीं सकता. इट्स इम्पॉसिबल. वो मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है. जैसे कोर्स क्यों नहीं डाला? बिकॉज आई डोंट नो, आई डोंट वांट. इट्स द पर्पस इज ऑफ कोर्स मनी इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट रियली टू यू नो जस्ट अर्न मनी. अपनी ऑडियंस के लिए है और किसी के लिए नहीं है. आज क्या करूं मैं दूसरे डिस्काउंट का? वो तो है यार, वो तो है. सॉरी अबाउट दैट. अब कोई ना, लंडन सिस्टम कोर्स लेना, क्या पता 100 मूव चला जाए तो फ्री का कोर्स तो चलेगा ही चलेगा. टेम्पो का कंसेप्ट समझाओगे? टेम्पो का कंसेप्ट, हाँ भाई देखो, अब मान लो कि यहां पे ये है, ठीक है. अब इस पोजीशन में मुझे खेलना है बिशप f1, ठीक है. अब मैं यहां पहले खेलूं बिशप d3, आफ्टर रुक e8 आई प्ले बिशप f1, सो आई लॉस्ट ए मूव. तो कई बार क्या होता है, हमें कई बार इमीडिएटली कोई मूव नहीं खेलनी चाहिए. वी शुड वेट फॉर द करेक्ट मोमेंट, ताकि हम एक ही बार में खेल पाए वो मूव. हमें दो बार वेट ना करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, इस बिशप का हम बहुत लेट डेवलप करेंगे, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव अ स्क्वायर फॉर इट. ये स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. सो और हम बिशप d2 बहुत रेयरली डेवलप करेंगे, अनलेस हमारे कोई और पीस नहीं है इंप्रूव करने के लिए. अगर कोई और पीस इंप्रूव करने के लिए है तो इसको इंप्रूव करेंगे. एंड वी विल नॉट प्ले दिस टू d2, वी विल डायरेक्टली प्ले टू f4 और g5 और व्हाटएवर इज अवेलेबल, इवन sac और h6 डायरेक्टली. दैट्स व्हाई टेम्पो इज इंपॉर्टेंट. मतलब टेम्पो मतलब होता है ऑटो रिक्शा. इस टूर्नामेंट का प्राइस पूल क्या है? इस टूर्नामेंट का प्राइस पूल है भाई 10 समोसे हमारी तरफ से, 20 समोसे भाई क्या बोलते हैं बीसा की तरफ से, और 4 इमरती भाई हम देंगे साथ में. गिव डिस्काउंट ऑन नंबर ऑफ मूव्स प्लेड बिटवीन प्लग एंड डुबोब. हाँ भाई, वो डिस्काउंट तो भाई हर दिन अवेलेबल है भाई. ये नंबर ऑफ मूव्स डिस्काउंट तो हर दिन अवेलेबल है. 0 भाई. नाउ वी कम टू द गेम ऑफ कार्लसन अगेन. By the way, 13 moves played in Carlsen's game, so 13% discount confirmed. Bishop b3 and knight d5. I think he will try to, of course, put pressure on the d5 pawn now.
Vidi down on time in prep. What's the matter with him? Among, it's possible. It's very much possible that in Vidi's game, I don't know, he might be bluffing. I know it sounds a bit stupid. But he might be just purely bluffing, by the way. Bhai, people are asking for shout out. Please go and shout out. Ruko, I'll shout out. Ruko, bhai. I'll do a shout out. Ruko. एंजल प्रिया स्कैम है, चेस खेलो बेवकूफो। चलो भाई, चिल्ला दिया भाई। कर दिया भाई। So shout out done. Let me go. Kraken blundered, really? I'm so happy. Really? कहाँ ब्लंडर किया भाई? कहाँ है ब्लंडर भाई? कहाँ है ब्लंडर? Where is the blunder? I don't see it. अरे यार, स्कैम कर दिया यार, बताओ। अनीश गिरी प्लेड इवेंट्स गैम्बलेट। अनीश ने D4 खेला है मेरी जान। इट्स नॉट वर्किंग। शाउट आउट इक्वल टू बाहर जाके चलाना। यस भाई, एग्जैक्टली। How can you bluff by taking this much time? Isn't playing quick moves more like bluffing? Amok, no, actually. I don't know, matlab, because the thing is, if you are prepared, let's say you're prepared till here, it's very unlikely you will not consider D5. It's very unlikely, very, very unlikely. So, I find it hard to believe कि उसने D5 नहीं देखा. That's my perspective, by the way. He has captured on D5 now, so he's calculating now. Has Hikaru quit classical? नहीं भाई। E4, E5 lifestyle repeater। मैं खुद E4 खेलता नहीं यार, तो I would not be the best guy to prepare a course in that. As I mentioned, purpose is not to just mint money. It's to offer which I basically understand really well. Otherwise, point नहीं है। टाटा स्टील में प्राइस मनी कितना होता है भाई? पूरा का पूरा 11 रुपए भाई, शगुन के साथ। हाउ आर यू GM अंकल भाई साहब? शशांक जी भाई, आपका किस्मत अच्छी है, मेरे बचपन के दोस्त का नाम शशांक था, वरना टाइम आउट तो पक्का मिल गया होता कब तक। भाई हिकारू ने कहा कि स्ट्रीम करूंगा तो सिर्फ चाहल के साथ। हाँ यार, वही ना, तभी तो सिर्फ बीजर की वॉचिंग दे रहा है अभी वो। मतलब तभी। यू सेड समय हैज क्विट स्ट्रीमिंग, व्हाई यू लाइड टू अस? अतुल भाई, खुद सोचो क्यों किया होगा। किसी ने खुद बोला था मुझे करने के लिए। Conspiracy is only underrated. Yes. No. Yes. No. कौन से ओपनिंग खेलते हो? अरे भाई, सारी ओपनिंग खेलते हैं। वी कवर ऑल ओपनिंग्स। बाय द वे, लेट्स गो टू द गेम ऑफ कार्लसन अगेन। ठीक है ना, कुछ हुआ नहीं। लेट्स गो टू अनीश गेम नाउ। अनीश गेम में भाई 12 मूव हो चुके हैं। AB6 played. He actually played B5. Yeah, he played B5. Takes, and I think at some moment the rook will come to A7 or A6, of course, pressure डालने के लिए। Why Hikaru play less classical chess? Because he is Hikaru भाई, he loves online chess, नहाल की तरह। टिक्कू जी, सही से सही बताओ ना, क्या प्राइस पूल है यार? मुझे पता नहीं यार, बस ये मान के चलो हर प्लेयर को कम से कम $50,000 रफली मिलते होंगे, बिकॉज हिकारू को उतने $55,000 मिले थे टू प्ले दिस इवेंट इन 1 year, many years back। विडी का बराबर है। अभी स्लो मोड की जरूरत नहीं है, आई कैन रीड द मैसेजेस भाई। जब मैं ड्रैगन खेलता हूं, सामने वाला मेरोक्सी खेलता है, कोई आइडिया है क्या? नहीं यार, मुझे आइडिया नहीं है, मैं गेम कोई देखी नहीं है, सो आई डोंट नो क्यों खेलते हैं। व्हाई आई डिडंट स्पैम? आई डोंट नो भाई, प्लीज डोंट स्पैम भाई। एंड गेम में हमेशा फोर्स करना चाहिए भाई, हमेशा, चाहे कुछ भी रेटिंग हो। इंजन इज शोइंग बेटर बिकॉज ऑफ knight e4 chat, and this move is kind of a very interesting move because first of all it controls important squares. C5 is controlled, D6, F6 and so on. Also the bishop is opened up now. Totally we can imagine some crazy ideas. For example, let's say black plays A6, ठीक है? Chat, can you find the move for VD here? $50, what the fuck, इतना ज्यादा? $50 क्या है भाई? मुझे अपनी पावर्स का यूज करना है, किसको दूं भाई? अभी किसी को नहीं भाई, अभी किसी को नहीं। बताओ चैट, वाइट टू प्ले। $50 क्या है अमोक भाई? क्या है $50 का भाई? 50,000? अच्छा हाँ, इतना मिलता है भाई, टॉपलेस को मिलता है इतना। हाँ ट्रू।
एग्जैक्टली, बिशप h6, यू कैन सी मैंने क्या बोला था, टेम्पो, वी डोंट वेस्ट मूव्स बिशप dt, हम डायरेक्ट मारेंगे भाई h6 पे। एंड इसके बाद चैट क्या, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, मार दिया, अब क्या चैट, नाउ व्हाट। हाँ वो अपेरेंस फी होता है, अपेरेंस फी इतना होता है, नॉट प्राइज मनी बट अपेरेंस फी होता है। नाउ व्हाट चैट, नाउ व्हाट, क्या हमने फ्री का बिशप दिया है, क्या हम समय रहना है, कम ऑन चैट, अब क्या। Yes, bishop d5 and black cannot capture back, so white wins a pawn, spoils black's king side, because if he takes comes knight f6, and that tells you why VD is slightly better. And if you, for example, change the move order, you try to play bishop d5 first, queen d5 and bishop h6, unfortunately there's the move bishop to f5, and black is probably doing much better than he might do otherwise, because इस केस में हमने h6 pawn मारा, उस केस में हमने पूरा किंग को भाई नंगा कर दिया था भाई, मतलब पब्लिक प्लेस में निकले आए थे हम उसको, मतलब दिस इज मच मोर डैमेजिंग देन यू नो द प्रीवियस पोजीशन, सो दैट्स व्हाई दिस इज बेटर आई वुड से। सो VD should obviously play knight e4, I think he will see it, even I saw it in like few seconds. ईशान भाई मुझे टैग कर रहे हैं, तो कुछ तो अर्जेंट होगा भाई। ईशान भाई क्या अर्जेंट है? ओके सो चैट मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूं, देखो चैट तुमसे भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, मुझे प्रेडिक्शन करना है, तो चैट मैं किसके लिए प्रेडिक्ट करूं, क्या बोलती है चैट, किसके लिए प्रेडिक्ट करूं, बिकॉज आई थिंक आई हैव टू प्रेडिक्ट विनर्स, मैं भी पार्ट लूंगा भाई। तो किसका प्रेडिक्ट करूं चैट, फर्स्ट गेम Caruana against Carlsen, who do you think chat is more likely to win, come on chat, who do you think is more likely to win, come on chat. Draw, okay, let me assume कि Anish has a chance. I will predict Caruana, ठीक है, I will predict Caruana, let me go with Caruana. So I will predict कि भाई Caruana, अच्छा Caruana यहाँ पे उल्टा लगा है, तो I will predict कि भाई Caruana करेगा, predict game Caruana pick, ठीक है। और बताओ चैट, next game is Rapport against Esipenko, what do you think chat? Rapport against Esipenko, come on chat. चलो I will do it fast, ठीक है, I will predict Vidit में, I will predict Vidit, ठीक है, Vidit will win, I think Vidit will win, let me go for Vidit, let me see if I can predict correctly. Arvind Layami, Surya Ganguly, I will predict Arvind Layami because Surya is not in great form. Then Arjun के था तो भाई Arjun भाई, of course I will predict Arjun, no doubt, no shit Arjun. Caruana मैंने कर दिया, next we predict let me say Esipenko करते हैं, let's do it Esipenko, come on Esipenko, let's do it. Jordan against Duda, I will predict Jordan because भाई crazy form में लौंडा. Then we have Anish against Ganguly, of course by Anish, no doubt, Anish. And Karyakin against Shankland, भाई I think I will go with Shankland now. I will go with Shankland today. So मैंने प्रिपरेशन कर ली है चैट, you can also do it. The link is on the community post. You have a chance to win 6 chess.com memberships, 3 today. तो जरूर कर देना भाई. So now we come back to the game chat. भाई बोटेज जीतेगी, देखते हैं भाई, देखते हैं. By the way, we have an interesting position here, but we will not look at it because they are not Indians. So let's go to this game. By the way, after knight c3 played by Caruana, Carlsen took on c3, b takes c3, and now queen d8 played immediately. So we have 14 moves in the Carlsen game so far, and that means कि भाई 14% discount confirmed, 30% already चल रहा है. For any benefit, at least 30 move जाना चाहिए. सबका ड्रॉप प्रेडिक्ट करो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो ठीक है, but I think I will go with my gut instinct भाई. Kraken is a little worse already. Really? Let's have a look. Kraken भाई. Oh, Kraken has blundered. I am so happy. Kraken has blundered. Let's go. Queen c4. Kraken को दिखाता हूँ मसा भाई, मेरे ट्विटर अनिश गिरी को रिप्लेस करेगा, है अनिश गिरी को रिप्लेस करेगा. Come on, let's go भाई, let's go. Let's go chat. Let's go. अनिश गिरी को रिप्लेस करने वालों. चलो भाई, Kraken brother chat, queen c4. Kraken is going to lose. Let's go to the game of Duda now. Okay, opening part only. Let's go to Vidit's game now. VD, come on, let's go knight e4, dude. Come on, let's go knight e4, man. We can go knight e4. Come on, you can do this, VD. You can do this. इसलिए ड्रॉ करना है सरगे, वरना हार जाता है. अरे नहीं भाई, अरे भाई मुझे स्टॉक फिट लीला 0 अल्फा से सब नूब है, क्योंकि मैं हारने का मास्टर हूं. नाइस सक्षम भाई. स्कैम नहीं, स्पैम मत करो भाई.
स्कैम कह रहा हूं, स्पैम मत करो भाई. Chat, do like the stream. Let's get to 1K likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. We're going to look at the game now. And chat, 94 के बाद black का defense देखते हैं. Now, obviously, bishop h6 is the threat. So we want to either not capture with the queen here, or we want to prevent this. So bishop e6 makes a lot of sense. ताकि वो अगर bishop takes d5 जब भी मारे, हम bishop से मार सके और queen f6 control कर ले. So that is possible. Let's refresh this position now. Queen c4, bishop f2. Let me have a look. Queen c4, bishop f2. Yeah, but we are not scared about this. King f2, queen b2 check. Just king g3, knight h5, king h4, knight f4 and queen c6 check. अब बताओ चैट, किसका किंग ज्यादा नंगा है? बताओ भाई, व्हाइट की ब्लैक. किसका किंग ज्यादा नंगा है? Who's the noodle king? Come on chat. Who's the noodle king here? Come on chat. Who's the noodle king? White or black? किसका ज्यादा नंगा है भाई? बताओ. आदित्य भाई, it is chessassist20@gmail.com. वेबसाइट पे भी है, लिंक मिल जाएगा. chessassist20@gmail.com. Yes, it is actually black. It is actually black, and that's one thing. So ब्लैक किंग भाई पहली चेक पड़ रही है, व्हाइट किंग सेफ है, पॉन प्यादे कंट्रोल कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑल फाइन. लेट्स गो टू द गेम ऑफ कारुआना. भाई कारुआना, कम ऑन, पूरी चैट तुम्हें सपोर्ट कर रही है. लंबी गेम खेलो भाई, लंबी इनिंग खेलो, यहाँ पे मजा आएगा. लेट्स गो टू द गेम ऑफ विदित नाउ. एंड विदित ने भी 94 नहीं खेला है. कम ऑन वीडी, लेट्स गो 94. फुल सेट कभी और खेलेंगे, किस पे खेलेंगे भाई? कैन यू रिकमेंड मी अ वुडन चेस बोर्ड अंडर 750? Shobhaya, please send me a mail on my to the website. I will find out a link and send it to you. Surely will help you out there. How is king safe on h4? Because there are 3 pawns प्रणाली and black का king ज्यादा नंगा है. देखो, अगर आप स्ट्रिप चेस खेल रहे हो और आप गर्लफ्रेंड के साथ खेल रहे हो एंड आपके पास अंडरवेयर है और बनियान है, या सॉरी गर्लफ्रेंड के पास शी इज वेयरिंग हर इनर्स एंड यू आर नॉट, सो इवन दो शी इज आल्सो काइंड ऑफ प्लेइंग स्ट्रिप चेस, यू आर द वन हु इज सेफर. सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग देयर. ज्यादा बोल दिया मैं शायद, थोड़ा ये पार्ट कट कर लेंगे भाई. बिशप से क्या करें? बिशप e6 के बाद आई वुड से लेट्स से ही प्लेज knight e4, बिशप e6, बिशप e6 के बाद. So now there is of course this pin which is like, you know, some discover attacks, knight e3 and so on. So we're going to prepare for it, of course. So we can play moves like knight e5, and the idea is to, of course, you know, if you for example give now, this knight now defends the bishop. So yeah, and if black captures, we capture back, and this pawn is a really really good. अरे fuck, अरे भाई आदित्य भाई ये क्या है भाई? भाई इतनी, अरे यार इतनी बड़ी सुपर मत करो भाई, हार्ट अटैक फेल हो जाऊंगा. अरे थैंक्स अ लॉट भाई. As always, we're amazing. Yeah, I want to see you on top. Hope this helps. Bhai, it helps in an insane amount. Thanks a lot, bhai. But that's an insane amount, bhai. That's crazy. That's crazy. Bhai, इतना बड़ा amount तो यार, I think I've seen it once only on the channel before in like 1.5 years, bhai. Thanks a lot, yaar. It means a lot, bhai. Aditya opening the chat, bhai. And Aditya with 1. अगर किसी ने normal Aditya लिखा, तो उसको भाई सीधा एक पहले बंदे को Aditya 1, come on. कोई आदित्य नहीं लिखे, आदित्य 1 लिखना है भाई, याद रखना. ये तन्मय भाई पकड़ के भाई देख लो. कैरी भाई रोज अगली स्ट्रीम पे किसको रोज करना है आपने? ये जो नकली तन्मय है ना, इसी को रोज करना है भाई, ठीक है ना? ठीक है. थैंक्स अ लॉट भाई, मींस अ लॉट मैन. दैट्स इनसेन. That's insane, man. Thanks a lot भाई. It really helps because I try to use all this money into, you know, improving the streaming experience, of course, in one way or the other. चाहे वो thumbnails का हो, कुछ assets खरीदने हो, ताकि I can use it in videos. So it really really helps भाई. Thanks a lot भाई. Thanks a lot. हाँ, होपफुली कोई 10K ट्राई नहीं करेगा भाई, थैंकफुली. रशीद भाई बात सही है, बट इट इज इंसेन भाई, इंसेन है. बोलते ही माइक भी हिचकिचा रहा है. माइक को समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये क्या हो गया भाई? गला गया भाई, गला तो गया भाई. कोई बात नहीं भाई, पैसे है ना, इलाज कर दूंगा उसी से. एनीवेज भाई, थैंक्स अ लॉट मैन, मींस अ लॉट भाई, मींस अ लॉट. नहीं भाई प्लीज भाई, साकिब भाई ऐसा कुछ मत करना भाई. जस्ट सेइंग भाई, इतनी बड़ी सुपर चैट कभी नहीं भाई, नेवर यार. आई मीन सुपर चैट्स मैटर, बट इतना पैसा आई थिंक आवर चैनल डज नॉट डिजर्व सच अमाउंट ऑफ मनी यार.
नॉट नहीं भाई, इट्स नॉट लॉजिकल आई फील। एनीवेज चैट, क्या चल रहा है वीडी भाई का? बढ़िया चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड नाउ आई थिंक वीडी विल प्ले 94। ये सोच क्यों रहा है भाई? व्हाई इज ही थिंकिंग नाउ? बिकॉज आई सॉ 94 एंड लिटरली लाइक चैट, ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा, आई सॉ दिस इन लाइक 10 seconds. I saw this in 10 seconds and मेरे tactics बहुत कमजोर है। So I don't know why VD is not playing this already. I'm a bit surprised by that. Unless पेट खराब हो उसका, that would be one logical explanation. So let me go to Arjun's game now. By the way, Arjun game में chat after this, bishop f4, e3, takes, rook c1, c5, takes, pawn takes. What? Really? But if you have played this now, Arjun should be slightly better, yeah? I have played this as black. I have played this as white. I have played this as black. If you play such a setup here, this can only turn out better for white somehow, I feel. I mean, white ही better हो सकता है यहाँ पे. There's no doubt. Because obviously मतलब यार, this pawn is a weak pawn. I can exchange one of your bishops, probably bishop d3, castles, then queen e2, defend this pawn, then rook c2, rook c1, and c5 pawn के तो लाले लग गए भाई. c5 pawn तो गयो. So I would not attempt playing. अगर आप कभी भी चैट ये ओपनिंग सीखो ना, if you start playing the queen's gambit as white या फिर you start playing this setup as black, don't try this line जहां पे pawn c5 पे आए. This might be working dynamically, but as a starter, I would not recommend this at all. Very interesting way to black to play, but I think Arjun will crush him today, and Arjun might just win the event today. Chat. Let's see what happens here. And बाद में देखना था chat. बाद में देखना ये pawn जो है ना, यही पॉन हरवाएगा ब्लैक को। मैं लास्ट में रिकैप करूंगा, यही पॉन हरवाएगा ब्लैक को, तुम देखना अगर ब्लैक हारा तो। सो लेट्स गो टू द गेम ऑफ सूर्या वंस। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग बाय सूर्या, बट आई डू फील ब्लैक। व्हाट? नाइट टेक्स b4? व्हाट? Bishop h6, knight takes d3, bishop takes g7. Oh my god, क्या ही opening है भाई? Knight f4, bishop f6, queen f6. But isn't black better? I mean, I know the king is nude, but there's no way to attack this. I mean, no, it's not a blunder exactly, but I think Surya missed the position here. I think he thought this is balanced, but this is not, because after a move like, king f8, king e7, and king h8, and rook g8, बहुत तगड़ा अटैक आएगा भाई, बहुत तगड़ा अटैक आएगा यहाँ पे g2 पे, या क्वीन g7, rook g6. Oh my god भाई, सूर्या अंडर प्रेशर अगेन भाई, सूर्या भाई, I predicted he would lose, right? So okay, maybe prediction safe at least, but still यार, I hope he comes back. आदित्य भाई अगेन मैन, भाई इतनी बड़ी सुपर चैट भाई, थैंक्स अ लॉट यार, इट्स इनसेन मैन, देख के मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये कहां से आ गए भाई, क्रेजी भाई, थैंक्स अ लॉट। किंग इज न्यूड, अरे भाई ये क्या भाई, आप जीएम साहिल टिक्को होना, आपको समोसा खा के सब खतरनाक दिखाई देता है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेट्स गो टू द मास्टर सेक्शन एंड वी हैव वीडीज गेम। भाई वीडी चलता क्यों नहीं है भाई? इंजन की बात नहीं है वेंकी, आई लुक एट दैट पोजीशन, आई जस्ट फील लाइक इट्स बेटर फॉर ब्लैक मैन। इंजन इज अ सेपरेट इशू, आई जस्ट फील ब्लैक moves are so much more simpler now. Queen g7, rook g6 and it's better for black. अब जिसने भी सरगे प्रेडिक्ट किया होगा वो सैंक्शन कर देगा। हाँ बट 8 बजे क्लोज जाएगा, यू कैन ओनली प्रेडिक्ट 8, सो जब तक तो चेंज कर सकते हो कर सकते हो आई गेस। असिस्टेंट ड्रैगन क्यों खेला फिर नाइट ऑफ? नाइट ऑफ इज अ बेटर चैट, अ बेटर मूव फॉर श्योर। विडी 6000 में कितने आएंगे? लक्ष्य है 40% कटेगा, आई थिंक बिग अमाउंट का 40% कटता है, तो कैलकुलेट कर लो भाई। विडी तक से मूव नहीं चला, या आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग। Raja Makindan, you are asking for the Pragg game. I have a pleasant news for you. Pragg has played the game of his life to completely crush Dubov with the black pieces. Dubov could not even play one move. He was so scared by Pragg's attack just from his home itself, and he has won the game. So Pragg has already won chat because Dubov has COVID. So now we go to the game of Vidit. Tikku for GM, surely why? 1-2 रुपए आ रहे थे, आज 6000 ग्रोथ है भाई, ग्रोथ। अरे भाई ये क्या है भाई, क्रेजी भाई, क्रेजी। फिर वीडी का फिर से टॉयलेट का चक्कर है।
यार मुझे पता नहीं यार ये क्या चक्कर है, बाहर के देशों में जाके लोगों के चक्कर आ रहे टॉयलेट के। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई दैट्स द केस, आई होप नॉट ऐसा ना हो। टिक्कू ऑन टॉप, व्हाट डू आई लाइक इट ऑन टॉप दो, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। 50-50 है भाई। या आई एम नॉट श्योर, आई लाइक इट ऑन टॉप। समटाइम्स ड्रॉ भी करना चाहिए कई बार, आई फील मतलब गेम में ऑफ कोर्स। 25 minutes of VD thinking move already. Yeah, guys, I'm not sure what he's doing. I am not sure what is he doing. No, he's calculating bishop e6, yes, but I mean it's very clear कि मतलब 94 is the obvious move here because 94 bishop e6 इतना complicated game नहीं है भाई, इतना complicated game नहीं है। I could play, for example, yeah, even normal moves, b3, bishop back, I don't know, bishop d2. I mean, all these moves make sense. There is no like, oh my God, मेरा king मर जाए तो वो चक्कर है। अरे भाई विवेक भाई ये क्या था भाई, अरे फक भाई ये क्या भाई ये क्या हो रहा है चैट भाई, मैं भाई हार्ट अटैक आ जाएगा भाई मुझे भाई। विवेक भाई थैंक्स अ लॉट भाई। भाई अभी तो मैंने कन्वर्ट भी नहीं करा भाई इस कोर्स में। फक ये भी 6000 है, होली फक भाई थैंक्स अ लॉट भाई। भाई मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए भाई, कोई डॉक्टर का फोन ना, कोई चैट में कोई डॉक्टर है क्या भाई? कहते हैं ना खांसी करनी चाहिए जब हार्ट अटैक आता है, तो ऐसा कुछ मैंने सुना है कहीं पे भाई। 6089 अरे भाई भाई विवेक भाई थैंक्स अ लॉट, आदित्य भाई थैंक्स अ लॉट, इनसेन भाई थैंक्स अ लॉट, अरे मींस अ लॉट भाई, क्रेजी भाई इनसेन like that's crazy man, like I think 3 months back हमारा monthly revenue YouTube का इतना नहीं था भाई, not even kidding 3 months पहले भाई crazy, thanks a lot भाई, thanks a lot। सांस लीजिए भाई, ले रहा हूं, breathe, this is why chat they recommend meditation, this is very important, this is why they recommend meditation। okay chat, टांगे ऊपर, chat let's do it। okay move on, छाती भरे, यस ऐसे मेडिटेशन करे भाई। समय इन शार्क टैंक समय इन शार्क टैंक मोमेंट है भाई, मोमेंट है। अरे भाई जॉर्डन इज अ सुपर जीएम नाउ, बट ही वाज ऑलरेडी राइट, 27 से पहले था वो। आज इतनी विदिंग नहीं जितनी सुपर चैट आई है अरे भाई, अरे थैंक्स अ लॉट आदित्य एंड विवेक, थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट भाई। समय वेल टैंक में जाएगा, वेल टैंक क्या है भाई? you deserve it man, thanks Akshay भाई for the kind words। chat okay chat, अरे रोहन भाई thanks for the kind words भाई, thanks for kind words। आज का हो गया भाई, बहुत हो गया भाई आज का तो, जाकिर भाई बहुत हो गया आज का तो। chat let's go to the, by the way has he played not, oh what is this, what is this, is he wearing his merch, is he wearing his merch, what is he wearing? हाथ हटा वीडी, क्या पहना हुआ है इसने भाई? अरे क्रेजी भाई, वीडी भाई समय की मर्च पहन के बैठा है क्या? ये कौन सी मर्च है? सागर शाह प्राउड स्टूडेंट या फिर आई डोंट नो ये क्या है भाई, सिग्मा मेल ओहो अरे क्रेजी भाई, दैट इज इनसेन, ही इज वेयरिंग हिज मर्च, नाइस 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 यार। मतलब इसे बोलते हैं भाई मार्केटिंग चैट, इसे बोलते हैं मार्केटिंग भाई, इसे बोलते हैं मार्केटिंग भाई। वी कैन लर्न फ्रॉम वीडी नाउ भाई, क्रेजी nice nice nice, it's his own merch, yeah nice, you are the only one who streams and complete, of course भाई complete match करने में मजा आता है यार। we can follow the journey yeah, from the start till the end। कोट पहने थे हम निकाल दिया, नाइस यार, नाइस मार्केटिंग, नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। टिक्कू कैसे लंदन कोर्स लिख के आना भाई, कंफर्म भाई, अगर मैं कभी भी खेलूंगा ना ओटीपी चेस, चैट कोई किसी को टी शर्ट बनवाने का कुछ पता हो तो मुझे बताना भाई। आई थिंक लंदन सिस्टम के ऊपर 1-2 शर्ट मुझे बनानी चाहिए, वही पहन के खेलूंगा ओटीपी चेस, स्ट्रीम भी वही करके खेलूंगा भाई। भाई मैं नहाने भी वो शर्ट पहन के जाऊंगा भाई, क्या पता कोई देख रहा हो। अब समोसे नहीं पिज्जा की वजह करो भाई, करेंगे भाई करेंगे। वीडियो भूल गया कि आगे खेलना है नहीं नहीं भाई। एनीवे चैट, आफ्टर दिस पोजीशन लेट्स डू क्विक राउंड अप। First of all, we go to the challengers. We come to Surya's game. I think Erwan Lamy is calculating all of this.
he's trying to calculate क्या evaluation रहेगी. That's very important. So let's see what happens here. We go to Arjun's game now. Arjun has played bishop c4. He of course wants him to take. That would give him, like, for example, the more pieces that can exchange, utna ye pawn weak hota jayega. So that's what he wants, because he can attack it easily then. So black will of course not take on c4. That's very obvious. Let's come to the master section now. Now, first of all, the first game has finished, chat. Dubov has not played the game. He was scared of Pragg's performance. Okay, just joking, but yeah, he had COVID, and Pragg has won the game. Next, we go to Van Forest against Duda. Duda is white here. We can see that black is captured on c4, but given of the center. So I do feel the position is really, really balanced. But this might not end in a draw, especially if black tries to defend this pawn with knight b6, or he goes back, going for e5. Very interesting. Now we go to the game of Shankland against Karyakin. We have this position where queen takes c4 can give a huge advantage for Shankland, but he has to calculate very carefully. We go to the game of Anish Giri against Nils Grandelius. Anish को जीतना बहुत जरूरी है भाई, आज जीतना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जीतना जरूरी है, because that's the only way he can come in top 2 or even come first if Carlsen loses. Next, we have Rapport against Esipenko. Esipenko white. Very complicated position. Slightly better for white because the black king side is a bit weak. King थोड़ा सा pawn pushed है. ये bishop यहाँ पे कर क्या रहा है, ये उसको खुद को नहीं पता. That's very interesting. Now we come to Caruana against Carlsen. इसके number of moves chat 16 हो चुके हैं. 16% discount confirmed on the course. 100 move होंगे तो 100% discount. Let's see what happens here. Now we come to the game of Vidi again. And we are still waiting for his move. Yeah, Aditya bhai ne 4 के दिए थे. I think day 4 yesterday something भाई insane. IT rate on टिक्कू जी. किसे भाई totally possible है भाई. Slow mode on नहीं है, आज off है. विदित का do or die मैच है. लुल्लू. Okay. लुल्लू. Okay. I don't know what do I do with that information, but Mr. L, उसका do or die मैच तो नहीं है. अगर top 3 में आना है तो yes, do or die मैच है. Ayush, there is no way he can win this event, that is sure. Because Carlsen is guaranteed 1 point for free because Dubov is not playing. The only way, basically, VD can win is if Dubov shows up. He gets a negative test tomorrow morning and he shows up, plays and defeats Carlsen, which is very unlikely, of course. Sahil, why do you have a fake accent in the course videos? They are very, very good though. Anisha, I recorded this course in 2020. The course you have bought, of course. So that's why I was not comfortable with the camera at that point. So maybe I was trying to act cool. I don't know. So that's the issue there. Don't worry, 2020 से chess change नहीं हुई, chess की game same है. Nothing changes. 6 रुपये 6,000 का सफर. अरे भाई आदित्य भाई, अरे भाई वी डिड इट मर्च वाला पहन के आया है वीडियो. अरे नाइस. कैन बी अ फुल टाइम स्ट्रीमर ज्यादा देन हिज मेन जॉब इन ईटिंग. नहीं, आई थिंक सब्सक्राइबर्स के ज्यादा होने चाहिए, बट डेफिनेटली दिस हेल्प्स अ लॉट. I also use fake accent while talking to the UK client Slamao. Yeah, but in my case, I think I was like, I had not even started streaming when I actually started recording those videos. So in like 3 of the 6 courses, I think 5 course है. 5 में से I think 2 या 3 course में rated expert and beginner जो videos हैं, they have been recording 2020. So उनका जो वो है ना, जो बात करने का स्टाइल है वो थोड़ा सा वो है. I gave your email to my nearest samosa vendor. Saurabh, which course भाई? हमारे वेबसाइट कोर्स की बात हो रही है. Arjun game. Let's go to Arjun's game chat. Let's go to Arjun's game भाई. Demand है तो जाएंगे भाई. जहाँ demand वहाँ जाएंगे. Nothing has happened chat. After bishop c4, black is still thinking. Arjun is slightly better. I would say slightly better. बात करने का स्टाइल थोड़ा वो है. या बात करने का स्टाइल उतना कुछ खास नहीं है वीडियोस में, बट आई थिंक द थिंग इज लकीली those are the puzzle courses, so उसमें वीडियोस का इन्फ्लुएंस इज लाइक around 20%, not more than that. So I do feel कि it's all fine. सॉरी, 100 के में मैं 2 मार्च निकालूंगा भाई. एक समोसा की, एक लंडन सिस्टम की, फॉर श्योर. यार ये चल क्यों नहीं रहा यार? Why is he not playing this? I have no clue. Why is he not playing? Come on, VD bhai.
I don't think so because knight e4 feels so not natural. Like I don't even play e4 and I found it in like 30 seconds. Come on, really. I mean, yeah, but I can just play a5, right? I can just play a5 and I just prevent this from being trapped. So the knight on b3 is, well, obviously worse than the knight on e4. So that's the issue. Knight e4 is played. No, not yet, chat, not yet. मेरा असली नाम साहिल टिक्कू है भाई. अरे आदित्य भाई, अरे क्रेजी भाई यार, that's insane. I just said your email, Aditya भाई. मुझे बताना if you want me to say it out on stream or not. I don't know if you want me to, so I'll keep it private for now. But thanks a lot for the kind words, bhai. I'll reply back after the stream if I जो भी मेरे दिमाग में होगा. Thanks a lot, यार. मतलब that's crazy, bhai. But I think mostly I have most things for my stream which I require. But thanks a lot, bhai. What's the best move for really to maintain the advantage? The best move is to sit up, to pick up the chessboard, throw it away, and say कि मुझे win चाहिए. But that will not happen. So the second best move is to play knight e4, I think. Sanjit bhai, thanks a lot for the kind words. Bhai 20 के हमारे I think 2 दिन पहले हुए हैं. Petition for background music. Background music is from bensoundmusic.com, bhai. Rook a3 is possible. Yes, rook a3 is totally possible. Chat, can somebody tell me कि हम ये rook lift usually क्यों करते हैं? Can somebody tell me, chat, like काहे हम रुक को यहाँ खेले? रुक यहाँ पे भी तो सेम काम कर रहा था. Why do we usually play rook a3? Come on, chat. UPI supreme. Again, I think UPI does not have the same effect. Yeah, मतलब stream पे वो दिखता नहीं है. It's not the same fun, I feel. I think that's how I understand it. Yes, exactly. I know management swinging is not the best, but chessmate is definitely one of the best maneuvers you can deploy. That's why after rook a3, the idea is to at some moment bring the rook to the king side, sometimes to b3, sometimes to e3. Of course, right now it's not possible. Sometimes to d3. Very important. So यही हमारा idea है. And but VD plays the move b3. उसने कहा हमें swinging में interest नहीं है. उसने b3 खेल दिया. He will go bishop a3 or bishop b2 next. But I think knight b4 was clearly better. He missed it. He missed a plan there. For doubling the rook. Yeah, kind of. That's also possible use. हाँ ज़्यादा ये कर तो gain more control. Yeah, also true. अभी सुपर चैट कब है? आज ही आए जसन भाई, आज ही आए यार, आज ही आए. Thanks to Aditya and Vivek. Thanks a lot, yeah. Knight e4, bishop e6, a3, rook e8, bishop h6. Yes, but he did not play that advantage. Now he's gone for b3. And now chat, a question for you. Chalo bhai. Question for you. Should black play knight c3? Come on, chat. Should he play knight c3 and attack white queen? Because भाई queen के पास square तो है ही नहीं. Literally अगर bishop यहाँ होता तो knight c3 queen trap. Should you play knight? Very simple question है, but answer करना बहुत जरूरी है chat. क्योंकि it's linked to a question जो किसी ने chat पे पहले पूछा था. बताओ chat. आप best हो, love your stream. Thanks a lot, Nisha. Yes, you should not waste time. This is the importance of tempo, chat. अभी black ये move है. If you play knight c3, I can simply move my queen, and the knight has to come back. And this is the importance of tempo. So जब हम chess start करते हैं, this is for you, Anisha. Sorry, not serious kidding. Usually we can these moves feel a bit tempting because queen पे attack है. Let me play knight c3. Let me attack the queen. And अपन को डराने के लिए बस वो लाइक रहा नहीं जाता हमसे. होता है ना ऐसे हम किसी लड़की को देखते हैं, यार कितनी सुंदर लड़की है, if I could ask her out. Same चीज है. We should not play such moves. After queen c2, knight वापस, white has gained 2 moves. That's very important. So tempo is really, really important. That's why b3 played. No, because queen wanted to develop anyway. Yes, Ankit, exactly the point. भाई यार ये क्या है? ये मुझे भी नहीं पता क्या यार. You should not waste and get your own tempo. Okay. How is Shaq still in prep with black? I don't think so. He's in prep. I don't think so. He's in prep actually. I don't think so.
Imagine knight b4, vd plays g4, knight c3. Yeah, that would be a good trap, yeah. Playing knight c3. But I think यहाँ पे white के पास बहुत moves है. One of the most easy ones is like bishop a3, pinning the knight. That makes a lot of sense now. So this will not be played, of course. Is Chess Dojo good? I have not seen their streams. I think Chess Dojo Twitch पे है. I do feel they're good, but I'm not sure exactly कितने. I've not followed a lot of them. अरे विवेक भाई हेलो 911 हेलो 911 इसका क्या मतलब है कि आप इंडिया में नहीं आते? इसका क्या मतलब है? भाई ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या चल रहा है भाई? विवेक भाई थैंक्स अ लॉट. दैट्स 200 सिंगापुरियन डॉलर्स भाई. थैंक्स अ लॉट. ऑनेस्टली भाई, लाइक I really love Super Chat आती है, but इतना हम डिजर्व नहीं करते भाई. Thanks a lot भाई. इतना like honestly chat, इतना पैसा I think I don't know if anybody deserves it on YouTube. So भाई thanks a lot. I appreciate it really, but इतना amount is a bit too much भाई. Thanks a lot भाई. Thanks a lot यार. I don't know what to say man. Thanks a lot यार. When live gives Vivek B Singh not Desai. Vivek Desai तो आप फालतू में रोस्ट आता है भाई. मतलब कोई भी कुछ भी हो, विवेक देसाई फालतू में रोस्ट होता है. थैंक्स अ लॉट विवेक भाई. थैंक्स अ लॉट. आप अंशुमन दास को भूल गए. अंशुमन, या बट आई हैव नॉट इंटरेक्टेड अंशुमन दास. उस टाइम पे हमारा चैनल बहुत छोटा था, सो आई हैव नॉट फेल्ट दैट वे. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील. मतलब इतना बड़ा अमाउंट क्या, आई थिंक इट्स अ बिग अमाउंट. नंद किशोर, या थैंक्स अ लॉट, बट स्टिल आई फील दिस इज अ बिग अमाउंट भाई. दिस इज अ बिग अमाउंट. YouTube के कट के बाद आज का 10 लक्ष्य भाई मत, तुम भाई अकाउंटेंट बन जाओ लक्ष्य भाई. ट्राई टू बी एन अकाउंटेंट. तुम अच्छा काम करोगे भाई. थैंक्स अ लॉट आदित्य एंड विवेक. थैंक्स अ लॉट मैन. इट रियली मीन्स अ लॉट. It really helps a lot, and thanks a lot, because I can put my entire effort into YouTube then. I don't have to get involved with other things. That really helps, but thanks a lot bhai. Thanks a lot means a lot bhai. Has Abhimanyu Mishra pieces? यार अभिमन्यु मिश्रा कहाँ से आया भाई? Where did Abhimanyu Mishra come from? मतलब हम बेचारा कार्लसन की बात कर रहे हैं, हम विदित की बात कर रहे हैं. अभिमन्यु मिश्रा कहाँ से घुस गया बीच में? He is very strong, but he will take some time, yeah. Do you do YTS full time or part time? आर भाई यार, I have been doing it full time for the past 1.5 years, but honestly this support is crazy. राहुल भाई. भाई मैं ये स्क्रीन भी ना तोड़ दूं भाई. राहुल भाई थैंक्स अ लॉट भाई. बस थैंक्स अ लॉट राहुल भाई. मींस अ लॉट. थैंक्स अ लॉट भाई. थैंक्स अ लॉट. आई थिंक वो राहुल ही था ना यार. नाम तो सुना ही होगा. वो मूवी में राहुल ही था ना यार, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. भाई थैंक्स अ लॉट यार. मींस अ लॉट. Bishop e6 knight e4. Yeah, yes, knight e4 I think will be played regardless, because knight के पास कोई square है नहीं. Because where else can you go? यहाँ पे it makes less sense because now you have e4. Usually there are pawns on e4 and e5, and that's why you cannot play knight e4. Yeah, that's why you go knight f1, knight g3. But अब pawn ही नहीं है तो भाई खेल ही दो ना यार. Of course we'll play this. But now Shak is thinking. Shak has played. Shak has played bishop e6. Wow. So now I think knight e4. Let's go. Did you buy a second monitor? Atul, I have not bought a second monitor yet because of one reason, because my laptop will not be able to handle it. That's the issue. Laptop पे एक monitor का load मैंने research करा इस पे. So basically laptops cannot handle 2 monitors easily. You need a desktop for that, and desktops are like super expensive man. They are like super expensive. So I would love कि मेरा channel थोड़ा बड़ा हो जाए. इससे पहले I invest like I don't know how much a desktop is going to cost. So फिलहाल के लिए एक मॉनिटर में काम चला रहा हूँ. अरे सागर भाई थैंक्स. सागर शाह की सुपर चैट है भाई. ठीक है, फिर मैं अपनी औकात के साथ देता हूँ बढ़िया 20K क्लियर. थैंक्स अ लॉट सागर भाई. थैंक्स अ लॉट यार. थैंक्स अ लॉट फॉर सुपर चैट. मींस अ लॉट भाई. थैंक्स अ लॉट. सागर शाह की सुपर चैट है भाई. हाँ सागर भाई लाइक भाई अपनी स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले यहाँ सुपर चैट देता हूँ भाई. थैंक्स अ लॉट भाई. थैंक्स अ लॉट. स्क्रू IT 30%. What are your thoughts about India got chess talent by Chess India? But I don't completely understand it yet. Matlab, will Saga Bhai be doing streams based on that? Will he be giving advice on email? So I don't completely understand it.
So I'm waiting for the concept to start, then I'll understand it better. But for sure, if Saga Bhai has planned something, it will be amazing because they've done a lot for chess, yeah, for sure. Akhil Bhai, thanks for the chat, Bhai. Tikku Bhai for GM, Bhai, soon. I think in the next couple of years, अगर ऐसा support रहा तो भाई कुछ भी possible है भाई. Anyway, chat, let's go to the games. Let's do a roundup, chat. Let's do a roundup. इससे पहले हार्ट अटैक आ जाए. At least लोग कहेंगे चलो मरा कम से कम राउंड अप तो करके गया भाई, अच्छा बंदा है. कम से कम ये तो होगा. Let's go, chat. First of all, we have Surya चाहिए Ganguly. भाई ये क्या चल रहा है? ओए भाई, क्रेजी गेम, नाइट G5. भाई ये तो कुछ इंटेंस गेम लग रही है मुझे. ओहो भाई, क्रेजी गेम भाई सूर्या. आई एम रियली हैप्पी. क्रेजी भाई. And that's insane, bhai. So the variation happened, yeah. After c4, he played knight b4, bishop h6, knight d3. But instead of capturing on g7, he played knight g5, knight c5, exchange sack. Come on, let's go, bhai. Definitely under pressure for sure. Surya under pressure. Arvind Lani playing a marvelous game today. Let's go to the game of Arjun now. Chat, मैंने क्या बोला था? व्हाइट की स्लाइट एज होगी और जो वीकनेस व्हाइट को देगा वो होगा ये प्यादा. ये लंगड़ा त्यागी ही प्रॉब्लम है. इस लंगड़े त्यागी को देखें, इसको कोई इसका है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए भाई. कोई सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं. जब सपोर्ट करने के लिए है नहीं, फैमिली से दूर काहे किया इसको यार. अच्छा खासा यहाँ बैठा हुआ था, घर पे बैठा हुआ था यार, और आलू पराठे खा रहा था सुबह 8 बजे रोज. अब यहाँ पे अकेले बेचारे को खाना बनाना पड़ रहा है. बेचारा कोई सपोर्ट नहीं है, बेचारे को इतना मेहनत करना पड़ रहा है यार. अब यहाँ पे बेचारे पे अटैक भी पड़ेगा. So I think this pawn under huge pressure now. Arjun should be slightly better. So I expect him to win today, chat. ये pawn गया तो game भी गई. Pragg is trying to go e5 of course, but I think it's not enough. ये bishop खुल जाएगा आगे जाके. Let's go to the game of the Masters now. Now we go to Pragg against Dubov. Dubov has COVID, guys. Pragg has won. Now we come to Van Fons against Duda. Very interesting opening for Duda. I think Duda will possibly equalize. I mean, he'll get the pawn back, so it should be all fine. Now we go to Karyakin against Shankland. Bhai, something crazy happened here. Karyakin completely lost. See how it happened after. Okay, we saw it till queen e2. Yeah, queen b7 blunder. Castles, queen b2, queen c4, bishop f2. Oh, bhai, crazy. Imagine this. Black has an extra piece and white is winning. Bhai, crazy position. Insane position, bhai. How is it winning? Let's have a look. So let's say I try to defend my bishop. Let's say I try to play moves like bishop h4. Yeah, I am a noob. I don't understand chess. I play bishop f1. Chat, what would you play? White to play and win. Find the best move for white. Come on, chat. Vivek, Aditya, Rahul, thanks a lot, bhai, and everybody else means a lot, bhai. Again, भाई मेरे को देख रहा हूँ ना, मुझे बार-बार ऐसे लग रहा है भाई, इतना मैं देख, I can see the super chats, right? It's like, oh my god, it looks so much. Thanks a lot, bhai. Thanks a lot, means a lot, man. Rook b1 exactly, and you win the game, as you can see. So that is lost. You cannot defend the bishop. That means हमें queen move करनी है जल्दी से जल्दी. So the only move for black is queen b4, trying to trade queens. But now we give a check. Queen e7, queen takes, king takes, and rook takes. And now we have an extra pawn. The e5 pawn is weak. So I think Shankland is going to win this game today, chat. I think Karyakin हारेगा. I can bet on it. We will see a tweet from Karyakin today. We will see a tweet today for sure. Let's go to the game of Rapport now. Yeah, so Asipenko slightly better still. Yeah, 2 bishops, chat. Always 2 bishops control a lot of squares. So I do feel he has a lot of pressure on the black position. Again, the weekend king as mentioned. We go to the Caruana Carlsen game. We have 18 moves played. So किसी को course लेना है, 18% discount confirmed. 18 moves played by white. And I do feel this game will be a long one. कितना long हो मुझे पता नहीं. Let's go to the game of VD. Chat, by the way, Ishan ने link डाला है. There are last 5 minutes till 8 PM. You can win 6 Chess.com memberships. 3 today, 3 tomorrow. Link community post में है. Do check them out. Memberships जीतने का chance है आपके पास. So आपको सिर्फ predictions करना, कुछ नहीं करना. By the way, VD has played the move 94. काश पहले ही खेल दिया होता. Would have been better, but this is also fine. And now, of course, the idea, this is not really possible anymore, but still pretty good, bhai. Still pretty good. 7 inches क्या है भाई? कल अरीना प्रेडिक्शन का रिजल्ट आ गया क्या? हाँ, कल का हो गया था. श्योर कल का हो गया था. I think Ishan did the most of the work actually in that case. Thanks for Ishan भाई. You've been working hard भाई for sure. चैट में एक नाम निकालू हकामुरा है भाई, ये बहुत है. चैट में
ओवरऑल यूट्यूब पे हिकारू नाकामुरा निकारू हकामुरा है भाई. Why are you biased towards VD and not towards AG? I am. Did I miss Anish's game? Chat, did I not cover Anish's game just now? Did I miss Anish's game? Hello, lawyer sir. Is suicide legal? No? Acha. Okay. Sorry. So let me go to Anish's game now. We have Anish's game. A6 के बाद after bishop f4, bishop e6 attacking the queen. So queen d3 back and now bishop f5. Brentless draw की उम्मीद में, लेकिन उसने queen a6 खेल दिया है. And I do feel Anish has a better position here, chat. Clearly, you know, he has control over the a file. He has the incredibly strong bishop clearly, and he also has chances for the center. Yeah, rook e1 and e4 definitely possible. Cancel Tikku. Yeah, let's not talk about it. भाई ज़्यादा जोक हो गया. Let's move on. यही ओवर एक्टिंग को देखने आते हैं इधर. अरे भाई ये वाला तो ज़्यादा हो गया. मुझे भी लग रहा है कोई पॉलिटिशियन देख ले भाई. Clearly he has support of world's second most popular country. I love Anish भाई. Chat, I just love Anish. Like मतलब he is the number one personality in the chess community. You know, if you compare chess skills with personality and everything, like it's my dream to meet him someday, and someday that will happen for sure. कभी कोई कतार ओपन से टूर्नामेंट होगा जहाँ पे 2200 plus 2300 plus people can play. I will surely play, चाहे मुझे किडनी ऑप्शन करनी पड़े उस टूर्नामेंट के लिए भाई. बिग फैन ऑफ एजी भाई for sure. एक बंदा लिख रहा है गे. अरे भाई you can love somebody without having sexual feelings. It's a new emotion, I know, but जब बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे. Yeah, it was not the best idea, I think. Yeah, it was not the best idea. Let's check out the game of the other games. Let's check out. So, chat, Mamedyarov has played rook e8 now, and that means he's of course trying to activate his rook. And to be honest, now VD इसका decide करना है ये bishop कहाँ जाएगा. Now, as we discussed, ये square ये सारे available नहीं है. So, we have two options. We could play bishop d2, but what is the bishop doing on b2? Like, क्या सपने देखे उसने? कर क्या रहा है? Pawn को ही देख रहा है. It defends the pawn, of course, but honestly, not a big fan. So what else can he do? He could play moves like knight e5, definitely possible. He could play knight g3, definitely possible. Knight g3 से h5 जा सकता है. कल को you can go to f5 as well. Very interesting. So let's see what happens. Khayakin 1, भाई ये तो scam है. ये तो पक्का स्कैम है चैट. अगर ये स्कैम निकला तो 3-1 1 for me. Let's check it out. Scam proven. So where's my point, chat? 8.31, yeah? 1 for me now. I'm back in the game. So let's go to the game of Caruana now. A5 played by Carlsen. So A5 kind of prevents B4 and also, you know, limits the influence of C4 because he will have the B4 square now. And also he would like to play A4 if allowed to, you know, that could be definitely Black's idea. Rook A8, A4 and trying to break through. If you play A4, B5, for example, let's say White plays H3 and Black plays A4, I play B4, then this is a pass pawn. This is the protected pass pawn, and he can play Bishop B5 or even Queen B5, and this pawn is really strong, yeah, defended by all these pieces. Rook A8 coming up, and this is a weak pawn, so that's something Carlsen is definitely trying to win this. Will this channel cover grand picks? Of course, bhai. Of course, grand picks to karna hi hai. Learn don't system. That's nice. That's nice. Will this channel cover grand picks when you do coverage? VD as in 40 minutes, really? Let me check it out. यार VD कर क्या रहा है यार? Why is he taking so much time? यार ये क्या है भाई? Why is he taking so much time? I don't know, because 15 minutes have passed, 25 minutes to play. And he just has 40 minutes on the clock. Not easy at all. अभी तो literally, अभी तो pieces will develop नहीं हुए. Come on, really have to play faster, man. Yeah, AK, you're correct. Most likely winners for all tournaments are Masters, Carlsen and Challengers Arjun. दोनों की probability almost बराबर ही है first आने की. But let's see what happens. Waiting for the time when the video will be up on time. Salim, what is the second best opening after lunch? It depends on your style, bhai. If you like calm positions, I would say, you know, something like the Queen's Gambit, Italian sound really good. If you like sharp, then Knight off, Semi-Slav,
and all these opening kind of gain in strength. So it depends on your style, yeah, actually. आज किसी ने आपकी गर्लफ्रेंड को बोर्ड पे दिखाया है क्या टिक्कू जी? इसका क्या मतलब है भाई? गर्लफ्रेंड को दिखाया मतलब? प्रेडिक्शन के रिजल्ट्स कब पता चलेंगे भाई? रिजल्ट्स ईशान जी सॉल्व करेंगे. ईशान हैज कंट्रोल ओवर इट, तो ईशान को भाई पुछलाओ. भाई आज क्या है आपको याद है ना? आज क्या है आपको याद है ना? 29 जैन को क्या है भाई? आई एम नॉट श्योर. ऐसा क्या है 29 जैन को? Yeah, guys, भाई I think that was not the best joke. I agree. थोड़ा इंटेंट सही थी बट वर्ड सही नहीं था. Give you 200,000 euros for समोसा. नहीं भाई, हमारे समोसे प्यार के बदले जाते हैं यार, पैसे के बदले नहीं. प्यार से बनते हैं वो. So that's why. मुझे खांसी क्यों आ रही भाई? होपफुली शोबिड जोबिड तो नहीं हो गया वो. भाई सर डोंट क्राई. भाई मैं रो कहा रहा हूं. Arjun qualified for mass selection ऐसे. Yes, Kaushal, but he has to win today for that. I don't think so. Even a draw guarantees him kind of this because challengers में as you can see, challengers में यहाँ पे 7.5 पॉइंट पे एक बंदा है. That means if he wins 2 games, he can go to 9.5. And if Arjun loses both, he could literally be locked out. And he needs like a win to ensure. And draw के लिए he will need like some roughly a tie break के लिए draw चाहिए. Very important. Predictions close. Will update results as the game ends. Awesome, Ishan bhai. That ठीक है, that ठीक है. Finally, he got a negative COVID test. What the hell is really thinking? I don't know. Maybe some marketing strategies for his merch. I don't know why because he is very, very low on time. भाई यूपी इलेक्शन के पोल कब करोगे आप? यार पता है मेरा पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं यार. Purely because it's like first of all the country is hugely divided on it, and second because I feel कि मतलब everybody in politics has some plus points and negative points, and most people decide who they want to vote for based on what is better for them, and everybody should have their own choice. And मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब ये better है ये better है. तो politics में interest नहीं है. Yeah guys, of course, bye. Thanks a lot. क्या really prep खेल रहा है या prep? I thought prep है बट प्रेप लग नहीं रही यार मुझे अब क्योंकि इतना स्लो खेल रहा है. आई डोंट नो प्रेप किसकी है. really thinking merge to tomorrow. मर्ज करो. नहीं यार कभी करेंगे, कभी 50 के 100 के पे मर्ज करेंगे. दैट मेक्स मोर सेंस. कुछ भाई लंच का निकालेंगे, समोसे का निकालेंगे, मजा आएगा भाई. टिक्कू प्लेइंग सेफ गेम यार सच में मेरा व्यू पॉइंट वही है. एग्जैक्टली वही व्यू पॉइंट है. लाइक पॉलिटिक्स में लाइक इतना वो नहीं है. अभी 20 के से 10 के हो जाते हैं. वो अलग है भाई. You are real politician, always politically correct. नहीं यार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा आपके पास, गारंटेड. यूपी वाला मजाक था, आप सीरियस हो गए. नहीं भाई. Billy is bluffing that he is not in prep. अतुल भाई ऐसा ना हो कि ब्लफ करते करते भाई हम ब्लफ मास्टर हो जाए और हार जाए गेम. ऐसा ना हो जाए. लक्ष्य भाई यार थामो भाई थामो. एक बार डिबेट करा दो. किस चीज की भाई? पुचुक मर्च यार. पुचुक मर्च साउंड्स रॉन्ग, सो प्रॉब्ली नॉट दैट वन. उस वाले को रहने देते हैं, थोड़ा पोस्टपोन करते हैं. पहले 50 के पे निकालेंगे भाई, समोसे की और लर्निंग सिस्टम पे निकालेंगे. वीडी का पेट शायद खराब था, पता नहीं यार, लग नहीं रहा मुझे. स्लीप पे तो मस्त बैठा हुआ है. देखो भाई अब केजरीवाल बन गए खांसते खांसते. ये क्या भाई? अर्जुन ट्रू व्हाट? ओ अर्जुन ट्रू. वेरी क्लेवर बाय अर्जुन. सो ही ड्रॉज द गेम. बट टू बी ऑनेस्ट, I really hope he has thought this through. I think what he is hoping for is कि ये बंदा जो ये वाला बंदा है, क्या नाम है इसका, नकुयन थाई दाई वैन, ये दोनों गेम में जीत नहीं पाएगा. I think that's what he is hoping for. But I am not sure about this. I am not sure. Oh अच्छा इसने ड्रॉ कर लिया. नहीं इसने ड्रॉ नहीं किया. अच्छा ओ अच्छा ये भी 8 पे आ गया. बट इस बंदे जोनास क्या भाई? जोनास क्या चल रहा है? Oh, Jonas is better. So if he wins, Jonas still has a chance. Crazy, bhai. So Arjun is not completely out of the woods yet. Interesting choice by Arjun. Let's see what happens now. Interesting, very interesting.
Yeah, but there's one more guy on 7.5 chat. There's one more guy. He could technically win both games and come to 9.5. So let's hope so Arjun does not lose tomorrow. Now we come to the VD game. टिकू साहब आप भी स्टैंड अप कर दो, रीचिंग 10K सब्स. नहीं भाई, थाई दाई वैंग के साथ खेल रहा था. हाँ 2-2. अर्जुन हैज नो, ही हैज ड्रॉन. रुक्सीन ही हैज ड्रॉन. 5 मिनट पहले ड्रॉ कर लेता. क्यों भाई? जोनास प्रियंका चोपड़ा तो ले गया, टाटा स्टील को इंडिया को मिलने दे. पहली बार मेरे को लक्ष्य का मैसेज समझ नहीं आया भाई चैट में, पहली बार, वरना इनका मैसेज कुछ अलग ही होता है. तालू टिक्की, ये क्या है भाई आनंद भाई, ये क्या है? गाली है, तारीफ है? कुछ समझ नहीं आया मुझे. Kaushal, he can win. I'll tell you why. Because his current match is against the lowest seed of the tournament. That's 2-4-7-8. And his next match I think is also against the lowest player. So at least black होंगे कल. So most likely he will not win both. But he can win because अभी उसका थोड़ा सा मतलब players weaker है थोड़े से. So let's go to the Vidit game again. जोनास चेस प्लेयर है ना, चेस प्लेयर भी है भाई, सिंगर भी है भाई, मल्टी टैलेंटेड है. Only 12/80 people predicted that draw. Oh, so already भाई 62 people are out, yeah? नहीं, sorry, 68. Sorry, 68. Please clip that. Please, please cut that clip out. मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? क्या पी रहा हूँ मैं? इसमें पानी है ना यार? पानी तो है यार. कितने मूव्स हो गए भाई? 16 मूव हो चुके हैं. टाई ब्रेक की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई, टाई ब्रेक की जरूरत पड़ेगी नहीं. आई कैन गारंटी इट, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. सस्ते नशे नहीं है. दैट वाज सम गुड मैथ देयर. नाइस वन. आरआईपी मैथ. आप सट्टा लगाते हो? नहीं भाई. 24 moves in 36 minutes. Yeah, very difficult. Arjun won the challenges, but how, Shivang? How did he win it? Because to be honest, in the standings, if Jer wins both matches, wouldn't he be tied first if Arjun loses tomorrow? So I'm not sure about this yet. Really? कैसे अनाउंस किया यार? बट कैसे? टाई ब्रेक क्या है? I'm not sure about this though. अच्छा, हेड टू हेड है. ओ, हेड टू हेड पहले है. अरे फिर तो अर्जुन हैज वन. अरे ऑसम भाई, अर्जुन हैज वन भाई. चैट सबके सब 668 people. Arjun OP in the chat भाई. Arjun has won the tournament chat. Awesome then Arjun. If that's a tie break, then Arjun has absolutely won. Crazy भाई. आप OTP सूट पहन के खेलते हो क्या? नहीं यार. अर्जुन ओपी भाई, क्रेजी परफॉर्मेंस. क्या ही खेला है वेलोंडा. एक बार परफॉर्मेंस देखो भाई. एक मतलब 9.5 out of 13 with literally वो भी उसने आखिरी सारे बहुत सारे ड्रॉ कर लिए because he was already winning. For example today he was already better today and completely crushed it. Draw win. भाई क्या खेला है भाई. क्रेजी भाई, क्रेजी. Arjun has played so well man. and I've drawn against him chat, so I am also a very good player. Second time आंखों में आंसू. What is head to head मतलब कि भाई मतलब basically आपस में रिजल्ट क्या रहा उनका. That's important. Chat, I don't know why VD is playing so slowly today. I have absolutely no clue. Why do you mute my time because I have like throat irritation होती है यार. उसके लिए मैं मेडिसिन मंगाई है फाइनली. सो अब बेटर हो जाएगा, बट तो होता है तक ले खाना पड़ेगा. स्लो मोड इज ऑन. रियली? क्या बात कर रहे हो? स्लो मोड ऑन नहीं है यार. स्लो मोड इज ऑफ. क्या बात कर रहे हो? इट्स ऑफ. Relax guys, with is promoting Black Lotus through game. I don't know if that's good advertisement by the way. He should play faster. Karyakin lost. I don't think so. Result आ जाएगा. I don't think so. But let me check. भरोसा नहीं है Karyakin का यार. Karyakin is completely lost. Akshay, but I have met him. I have not played him. I have met him multiple times. भाई Karyakin की तो धुलाई हो गई भाई. क्या हो गया ये? We saw it till I think Queen B3 and now Queen C7. Best move by Shankland. Queen B6.
क्वीन टेक्स E5 चेक, किंग F7, नाइट D5, ओहो हो भाई क्या ही बेस्ट मूव्स खेली हैं। नाइट D5 ब्लंडर, क्वीन D5, किंग E7 एंड नाउ चैट करियाकिन इज कंप्लीटली लॉस्ट। भाई इस किंग को देखो यार, इस किंग को देखो, इसकी नजाकत देखो भाई, क्या ही प्रोडक्शन गेम खेल रहा है भाई क्वीन के साथ। बट ही इज गोइंग टू गेट चेकमेटेड टुनाइट, सो आई थिंक शांकरैंड इज गोइंग टू विन। भाई करियाकिन तो भाई बहुत गुस्सा होगा आज भाई। आज ट्वीट इनकमिंग फॉर श्योर, ट्वीट इनकमिंग फॉर श्योर भाई, guaranteed. Anybody wanna bet 5 rupees? Can we start getting rated just for fun at 35? Yes, Aditya, surely. I think anybody can get a rating. There's no age limit there. For example, people start chess at age of 4, for example. I personally played chess for a couple of years, of 11 to 13. And then I quit chess for 10 years because, well, the rat race. And then I quit my job at the age of 23 to play chess. So it's like, if you can manage somehow, it's all good. I mean, you don't have to quit your job for it, of course. Rating लाना इतना मुश्किल नहीं है. I would say anybody who works on chess 1 hour for a year would easily get a rating. Easily fit a rating. भारत रत्न for विशी सर. Really? हुआ क्या? क्या बात कर रहे हो? हुआ कि are you advocating for it कि सच में मिल गया? Let me confirm if that's news. अच्छा नहीं, यू आर एडवोकेटिंग, अभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ। ओह माय बैड, मुझे लगा मिल गया मुझे लगा मिल गया। डिमांड कर रहे हैं, ओके डिमांड कर रहे हैं। माय बैड। नहीं भाई 1.41 हुआ चैट, 4-1 हुआ भाई, 4-1 हुआ। थॉट्स ऑन करियाकिन, आई डोंट नो मैन, जस्ट चेक हिज ट्विटर। एनीवे लेट्स गो टू द गेम चैट, लेट्स गो टू विदिट्स गेम अगेन। ओह नाइट A5 नॉट द बेस्ट मूव चैट, क्या है ये? नाइट ऑन द रिम इज डिम भाई, इसलिए कहते हैं चैट ओपनिंग बुक्स पढ़ो, अंडर मिडिल गेम्स बुक पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। ममेद्यारोव किताब पढ़ के नहीं आया है। नाइट A5 नॉट, ओ विदित प्लेस नाइट E5 इमीडिएटली, बेस्ट मूव। VD हैज अ स्लाइट एज नाउ, कम ऑन लेट्स गो। झूठ, समय को तो नहीं बननी अभी तक भाई। समय लेकिन सीखने के लिए नहीं खेलता ना, वो एंजॉय करने के लिए खेलता है, डिपेंड करता है कैसे खेलते हो। एंड समय फिर पहले सागर भाई से कोचिंग लेके बाद में फिर खेलता है भाई विवेक देसाई के साथ, तो वो भी प्रॉब्लम है ना। रेटिंग तो जाएगी। He'll be mentor in Asian Games for India. Yes, true भाई, true. That would be awesome. भाई आंख में गलती से समोसा की चटनी चली गई, करूं भाई? आंखें धो लो भाई पानी से। ओपनिंग पढ़ो टिक्कू भाई, ये किसी को दिखा मत देना भाई। Anyway, chat. I have a question for you, chat. By the way, knight takes C4. So हमें किससे मारना चाहिए यार? VD has just played knight E5. So किससे मारे? Knight से कि pawn से? Come on, chat. Important question. Very important question. Arjun won. Yes. Arjun has won, chat. चटनी से। Yeah, you should capture with the pawn, chat. Knight वाले कौन है? लक्ष्य है ना? लक्ष्य भाई मतलब यार तुम्हें कितना टाइम हो गया स्ट्रीम पे यार? तुम 2K सब्सक्राइबर्स से हो भाई, 20K हो चुके हैं। सो यू आर डेफिनेटली नॉट एडवोकेटिंग कि भाई मैं अच्छा कोच हूं। सो प्लीज नाक ना कटाए हमारी और चेस पे काम करें थोड़ा सा, प्लीज अक्षय भाई प्लीज। एनीवे सो चैट नाइट से मार सकते हो, इट्स नॉट अ बैड मूव, बट पॉन टेक्स मारोगे तो यू हैव दिस सेंटर नाउ, you have a huge center, you have the open B file, A5 is coming up, C5 is coming up, and after a move like knight F4, simply A5 and the bishop is trapped. अब मान लो बिशप ट्रैप नहीं भी हो रहा था, मान लो ये मूव नहीं भी है, still I feel, you know, with this strong center, it is definitely the better way to go about it. So center is very important, child. Center play, if you are a beginner, if you have a choice between moving a piece to different squares, एक जा रहा है पीस कोने में, एक जा रहा है पीस सेंटर में, always choose the center. You will most likely be correct, yeah, like 95 out of 100 times you'll be correct. So that's why I think 95 was a really good move. बता दिया उनकी जो बता दिया। Erigaisi और Levy both are awesome, yeah. hard to choose. But today you came in B-Stats channel and today's video, yes bhai, yes. Samay tries to play like Mikhail Tal, which doesn't help too much. Yeah, probably, but he's very good though. Samay is really good. Yes भाई, thanks भाई। अरे भाई डिप्रेस वाइकिंग एक बंदा है ट्विटर पे, आपके ट्वीट लाइक करता है, बड़ा सही बंदा है, फॉलो करो। अच्छा, उसका नाम सात्विक टंडन तो नहीं है भाई? क्या लग रहा है भाई?
What about f5 for black? f5 I यूजुअली किंग को यार हम कहते हैं ना, ऐसे देखो, लुक एट दिस किंग, ये किंग मजबूर है, आप नहीं, तो डोंट ब्रिंग योर किंग आउट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किंग अंदर सेफ है, सेफ्टी में रखो ना यार, आराम से सेफ रखो, 3 पॉन उसके सामने, क्यों हमें क्रैकिंग के लिए कन्वर्ट करना है उसको? कीप इट सेफ, कीप इट सेफ। भाई आप मार दो बोल दे तो अच्छा लगता है, अदरवाइज लोग कैप्चर बुलाते हैं। अच्छा, अरे कैप्चर नहीं यार, मारने की फीलिंग अलग यार। हे विजय भाई कैसे हो भाई, बढ़िया। आज शैंकलैंग विंग ट्वीट करेगा, अरे हो सकता है भाई, हो सकता है। इफ वीडी विंस विल बी ह्यूज, इट विल बी टोटली ह्यूज भाई, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट वीडी विंस, बिकॉज टॉप 3 का चांस रहेगा एंड वाइट पीसेस आज है, दिस इज द मोमेंट टू स्ट्राइक। एंड ममेदयारोव ऑलरेडी मेड अ मिस्टेक, सो टाइम का चक्कर है वीडी का, बट वो उसने खुद दिया भाई फालतू में। So let's also come up some good moves. And by the way, chat, question for you. Let's say black plays something normal. Let's say he plays the move a6. ठीक है, मान लो उसने कहा मेरे कोई थ्रेट ही नहीं दिख रही, तुम क्या ही ये पीसेस हिला रहे हो भाई, हिला हिला के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। So what do you play now, chat? कोई मेट नहीं है, you want to improve your position. How do you improve? Come on, chat. White to play. हाँ जी भाई, दैट्स ट्रू भाई, बड़े चमक रहे हो टिक्कू भाई। चमक कैसे रहा यार, लग तो नहीं रहा मुझे। आई एस मैच फॉर ऑल इंडिया रैपिड ओपन 70 रेटिंग, या श्योरली यू कैन डू दैट। पोलिंग कमिंग, अभी नहीं। या सो चैट, वी कैन क्लियरली सी हमारे सारे पीसेस पॉइंटेड किस तरफ है भाई, गर्लफ्रेंड ब्लैक की तरफ पॉइंटेड है, सारे के सारे पीसेस इस तरफ पॉइंटेड है, एज यू कैन सी। एंड इट डेफिनेटली मेक्स सेंस कि हम रानी की बारी है तो रानियों गेम में लाते हैं। वी कैन, अब क्वीन h5 पॉसिबल है, बट क्वीन h5 का ड्रॉबैक है कि मतलब एक नाइट f4 जैसी मूव्स अटैक कर सकती हैं, सो दैट्स व्हाई इवन नाइट f6 पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी प्ले क्वीन टू f3 एंड स्टार्ट ब्रिंगिंग द पीसेस इनटू द गेम। हमारा d4 पॉइंट डिफेंडेड है, c4 डिफेंडेड है, b3 डिफेंडेड है, सब कुछ डिफेंडेड है, एंड दैट्स व्हाई क्वीन f3 ब्रिंग्स द क्वीन इनटू द गेम एंड नाउ वी सेट अप सम टैक्टिक्स समटाइम। सो ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो बैक टू दिस क्वेश्चन। इंडिया नंबर 1 बन जाएगा जल्दी से, लेट्स सी भाई क्या बनता है वो, लेट्स सी। ओ बाय द वे, Karyakin हैज रिजाइन्ड चैट। Karyakin भाई, आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट गेम ऑफ टाटा स्टील, लाइक 1 आवर 2 घंटे से कम में खत्म हो गई, 1 hour 45 minutes. So Karyakin has lost. I expect a tweet coming in the next half hour. So after Rook C1 chat, Rook C7 coming up, followed by Queen G7 mate. That's why Karyakin resigned, and that means Sham Shankland, I think, has won his first game, if I'm not mistaken. So amazing game by Shankland भाई, क्या ही ब्यूटी खेली भाई, बहुत बढ़िया। आप इतने हम्बल कैसे हो यार, पता नहीं यार, हम्बल मैं तो ऐसे जीना आता है मुझे। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। हाय Karyakin। अच्छा आप समझा। मैंने कहा मैग्नस का नाम तो दिख नहीं रहा इस गेम में यार, व्हाई इज अनीश सो एक्साइटेड, अब समझा मैं। सॉरी माय बैड। बाय द वे, कार्लसन इज विनिंग, कार्लसन इज कंप्लीटली विनिंग भाई। कार्लसन आदमी है या खरबूजा है भाई, मतलब क्या खेलता है लौंडा भाई, क्या खेलता है लौंडा। ओ माय गॉड भाई 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 भाई। So chat, we saw it till Queen A2, now A5 played. Oh no, he's not winning. He's not winning. He's not winning. रुको, he's not winning. My bad. My bad. वो मेरी वेरिएशन थी भाई, वो मेरी वेरिएशन थी भाई, वो उसकी नहीं है। सॉरी, वो मेरी वेरिएशन थी। मैं भी कहा भाई, इतना नूब कैसे हो गया भाई कारुआना। My bad. जो हमने एनालाइज करा था वो थी भाई, वो थी। सो क्वीन A2 के बाद A5 के बाद कारुआना ने क्वीन A3 पेला मतलब खेला, सॉरी पेला मतलब अटैकिंग द पॉन ऑन E7, एंड नाउ आफ्टर रूक E7 विंस पॉन ही प्लेड C4। या सो इक्वल भाई, इक्वल। सॉरी इक्वल गेम है भाई, इक्वल गेम है। नेपो की ड्यूटी लग गई। ट्रू। सॉरी माय बैड। This is why you should not do too much analysis, chat. Drawbacks of doing too much analysis. Sometimes this happens. So let's go to the game of Vidit now again. Oh, C6 played. Come on. Now you could try bishop A3 with the idea of knight D6 or knight C5. Totally possible.
Started doing math instead of math. यार मैथ ही कर रहा हूँ भाई यार, बस वो हो नहीं रही मुझसे. अनिशा करेंगे in the corner. अनिशा लाइक इस नूब का कोर्स मैंने क्यों लिया, ऐसे दिल फीलिंग सा खेलने वाला लड़का, मतलब खुद ही स्कैम कर दिया. अरे हाय 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 हाय. Anyways, let's go to Anish's game chat. We saw it with Queen A6 after H6 Rook F D1 was played. The idea is to prevent C5 and E5 of course. हम मार देंगे रुक को क्वीन के ऑपोजिट रख दिया हमने, and that's the idea यार. मतलब we don't want to allow black to counter a strong pawn in the center. ये pawn इतने squares control कर रहा है. We don't want him to play E5 and C5. That's why we play Rook FD1. Very important. We go back to Vidit's game now. Magnus said Arjun plays his style. Really? कब बोला उसने? Yeah, Karakin resigned. We saw it. The shortest game of Tata Steel that ended in a win for one side. Embarrassing loss for Karakin. Hopefully he will not tweet something about it. I hope so. I really hope so. Otherwise there will be some new fire on Twitter. Let's go to the game with it now. Karakin does not want to tweet. Started with crazy Martian name from where? Bhai, I am Martian. मैं मार्स से आया हूँ. So मेरा यूजर नेम, मेरा ट्विच हैंडल सब कुछ मार्स से रिलेटेड है. और इलोन मस्क के साथ पहले फ्लाइट में मैं ही बैठ के जाऊंगा भाई वापस अपने घर. His boyfriend क्या है भाई? Did you see Ian jinxing Sergey? I have not seen it भाई. तरह से इंटरव्यू में मैग्नस ने बोला अच्छा नाइस. ये कजाकिन को क्या चुल है ये छोड़ो यार. Let's not like मतलब ऐसे इंसल्ट ही करना किसी को, टीज करना. कजाकिन क्या लिखा है यार? दिस इज टीजिंग. अबे कजाकिन क्या लिखा है? दिस इज हर्टिंग. सो कजाकिन दिस इज फन. Anyways, one quick look on Twitter. नहीं भाई, quick look at Arjun's game. मैंने दोनों सेंटेंस कंबाइन कर दिए. Awesome. So this was Arjun's game chat, the final game where his opponent offered a draw after this was the position after f6, and to be honest Arjun could have won this after playing a move like rook h c1. For example, let's say rook h c1, e5, bishop g3. He is still better because this pawn is weak. Let's say rook a b8, and then you go rook c2, defend this pawn. The knight will next go to d2. The knight will come to c4, defend this pawn forever. And then slowly after f, for example, let's do it. Let's play. Let's say he plays king f7, knight d2. Let's say king e6. Now probably it's time for f3 already. Let's say he plays h5. I play knight c4. He plays g5. I play e4. The bishop will come to f2 via this path. Knight will go to e3 and d5. And Arjun would have been really good in this position, but he took the draw because it gave him the tournament win. So pretty practical decision for him. Surya game. Yeah, Surya is worse. I do like black structure here. Strong central majority of pawns. White के pawns भाई देख के ही थोड़ी सी अजीब लग रहा है. So he will be under pressure for sure. Let's go to the game now. Oh, he played queen f3. Nice. मार्स पे समोसा मिलता है क्या? भाई समोसा मार्स की ही डिश है. How do you think किसने इन्वेंट करी? हमारे ही रिश्तेदार आए थे मार्स से, उन्होंने इन्वेंट करी थी भाई समोसा, तो हमारी डिश है. कृपया एक मैसेज एक बार लिखें. यस करेक्ट. कश्मीर मार्स पे है? नहीं भाई, मैं मार्स पे था. शो अनीश गेम. Yeah, we just saw it by the way. अनिश गेम में अभी कुछ हुआ नहीं यार. वन मोर मूव, नाइट d5, एंड नाउ चैट ब्लैक ने मिस्टेक कर दिया बिकॉज आफ्टर नाइट d5 cd5 you clearly see this pawn is now weak, and this bishop is so stupid. I do feel white is slightly better. There is control on the queen side, so Anish should manage to put a lot of pressure on Ganguly here. Let's go to the Carlsen game. Yeah, nothing happened still. c4 के बाद 20 moves played chat. 20% discount confirmed for one person on the course. अगर 100 moves जाएंगे तो 100% discount for one person. Let's go to Vidit's game now. Yeah, Ajay, Arjun has won the challengers chat. He has won, and that means he'll be playing the masters next year. मैट डेमन ने आपने आलू के समोसे ही बनाए थे. बट मैट डेमन की स्ट्रैटेजी में पसंद नहीं है यार. अपनी ही पूप से वो फर्टिलाइज कर रहा है यार. उसको पता नहीं है कि भाई टेक्निक से यू कैन यूटिलाइज द मार्शियन सॉइल.
उसने मेरे से पूछा नहीं एक्चुअली, तो मैंने भी ईगो में बताया नहीं पर बता दूंगा अगली बार। अनिश ट्वीट आया, टिक्कू इज माय बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई उस दिन तो भाई मैं पेंट दूंगा भाई। प्लीज सी ने पोस्ट ट्वीट। यार अभी नहीं यार, अभी गेम फोकस करते हैं, ट्वीट बाद में। मार्च में थे तो कश्मीर से कौन है और नासा अभी तक फरीदाबाद कैसे नहीं पहुंची? एक्चुअली हमारे पास टेक्नोलॉजी है भाई जिससे नासा कैन नॉट डिटेक्ट अस, दैट्स द इंपॉर्टेंट एलिमेंट देयर। पैसा कितना मिलेगा? काफी मिलेगा यार, फॉर श्योर। इतना बड़ा इवेंट जीता है चैलेंजर्स में, फॉर श्योर एटलीस्ट फ्यू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एटलीस्ट, फॉर श्योर। कराकिन को कश्मीर में पैदा होना चाहिए था। भाई नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है यार, ऐसे नहीं, किसी को टारगेट नहीं करना यार, इसको टीच कर सकते हो। डोंट लाइक पुट हेट टुवर्ड्स समबडी, यू कैन लाइक टीच देम अ लिटिल, दैट्स फन। गणेश का सबसे फायदा उठाया है जस्टिस ओपी। यार वो आज ही डिजर्व्स यार, मतलब ही डिजर्व्स भाई, ही डिजर्व्स लाइक, मतलब एक विन उसकी हो गई वैसे यार, ठीक है, एक विन हो गई ना, ठीक है, तो नहीं हराते भाई, फिर ठीक है, फिर ठीक है। कश्मीर मार्च पे है इसलिए इंडिया का, अरे भाई भाई ये क्या है? ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मेट, हाँ, सो ग्रैंड प्रिक्स चार्ट विल स्टार्ट ग्रैंड प्रिक्स चार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd Feb। वहां पे बेसिकली 3 टूर्नामेंट है एंड हर टूर्नामेंट में 4 पूल्स रहेंगे। एक पूल में वीडी है, एक पूल में हरिकृष्णा है एंड कंसेप्ट यह है कि हर पूल से एक बंदा क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल्स के लिए एंड सेमीफाइनल से 4 बंदे खेलेंगे, फॉर फाइनल्स 2 लोग खेलेंगे एंड विनर एक आएगा। डिपेंडिंग ऑन द रैंक यू काइंड ऑफ रीच, तो यू विल बेसिकली गेट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स अब ऐड करेंगे आफ्टर 2 टूर्नामेंट्स जो हर किसी बंदे को खेलने हैं एंड वी विल सी हु विल क्वालिफाई फॉर कैंडिडेट्स। जब टाइल खत्म हो जाएगा तो आप इसी टाइम पे स्ट्रीम करोगे? टिप स्टॉर्म 3rd से तो आई थिंक वही है, ग्रॉ प्री है, तो सिर्फ 3 दिन की बात है, 31st, 1st, 2nd। उसमें 31st और फर्स्ट को मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ चेस का दम, जो एक इवेंट है हमारा, जेल का इवेंट है, जहां पे आई इनवाइट सम स्ट्रीमर्स एंड वील हैव सम ट्रिविया ऑन द स्ट्रीम। और 2nd को मेरा एक वीडियो का प्लान है, सो फिर 3rd से तो आई थिंक वही स्टार्ट हो जाएगा। यस यस, सारे लाइट स्क्वायर्स दे दिए भाई। ओहो मुंह में पानी आ रहा है लाइट स्क्वायर देख के भाई, ये स्क्वायर्स देख के मुंह में जो पानी आ रहा है ना भाई, ब्यूटी भाई, क्या सारे भाई, ब्यूटी भाई ब्यूटी। कितने लाइट स्क्वायर दे दिए यार, कितने लाइट स्क्वायर दे दिए भाई। मतलब अब ये नाइट G4 खेलेंगे हम और फिर कुछ ना कुछ तो सैक बनता है भाई। One day Sahil will play Tata Steel, surely Rankishore, भाई surely. The thing is, if I could reach like 2500 rating, let's say, even become just a grandmaster, I could totally play challengers. That's the beauty about it. So it is possible, someday it is totally possible. हवस कंट्रोल करो। हवस नहीं, मुंह का पानी है भाई, खाना खाते हो हवस थोड़ी होती है तुम्हें। ये मुंह सट्टा हो चुके हैं भाई। Let's play, come on Vidi, let's go. Let's go Vidi, let's go Vidi, come on Knight G4. Time for sack, time for, come on Knight G4. नेपो ने आज कराकिन को भी पीछे छोड़ दिया। वो मैंने ट्वीट देखा नहीं है उसका ढंग से, अभी स्ट्रीम पे देखा था। स्ट्रीम पे कई बार समझना मुश्किल होता है ट्वीट को। विदित का पूल काफी मुश्किल है, सारे पूल डिफिकल्ट है भाई। स्विमिंग तो करनी है, पूल में सारे शार्क्स तो है ही है, बस स्विमिंग करना ही है तुम्हें। यू हैव टू गो थ्रू द पूल नाउ। हर पूल डिफिकल्ट है भाई। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। ओके भाई आप ही हेल्प कर दो यार कुछ। The style in which Arjun plays is definitely one Magnus enjoys. That's what Magnus said. And कल का मैच 4:30 है ना? Yes. Chat, कल का मैच 4:30 है. The final date tomorrow will start at 4:30, actually 2 hours prior. So कल स्ट्रीम जल्दी होगी. Hopefully मुझे याद रहे. लाइट स्क्वायर सूर्य को मिलने चाहिए, उसके नाम में ही उजाला है। उनको भी मिल जाएंगे यार उनकी गेम में होपफुली, बट F6 इज नॉट अ गुड मूव। जैसे किसी ने पूछा था क्या F5 खेलना है कि नहीं, F6 उसी का छोटा भाई है, तो आई डोंट थिंक दिस इज द बेस्ट वे। Is Pragg playing? Pragg is playing, भाई Pragg is totally playing, but the issue is Dubov जी को कोविड हो चुका है and that's why he's not able to play. He withdrew from the tournament I think yesterday. So all his 3 opponents, first of all yesterday it was I think Rapport, today it is Pragg, and tomorrow it is Carlsen. We'll get a walkover. Walkover basically means when an opponent does not show up, you get a free point. You don't get any rating out of it, but you do kind of gain the free point. So it helps a lot. Yeah, it helps a lot. मतलब free का point बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है।
You could play this totally. The only thing is, यहाँ पे knight कुछ कर नहीं रहा है. Like what is it doing? It looks good. Smart है, but what is it actually doing on g6? I'm not sure. Knight g4 में क्या है? It has many ideas. You could sack on f6, sack on h6. You could bring it to e3. So हमें ऑप्टिकली नहीं जाना, हमें उसका यूजफुलनेस भी देखनी है. Knight g4 f5 कह रहे हो क्या? Do you think this is the problem, chat? Chat, what do you play now? Can you find out the move, chat? White to play, black plays f5. Pokes your knights. What can you do now, chat? White to play, come on. White to play. भाई चैनल को एक समोसा दे दो भाई यार. मैंने बोला नेदरलैंड्स से हमारा वो लॉजिस्टिक्स का चक्कर है. वी कांट रियली ट्रांसफर द समोसा टू नेदरलैंड्स. सो नाइट h6 इज पॉसिबल बट नॉट द बेस्ट. यहां पे बेस्ट मूव है नाइट e(f6) चेक. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट e(f6) चेक. एंड नाउ अगर नाइट से मारा, पहले नाइट से मारा, ठीक है, देन कम्स बिशप e6 चेक. And clearly white is much better if not winning. So because f5 hanging है, सब कुछ hanging है, I will just take on f5 next. So he cannot touch with the knight. Queen से मारा तो भाई रानी खाएंगे, of course, फ्री की रानी. And if he takes with the pawn, then comes bishop takes d5 check. And if you take with the bishop, then queen f5, and I'm again winning clearly. And of course black is like 1 2 3 pieces, you have 2. But with this knight f6 coming up, knight h6 coming up, queen g6 coming up, it is completely lost. Arey, he played knight d3. He played knight d3. No. Arey yaar, knight was so interesting भाई. Actually he does not have time. उसके पास टाइम नहीं था कैलकुलेट करने के लिए यार. Shit, that was the issue. He did not have time on his clock. अगर MVL ने अर्जुन को वर्ल्ड ब्लिट्ज में हराना होता तो अर्जुन टॉप 3 में होता. कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं. दैट्स नो इशू. टाइम का चक्कर बाबू भी. एग्जैक्टली, टाइम इज द प्रॉब्लम. भाई मुझे अब तक याद है, मेरे को याद है मैं समय की स्ट्रीम पे था ट्विच पे, और वहां पे मैं उसकी सब बैटल में हार गया था. और वो कहता है यार हारे क्यों? मैंने बोला यार टाइम बड़ी कितनी चीज है. ही इज लाइक व्हाट? आई एम लाइक शिट, आई डिड नॉट रियलाइज दिस. और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टॉक टू समय. सो गुड इंट्रोडक्शन टू समय. एनीवेज, this is the result of less time. Yeah, exactly, man. If he had time on the clock, he would have found knight g4 for sure. But now knight d3 is like a normal move. It's the move you play when you have no time on the clock. Very safe move. And yeah, it's still better for white, but not winning anymore. 19 moves done. 19 moves done for white. So let's go to the game of Carlsen now. And by the way, the game is still stuck on 20 moves. I would say white really wants to either capture or push, so black should ideally take on c4. That's the only idea available here. If you play e6 chat, I think this pawn can be weak. So already you can see, yeah, the bar jump कर गया उस side में. So c5, and now this pawn chain is really strong because black के pieces block हो रहे हैं. बिशप यहां से नहीं आ सकता, बिशप यहां से नहीं आ सकता, बिशप यहां से नहीं आ सकता. तो करेगा क्या बिशप? उसके सपने नहीं है क्या भाई लाइफ में? That's the issue. So we come to this position. Nepo ने sorry tweet किया. Really? Can we have our own tournament? Aditya, surely we have normal tournaments for chill, of course, and sometimes we have prize money tournaments as well. And for sure we can have it. For sure. For example, जैसे we had one जहाँ पे we gave away, for example, I think chess base 16 हमने दिया था बहुत पहले. So whenever the tournament finished, you can surely have one. For example, I think we can have one on 2nd, I feel. Why Nihal doesn't perform well in Blitz? Nihal does not perform well in World Cup WC Blitz. Okay. World Championship Blitz, no. World Cup Blitz, no. What is WC भाई वहां पे? Magnus, अरे Magnus को भी देखिए हमने. Let's go to the Vidit game now. I think Karak is trying to become chess. I don't know about that. I think he's trying to become the new Anish Giri, which is not going to happen. Okay, so ciao, chat. Vidit ने 1 घंटा एक मूव के लिए लिया. Now he can't afford to think, and now he cannot win also because of time.
दैट इज पॉसिबल भाई, दैट इज पॉसिबल, बट आई डू फील कि जितना मूव्स अगर वो अगले 5-6 मूव्स खेल देना, एक बार 25 मूव पहुंच जाएगा ना, एंड ही हैज लाइक 25 मिनट्स इन द क्लॉक, देन ही विल बी लेस स्ट्रेस्ड। इट्स मच मोर डिफिकल्ट टू प्ले लाइक आई वुड से 30 moves in 30 minutes than let's say 20 moves in 20 minutes. बहुत difficult होता है। Every time Vidit is having advantage, Vidit is giving up because he has no time on his clock. Yeah, today he spoiled it on his own. Today I think he is to blame for, he has to blame himself, because I think, yeah, the move is not easy, but he would have definitely found it by, if let's say he had more time. So the thing is, he spent a lot of time here. In this position, he used up like 40 minutes something, I don't know. That was the critical moment. And he did not even find the best move. So that will definitely hurt him later on. Vidit needs live by, उसका साबुन आजकल स्लो हो गया है। अर्जुन होता तो विदित से बेटर काम करता। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट भाई, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। हम चैलेंजेस में देख के चल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज विदित इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन अर्जुन राइट नाउ, आई फील। कांसे को क्लासिकल में होल्ड करना एज ब्लैक, नॉट इजी मैन, नॉट इजी। हाउ मेनी मूव्स? 19 मूव्स। Black has played bishop to f7. Now, to be honest, that does not feel like the best move to me, because chat, अब मुझे बताओ, देखो, Black ने खेला bishop f7, ठीक है? What is the drawback of that move? मुझे move नहीं चाहिए, drawback चाहिए। मतलब आपने अपनी लड़की को अपनी क्रश को ड्रंक होकर टेक्स्ट कर दिया, उसका ड्रॉबैक फिगर आउट करने के लिए आपको सुबह पता लगेगा। सो बट यू विल गेट टू द ड्रॉबैक। तो सेम वे इस मूव का ड्रॉबैक क्या है चैट? व्हाट इज द ड्रॉबैक हियर? अर्जुन होता तो ना मास्टर्स में आना ही बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली, बड़ा मुश्किल है भाई। HTC attack lost. Yeah, that's true, but उसका मोर, वही बात सही है, but more importantly, yeah, so idea is f5 square is lost. Now there is no control on the f5 square. So you could possibly play moves like knight g3 and try to bring the knight to f5, and that might be a bit scary, yeah, with knight. Imagine karo black, let's play some stupid moves of black, yeah. Rook b8, now knight f5, and you can see कि कितना खतरनाक अटैक आ सकता है. So that's the issue here, and maybe this is not the best move, but let's see what his plan is. He has 27 minutes, dude. Yeah, but it's enough. He played rook to e2. He's trying to play fast now. He missed the moment, I feel. Not the best move for sure. Arjun has already drawn enough. He has already drawn the game, and he has won the challenger section. This was the final position, by the way, in his game. I'll show you the final position. In this position, his opponent offered a draw, and Arjun took it as white. He was slightly better. He took the draw, and now the game is over. So Arjun will, of course, win the challengers. Crush got emotional. भाई usually PK लिखोगे तो भाई emotional नहीं होगी भाई. That will be the final call. Arjun is nowhere near Vidit. He's there, but not there yet. बेचारा बिशप ऑन b2. बुरा लग रहा है उसके लिए. काश कुछ कर सकती. कर सकती, okay. The thing is, you can do something, yeah. You can play to a3 at some moment. Possible. You can do something. Okay, you can't. Vidit has to do it. Next year, Pragg Masters में खेलेगा. Next year, unlikely. Unlikely because they constantly change the players. So I don't think Pragg will play next time. Arjun will play for sure. And by then, he will probably already be 2800, I think, 2700, I think. How is he doing? He only has 27 minutes, dude. He is doing fine, bhai. He is doing fine. His time is definitely a problem, but not the. I mean, the clock is the problem. The push is not a problem, though. अरे पवन भाई, thanks for the भाई. भाई इसका नाम क्या रखिया? Everyday new stickers भाई. इस बंदे का नाम क्या है? इसका पत्ता है क्या सर पे? Is it a leaf on his head? Really? अरे पवन भाई, thanks a lot यार. Means a lot भाई. Means a lot. भाई इस बंदे के सर पे पत्ता है क्या? इसके? और ये छोटा, ये समझ विवेक लग रहा है मुझे. ये पत्ता कौन है भाई? यो हर्षद भाई, कैसे हो यार? Thanks a lot यार. पवन भाई, thanks. Means a lot भाई. Really means a lot. Stream is delayed by a few minutes. No. I think कुछ second का delay होगा for sure. ज़्यादा नहीं होगा. Building was nothing at the age of Arjun. The age of Arjun sounds like some वो ऋषि मुनि के पुराना होना, मतलब नहीं यार. Actually the thing is, with as you go ahead in time, I feel it becomes easier to kind of gain that strength quicker. I feel if you were, for example, Adhiban was like 2100, yeah, at the age when Nihal was the GM. Chat, I'll be back in 6 seconds.
भाई ये क्या म्यूट लगाता हूँ मैं, अरे भाई भाई थैंक्स अ लॉट यार पवन भाई, मीन्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट भाई पवन भाई, रुला देंगे सर भाई, आज मैं सच में रो पड़ूंगा भाई, थैंक्स अ लॉट यार भाई मीन्स अ लॉट भाई, 1000 रुपए की कॉपी अरे यार थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट पवन भाई, मीन्स अ लॉट। आज तो भाई, आज तो कुछ पागल ही हो गया भाई ना, आज तो मैं लिटरली आई थिंक ये कुर्सी स्टर्डी है, वरना आज तो पक्का गिरने वाला हूँ भाई। थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट पवन, मीन्स अ लॉट। फाइनली 9 टिक्कूज होम, या भाई फाइनली विद कॉफी दो। Everyone commenting about VD must check their rating. Then why it's kind of human emotion for us to diss everyone. We do it for cricketers every single day when they play, do not play up to their potential. So I understand, but I think किसी को hurt नहीं करना चाहिए. For example, I can say VD ने अच्छा नहीं खेला यार, I'm disappointed. That's fine. VD for vlogs, VD for vlogs, VD for vlogs, वो गलत है। आज समोसा पार्टी बिल्कुल बिल्कुल। आज आप सीए कर लो, एक सीए क्या भाई, सुपर चैट नहीं आप पवन भाई, मैंने देखा है, मैं देखा थैंक्स अ लॉट भाई। वीडियो भी शायद जीता था ना, हाँ वीडियो जीता था यार, ही वॉन इट आई थिंक अ फ्यू इयर्स बैक। बाय द वे चैट, अरे प्रखर कुमार वेलकम टू स्पाइडरमैन भाई, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ध्यान से रखें, ये पावर्स हम बहुत लिमिटेड लोगों को मिलती है, बड़े ध्यान से भाई, ध्यान से थैंक्स अ लॉट भाई। How deep can you go with your calculation? I think it depends. If it's a simple position, I can go like as long as you want me to. कोई end game है and there are few pieces on the board, surely I can calculate 20 moves deep. But I think most people above 22,000 can calculate it. But if let's say this position, yeah, so complicated, जहाँ इतने pieces है, I can go like 7-8 moves deep. उसके आगे मेरा धुंधला होना start हो जाता है दिमाग में. I need to work on it though. By the way, chat, let's check out Carlsen against Caruana. 21 moves played, so 21% discount confirmed. फॉर 1%, ये गेम जितने मूव चलेगी उतना % डिस्काउंट मिलेगा भाई। ऑलरेडी स्पैमिंग, नहीं ऐसा नहीं है। सो ये चेस को इस माइंड में ऐसे कैसी आदतें हैं, लाइक साहिल भाई आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। देयर इज अ वीडियो ऑन द सेकंड चैनल एग्जैक्टली फॉर दिस सीजन, बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे, वो वीडियो देखें, आई थिंक 5-6 मिनट की वीडियो है। इट विल बी लाइक दैट वीडियो इज ऑल यू नीड टू नो, आप उससे सीख जाओगे भाई। सुपर चैट मिस नहीं हुई यार, बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, सुपर चैट मिस नहीं होती भाई, हाँ ऑफ कोर्स यार, मैं तो मैसेज भी मिस नहीं करता, सुपर चैट की बात है। तो चैट, अरे अरे दुराई भाई थैंक्स अ लॉट फॉर द चैट भाई, नंबर 1 यार, ये वो ये स्टिकर मस्त है भाई, मस्त नाच, आई कुड डांस लाइक दिस फन यार, ऐसे करके तो चैट, इट फील्स नाइस, थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट। Anyway, chat, let's go to the game of VD again. अपना VD, सबका VD. Let's see what he will play. Chat, I have a question for you. ठीक है? इस पोजीशन में ब्लैक की तरफ से should black play king h8? Yes or no, chat? I have a question for you. Where is the king safer on g8 or h8? Question for you, chat. King कहां पे सेफ है, g8 या h8? Come on, ज्यादा सेफ कहां पे है? NM डांसर टिक्कू ये क्या है भाई? हाँ, do you own टिक्कूजिनी वाड़ी? नहीं यार, I have heard of that place. I know it's white to black, it's black to play actually, but let just ask me this question. G8 क्या h8 बताओ? Yeah, so त्रय ने g8 बोला, कुछ लोगों ने g8 बोला है, but h8 is the better square because as we clearly saw knight f5 and queen g4 के plan आ सकते हैं white के. In that case, king h would be a better square. We can defend easily. For example, let's say black plays king h8, white plays knight g3. Let's say this is not possible for now. We are thinking in themes, not in calculation here. Let's say rook c8, knight f5. Let's say rook a8 and queen g4. And you clearly see already that knight h6 is no longer possible because the king is not on g8 because tactic thi pawn pin tha. Queen g7 can be easily defended with rook g8 now. There is no mate anymore. So clearly there are benefits to putting the king on g8. And one more benefit is later on you can play bishop g8 and bishop h7. So that's one more idea for black. So king h8 was one good move, but black played another good move, that is bishop to c7. Now the bishop controls the f4 square. So no longer you can play f king, knight f4 is not possible. Even knight g3 can be captured sometimes. And also you kind of allow your knight to come to b6, and also sometimes in the distant future, bhai, aise karke, just saying.
We all love you, bhai. Please don't leave streaming. Of course, bhai. Of course. Why would I leave streaming? I love a lot, bhai. I follow टिप स्क्वायर्स याद करने के लिए माइंड ने बिशप घुमाया, थोड़ी देर में बिशप का कलर ही चेंज हो गया. ध्यान रखे भाई, ध्यान रखो. You wouldn't ask if it was safer on G8. Yeah, but at least it's kind of understandable the question. Yeah, it's very important to understand why. The knight on a5 just waste. Why is he not taking the bishop and take the bishop pair? Because white will get a huge center, bhai. After knight takes, pawn takes, white will have a huge center, and that is really, really a problem. And this knight also does not have any good squares to go to right now, so that is go to e7, not a good square. Arjun be next Indian. Anand, mark my words, totally possible, bhai, totally possible. Why is really not better? It seems white pieces are more active. Yes, it does feel that way, but the thing is, black can of course try to exchange a few pieces. For example, it's like ब्लैक इज जस्ट होल्डिंग ऑन. होता नहीं है कि आप मतलब ऐसे वो लगा रहे हो, आप वो कर रहे हो, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टग ऑफ, क्या बोलते हैं इसको यार, ओ माय गॉड, व्हाट डू वी कॉल दिस हैंड, व्हाट डू वी कॉल, ऐसे हिलाने को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं इसको, एमनीशिया इनकमिंग. Women's candidate कब से यार अनिशा? I am not sure. I think it's later on, right? It's not right now, if I'm no. Arm wrestling. Thank you, bhai. Arm wrestling. So arm wrestling कर रहे हो. So just because the arm is here right now does not mean कि sometimes they can lock the system. Yeah, they can lock it. So if you are like only slightly stronger than somebody, you cannot somehow manage to push it. Yeah, if they lock it like this. So black lock करके बैठा है यहाँ पे पूरी तरह. लॉक करके बैठा है, d5 कंट्रोल कर दिया, किंग को थोड़ा डिफेंड कर दिया, ये कर दिया, सब डिफेंड कर दिया, बट कभी ना कभी वो लॉक टूटेगा और उस लॉक टूटने को चोर नहीं बोलेंगे हम. सो लेट्स सी क्या होता है. VD हैज प्लेड रुके e1 बाय द वे वेरी क्विकली. आर्म रेसलिंग, यस भाई, मेरा पता नहीं क्या हो गया अब तो भाई, इन्फ्लुएंस की सैलरी. अरे भाई भाई ठीक हो भाई, कैसे हो? बढ़िया हो भाई, बढ़िया हो. Whom would you fear more, turn 13 or turn 21 Magnus? यार देखो, तुम साल मत पूछ रहा, तुम मैग्नस पूछ रहे तो भाई फियर तो अपने आप कांप जाता है भाई. सर वन कैन मेक एन एडिट ऑफ ऑल ऑफ योर लाफ. बनाओ भाई, कोई बनाओ भाई, लाफ का एडिट बनाओ भाई, 50 लाफ ठूस दो मेरी. मैं फिर पोस्ट कर दूंगा. नॉट अनाउंस्ड, या बिकॉज़ आई हैव अ क्लू अबाउट दैट. आई थिंक इट्स लेट मी चेक. इट इज नॉट इन फेब फॉर श्योर. या डेट आई नहीं है अभी, डेट आई नहीं है, बट एज आई थिंक इट मस्ट बी इन लाइक मार्च और अप्रैल और समथिंग, जस्ट एज आई नो. How many left? So chat, 21 moves having played a BD, 19 more moves he has to play in 25 minutes. I think he's realized कि time पे कम है, and that's why he's trying to play fast. Krish, he has lost the edge, but to be honest, sometimes it matters. Practical play matter करता है. As we can see, there are some good squares for white to exploit. So I do feel even if he lost the edge, he can gain it again in a few moves. And he's also pulling fast to save time on the clock. That's very important. कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा एज मिल जाए भाई, +2 हो जाए, बाद में एक मूव में सारी एज दे दे. उससे बेटर है अभी थोड़ा सेफ खेलो, फास्ट खेलो, एंड यू ट्राई टू आउटप्ले ओपोनेंट. अरे अशल भाई, थैंक्स भाई. वैसे तो हमेशा 100 ही करता हूँ, बट आज तो फोमो हो रहा था. कीप इट अप. अरे थैंक्स लॉट अशल भाई. मींस बाय द वे आपका वो डीपी काफी अच्छा है यार, अच्छा बनाया. नाइस, थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट. पीयर प्रेशर. नहीं भाई, पीयर प्रेशर नहीं यार, प्लीज डोंट फॉल इनटू पीयर प्रेशर. So chat, let's go to the game of Anish now. By the way, in the Anish game, oh, let me refresh this. What happened? आज वीडियो किंग सेफ है. True. By the way, after queen a6 h6, I think we saw rook f d1, knight d5. He took on d5, cd5, played queen to b7, attacking the pawn on d5, and black played g5, attacking his bishop. Very interesting. Opening up his king, but it's kind of safe, yeah, because he has 2 bishops, so you can see these bishops kind of give a lot of safety to the black king. Hi, किसी को chessassist courses चाहिए DM? ओ भाई भाई आदित्य भाई, ऐसे मत करो भाई, पूरा DM आपको भाई, सबके सब भाई पीछे पड़ जाएंगे आपके भाई. That is a very risky strategy. Very risky strategy भाई. How is traveling for playing tournaments even profitable? It's not profitable, Jordan. The thing is, you kind of travel for tournaments hoping you become a top player and then you can get the returns. That's the strategy usually they follow. Of course, it's not profitable to travel when you are, let's say, not a grandmaster, of course. भाई मॉड बना दो. अच्छा है तो भाई. हो गया स्टार्ट.
अटेंडेंस लगा दो वरना 1 रुपए जीपे कर दूंगा भाई। लगा दी लगा दी भाई। ग्रीन लैंटर्न प्लेस चेस इज चेसेबल कोर्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। भाई मुझे पता नहीं भाई। एक लग रहा है RIP इतने नहीं यार, इट्स ऑल फाइन। अच्छा है लक्ष्य भाई, ज्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं भाई, ज्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं भाई, शांति रखो। वीडियो गेम लेट्स डू वीडियो गेम। So most suffer heavy losses while trying to pick up job. Yes, I don't know exactly. It's exactly like education, yeah. मतलब you invest for 10 years, 12 years, 15 years, 16 years, hoping you will probably get a job later. It's similar, but यहाँ पे returns are much lower. So yeah, it's of course very very difficult. India still for this piracy, तरुण जी कह रहे हैं. Okay, I guess piracy is everywhere. Hello Dikuji, what will be on after this event? Please share so we can be here regularly. Samir bhai, so this will end on 30th. Tomorrow is the last day of this event. After that, 31st and 1st, we'll have an event called Chess Ka Dam, jahan pe bhai, we'll have a lot of prizes. We'll call a couple of streamers and stuff. You know, GL पे होगा वो. And उसमें हम trivia questions होंगे. So भाई trivia तैयार रखना. Chess के भाई समय कब पैदा हुआ, ताने कितने GM norms है, ये सब you know all of this stuff. And फिर second को of course I'll probably do a chill stream along with a video जहाँ पे I'll explain what is happening in the Grand Prix. And third से फिर Grand Prix start है. So that will start from 3rd of Feb और वो चलेगा I think at least 10 days or so. So उतना तो planned है अभी. सुबह चेस खेल रहा, आंखों में दर्द हो गया. अरे भाई कोई बात नहीं भाई, अब स्ट्रीम से दर्द करें आंखों में. वैरायटी लाइफ है भाई, वैरायटी. भाई फ्री में कोर्स लो तो पढ़ना का बिल्कुल मन नहीं करता. स्टेइंग फॉर एक्सपीरियंस. लक्ष्य आई नो दैट, आई नो, आई रिमेंबर भाई स्टार्टिंग में व्हेन आई थिंक लास्ट ईयर मैं कभी यू नो हर 3-4 महीने फ्री का देता था. सो इट वाज फनीली इनफ जो लोग फ्री का मिलता था उनको लाइक थ्रू सम कॉन्टेस्ट समथिंग, दे वुड गो थ्रू लाइक 1/5 ऑफ द कोर्स एंड लीव इट. और जो एक्चुअली जो पैसे देके लेते थे दे यूज्ड टू गो थ्रू द एंटायर कोर्स मोस्टली. तो इट वाज काइंड ऑफ वियर्ड. सो तब से मैंने फ्री देना बंद कर दिया. That was the strategy there कि भाई people don't read it. Damn, East Bengal is winning. मूड खराब हो गया. East Bengal is winning मतलब East Bengal कहाँ जीत रही है यार? मैंने कुछ रेफरेंस मिस किया लगता है. अब हमेशा कैप्स में लिखेगी. अबे नूब, ये नहीं देखा तूने? गेस्ट, हाँ गेस्ट में बिलोंग for sure I'll call some guests. बंदा जो क्रैब गेम खेलना चाहता है वो उसके लिए ये बात तो है भाई. बाय द वे खेलेंगे, वो भी खेलेंगे भाई. ISL कोलर द्रवी. अच्छा ओके मेक्स सेंस. So let's go to the game of VD again and Black has played B6 chat. Very important. चेतन भाई, अरे भाई thanks for the 40 rupees subscription भाई. सीधा UPI हो गया भाई ये तो. Thanks a lot भाई, thanks a lot. कल का ट्रेंड कंटिन्यू ना हो जाए बस. ठीक है भाई, थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट. समोसा, अरे हाँ सात्विक भाई, क्या आइडिया है भाई. मेंबरशिप लेवल्स में समोसा और इमरती. ओ माय गॉड भाई, क्या आइडिया है भाई. 220 IQ. थैंक्स अ लॉट भाई, दैट इज सो आवर चैनल. थैंक्स. आई विल चेंज द नेम्स भाई immediately. What is the cost of chess-based database? I think it's like 3.5K or something per one भाई. I think so. 3.5K के आसपास है. आपको जीएम बनना कितना लगेगा यार? जीएम पता नहीं. आईएम तो मैं 4 महीने बन जाऊंगा. 4 महीने फुल एफर्ट विदाउट कोविड. आई थिंक आई शुड गेट टू आईएम 4 or 5 months. क्या हो रहा है भाई? बाय द वे चैट, ही हैज प्लेड बिशप C1. एक्सीलेंट मूव. आई थिंक कोई चैट में लिख रहा था बिशप का क्या करे, तरस आ रहा है बिशप पे. बिशप C1 प्लेड वेल. कुछ टैक्टिक्स कमिंग इन द एयर यार. मतलब चैट, लेट्स से नाइट B7 खेलो. ब्लैक इज लाइक नाइट को गेम में लाते हैं. Chat, what will white play? Come on chat, what will you play here as white? करूंगा, फॉलो करूंगा. अरे अक्षत भाई बस भाई आज कुछ ज्यादा ही हो गया भाई. अच्छा भाई थैंक्स अ लॉट. ये लेकिन एक क्वेश्चन है अक्षत भाई, ये छुपा क्या रहा है भाई ऐसे करके नीचे? लाइक ही इज डांसिंग लाइक दिस. आई डोंट नो, दैट साउंड्स अ बिट. थैंक्स अ लॉट अक्षत भाई. आज तो भाई इंसेन हो गया भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे आज क्या हो रहा है. थैंक्स अ लॉट. अरे पवन भाई, दैट वुड रियली हेल्प समबडी फॉर श्योर, बट आई थिंक उतना रिक्वायर्ड भी नहीं है. 3.5K इज इनफ फॉर द चेस बेस, बट या मैन थैंक्स अ लॉट भाई. अरे भाई आज तो भाई इंसेन. विदित मेरे 10 रुपए लगा दो. अरे नहीं भाई, ही इज नॉट प्लेड नाइट B7 चैट. अरे नंदकिशोर भाई टिक्कू फॉर आईएम. अरे यार यूपीआई से. अरे थैंक्स अ लॉट नंदकिशोर भाई.
अरे यार, thanks a lot, भाई. Thanks a lot. Means a lot, भाई. Means a lot. By the way, chat, a queen g4 is possible totally, but उससे better move है हमारे पास bishop takes h6, and if black captures तो उसके लाले लगाते गए हम. We will play bishop d5, knight f6 check, king g7, knight e8 check, queen a8, rook e7, and he can resign. So game is over. और डायरेक्ट मार भी सकते हो वैसे, इतना कोई वो नहीं है. सो आई थिंक चैट दैट इज द थ्रेट. बिशप h6 इज द थ्रेट. नाउ Mamedyarov कर दे ब्लंडर. कम ऑन मम्मी, कम ऑन Mamedyarov, कम ऑन Mamedyarov, ब्लंडर, ब्लंडर. कम ऑन शाक भाई, कम ऑन, दे दे गेम, दे दे भाई. Arjun has already drawn, Akash bhai. He's already drawn and he has won the challenges. Your courses is on any particular opening or general chess? Cham, 4 are on general chess, 1 is on runner system. That's what I understand really well. So, come on, Shaq bhai, come on. VD slightly better chat because I think he has the 2 bishops pointed towards Black's king. Black also has 2 bishops, but they have a kind of a defensive job. His rooks are doubled up. His knights are kind of ready to attack. They can enter the position at any moment. And bishop h6 is a serious threat now. Oh, I thought he played h5. I got scared for a second. Let me refresh. Why do you think this position is complete? It is quite black and white now. Who is in the why decided better bhai? And now come on Mamedyarov bhai, kar de yaar. De de bhai, game de de. Aaj fan ho tera Mamedyarov. Come on bhai, come on. Samosa confirmed bhai. Mamedyarov ko samosa confirmed. Come on. Oh, he played rook e6. He played rook e6 chat. He defended it. But now, let's have a look. First of all, bishop d2, trying to capture this. If knight b7, and now comes knight to b4 is kind of a position way for white to play, because if black cannot, he cannot really take this because of the rook hanging. So you can try to attack this center now. This is one way to play it. Second is, you could play queen g4 and start preparing bishop h6. Also again, yeah, this pin and the king is better on h8. Again, proof for this. Second, third, you could even capture. And after takes, you could give, for example, bishop d5 first, very important, this defensive piece. Let's say cd5, I don't know, queen g4 check, and if king h8, then comes knight to g5. Crazy ideas. And if you take h takes g5, rook takes e6, and white is winning. Now this is an engine line, of course, not possible to see very easy, but to be honest, I kind of like bishop d2 here. This is the move I would have probably played, because it kind of tempts black either to move his bishop back to b7, or to kind of play bishop d2, because I can capture and spoil your structure. If he captures, I will take with the pawn. I will have center. Do you have UPI number? As for I see very support. It is there in the description by there. Thanks a lot, bhai. I mean, what you've done is just insane, man. Thanks a lot, bhai. It's in the description. It is there. It is there, though. Game is not complex. It's great. Bhai. Carlsen already won the tournament. Yes. I think Carlsen, all he needs is a draw to confirm his win, but he's not won it yet, but he's very likely, because tomorrow he'll get a free point. And it also requires Rapport to kind of win, but that's not easy against Esipenko with black pieces. So, this is of course a huge, ये diagonal देख के bishop कितना strong हो गया भाई. इस bishop की power देखो. It's like मतलब body building करके आया bishop ये. So after bishop h6, I think black should take. I think he should take. And this is not completely winning for white yet. So after bishop d5, cd5, queen g4, he has to play the move king to f8 and not allow this knight g5 tactic. But still not easy to play this king f8, because yeah, I mean, this looks incredibly scary. I mean, even for a normal eye, knight g5 still, h5, rook e6, not an easy move to understand. I mean, even top GMs will struggle to understand this, I'm sure about it. So it's easy for engines, of course. But to be honest, I look at this position, bishop d2 feels so natural, because I can just take on a5 if you don't move anything. Then I have the c5 square. If you play the knight to b7, your knight is stupid on b7. If you take on c4, I capture with the pawn. I have a huge center. I'll use it to push your pieces back. So yeah, very good for white. Let's refresh. Fabi blundered, really? Ramkishore bhai, thanks for the kindness. Let me go to the game of Fabi again, if something has happened. Okay, what's the blunder here?
अरे यार फिर स्कैम भाई। चैट यू वन फॉर टुडे भाई, स्कैम हो गए भाई। 4-1 से हार रहा हूं मैं 3 पॉइंट वापस नहीं ले पाऊंगा भाई, जीत गए स्कैम से, अब मत करो स्कैम। अरे यार एनीवेज, प्रग ने वीडी क्लास ले ली। अरे अरे, by the way chat, Pragg has won. As you can see, Pragg showed up at the board and Duo got scared and did not show up, so Pragg has won his game. By the way, Carlsen is wearing a mask, yeah, so very interesting, very interesting. He does wear a mask. First or second like choice difference hai. Let's do the game of Vidit again, and VD has 20 minutes. VD has 20 minutes now. Not so easy, man. Not so easy. 20 minutes for VD. Let's have a look at Anish's game till then. Anish Giri chat has, he still has an outside chance to come first. If Caruana defeats Carlsen, he can still win this event. It is possible, but he needs some support from, let's say, Caruana. But now, after the move G5, we saw Bishop D2 played. This bishop can be transferred to the queen side now. Put some pressure here. Black plays G4, and now chat, I have a question for you. Knight to H4 or knight to E1, which do you think is better? Both are decent moves, I must say, but slight difference hai. Which one do you think is slightly better? Come on chat, let's go. Which one is better chat? Come on. How many moves does good opening prep go? Some point depends. Let's say it depends on your opponent's skills. If he's the grandmaster, of course you need 15-20 moves of prep. If it's like some noob, then 5 moves is enough. It depends on the competition you're facing actually. Yeah, so बहुत divided ग्रंथ है यहाँ पे. First of all, knight h4 is a decent move, but after the, you know, let's say bishop somewhere, this knight can sometimes get stranded. So it is a very good move. But for most people, I would recommend the move knight e1 because it's more logical. Knight goes to d3 and later on e5, f4 and so on. And knight h4 में क्या है? It's not so easy to bring this knight back. For example, bishop c2, knight के पास कोई square ही नहीं है. It has no squares now. मतलब it reminds me like कोई option नहीं बचा उसके पास. So that's why I feel knight e1 is a bit better, more practical at least, because it gives you more options and you don't have to, you will not blunder this knight. That's very important. So I would say most people, both are different strategies, but knight e1 is slightly better. Knight goes to the, मैंने बोला था, option between side and center, mostly go for the center, and that's why knight e1 is a bit better here. So let's go to VD's game. Oh, VD played क्या bishop d2? Oh, he played bishop d2. Awesome, he played my move. Yes, VD का approval लग चुका है. Bishop d2 played. And chat, black took on c4. Finally, he took the bishop pair. Pawn takes e4, and knight has gone to e7. Now black has the bishop pair. So that means कि attack करना थोड़ा मुश्किल हो गया. अब chat, very important. Black के पास bishop pair है. He just won the bishop pair. He just took your bishop. So what can you do? What could you play now to kind of reduce the advantage or remove the advantage from black? क्या खेल सकते हो बताओ चैट. तो मेरा कैमरा की बैटरी खत्म हो गई. I'll change the camera battery. बाद में मैंने तीसरी बैटरी आज ऑर्डर कर दी है. It will arrive I think in a couple of days or 3-4 days. So मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया है. आधार कार्ड कैम का टाइम खत्म होता जा रहा है I think. क्या पोज में अटका भाई मैं. Yeah, so chat, you are absolutely correct. Bishop f4 is an excellent move. Black के पास bishop pair है. He has just won the bishop pair, and that's why we have to, you know, not allow. अगर black के पास bishop pair रहेगा, he will always have counterplay, and that's why you play bishop f4. That is the best move in this position. Let me add the camera chat. Give me like 30 seconds. Okay. Yeah, bishop f4 is the best move, and I expect PD to play it because it's very understandable. And ऐसे में सोचने के लिए, you know, chat कई बार कहते हैं कितना move calculate करना है हमें. Like, let me quickly first of all add the camera, of course. Yeah. So many of you are confused यार. GMs कितना move सोचते हैं, कितना deep जाते हैं. इस केस में deep जाने की जरूरत ही नहीं है. You see bishop f4, you play bishop f4 because unless you're blundering something like ये pawn hanging हो या कुछ हो, which is, of course, technically it looks like it's hanging, but it's not really, because if queen d4, I take the bishop. If you take the bishop, I capture the knight, and your rook is kind of attacked, and it's kind of lost. So that's why black cannot take on d4, and bishop f4 automatically becomes a really good move because we want to exchange these bishops ताकि bishop पे advantage ना रहे. Very important. Knight ऐसे work नहीं कर रहा क्या?
इस पोजीशन में क्या नाइट f6, बट rook f6, isn't rook f6 good for black because queen is attacked, right? So black is absolutely fine here, and once you move the queen he will move the knight, so that is not working. Rook takes possible है chat, rook takes possible है यहाँ पे, rook takes possible है. Knight f4 लोगे तो यार I think black will take, let's say black takes, and now let's say you capture with any piece, पता नहीं कौन सा piece है, bishop takes. Now the issue is first of all queen takes d4 is possible, so black can win a pawn back, so that's already some compensation for black. So even if it is not loss for white, I would say this is very very difficult. That's really important. So अब knight bishop f4 में क्या है, takes के बाद knight attacks the rook, so black cannot take on d4. That's the beautiful part. So white is winning material here, so he cannot capture. And right now if he captures, I take on c7 again. So that's the important element here. d5 खेलेंगे भाई, d5 for sure खेलेंगे. पहले हमें पोजीशन इंप्रूव करनी है. I think we are not prepared for d5 because हमारे दो पीस d file पे हैं. We can't support the d pawn with the rooks now. So first let's move these pieces out of the way and then you will play d5 at the right moment. Knight f6 rook f6 chat. Knight f6 rook f6 and black is winning. So let's not sack a piece for free. Bishop h6. I mean, yeah, you could play it. You could play it. It's not a bad move because if black captures, then knight f6 works and it's winning for black. You could play it. But I feel that queen d4 के बाद it's like unclear a bit. It's a bit unclear. So I think best move is just to play bishop f4. We do not want to give the center pawn for the side pawn. Really important, yeah. Center pawn is usually more important. Of course यहाँ पे king थोड़ा नंगा हो रहा है, but it's अगर इन दोनों से कोई pawn मिलता ना, हाँ, तो I would give the d4 pawn for these pawns, but h6 pawn नहीं चाहिए. So let's play bishop f4. Come on, Vidi. Why don't mosquitoes bite Anand? Because he always is a good knight. अरे भाई टिकू भाई कुछ ज्यादा जल्द तो ना करो और वीडियो का टाइम इंप्रूव करो भाई यार. देखो, I don't know why he thought for so long on one move today, but 24 moves have been played. He has to play 16 more moves. I think he should be fine. 16 moves mean like 8 minutes of extra time. I'll do the clock. So he has 23 minutes for 16 moves. I think that's probably just enough. He does look stressed out. He's trying to calculate all of this. Let me show you. So he's trying to calculate. ऐसे करके बैठा है वो. So he's focused. That's a good deal. When you're low on time, the last thing you need is like, you know, lack of focus, because you will spend a lot of time recalculating your variations. ऐसे मोमेंट पे आपको हर वेरिएशन एक ही बार कैलकुलेट करनी है. रियली इंपॉर्टेंट. सेंट्रलाइज करते हैं भाई कैमरा को. हाँ, नाउ इट्स फाइन. Engine recommendation is also bishop f4, but I think ये मूव इज सो लॉजिकल मैन, सो लॉजिकल. दो बिशप्स हैं, एक एक्सचेंज करो, घर चलो, खुश रहो, पेट भरो. वेरी सिंपल. After bishop, what is best move of black? So bishop f4, and to be honest, you can't really prevent the trade of this bishop. I think that's very obvious. So you want to kind of get a square for this rook. So I think, oh भाई remove कर दो यार, मैं भूल गया. Sorry, my bad. So you can probably play a move like f5 now and try to exchange this rook. Really important. And let's say, you know, knight f6 check, rook f6, bishop takes c7, queen takes c7, rook takes e7, and white should obviously be better here. I mean, rook 7th rank पे पहुंच चुका है. He has the center. King is a bit weak, although bishop defends for now. And knight coming to e5, that's a very deadly square for the knight. Chat, knight on e5, usually 99.9% excellent square. So I do feel we should be much better here. But he could play other moves. Yeah, he could totally play bishop h6. It's not a bad move. It's also better for white. He could play other moves, man. He could play bishop c3. God knows, like so many good moves for white. That's why it's really good, because even if he plays something like the third best option, he is still better. That's a very good situation to be in, I would say, as white. Really, because Montu कौन है भाई? Who's Montu? Chat, do like the stream. Let's get to 1k likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. बिशप अगर d4 मारेगा तो भाई घर जाएगा खाली हाथ, बिकॉज में तुम्हारा बिशप मारेगा रे, और फिर तू रोएगा भाई, फिर तू खूब रोएगा, लेकिन तेरे को बिशप नहीं मिलेगा वापस. 24 moves chat have been played. अच्छा, Montu is really nickname. Montu. अच्छा, हाँ, I forgot. अरे हाँ. Right. Why you don't watch video vlog? No, I have seen his vlogs. I think मैंने स्टार्टिंग के तो सारे ही देखे हैं, स्पेशली जहां पे उसने बुक्स रिकमेंड करी थी, बट नाम मुझे ऐसे ध्यान नहीं था.
Who invented chess? Somebody in India for sure. Now it is done. No time now. There's enough time, bhai. There's enough time. There's enough time, I feel. But he has to move now. He has to move now. Come on, video. You cannot take so much time. Hi, Justin bhai. Thanks a lot. 20.2k हो गया क्या? Let me check. हाँ हो गया. Just हो गए. Just हो गए. 204. Make a move. Yeah, I'm a bishop 4. Yeah, let's go. Let's go, VD. Let's go, man. Bishop f4, bishop h6, bishop c3. Like so many moves possible. Come on, VD. Let's go. Check Nepo. Cringe tweet. I'll cringe. यार हम इतना अच्छा माहौल बन रहा है. वीडियो अटैक कर रहा है. क्या cringe होना है यार? छोड़ा ना. बाद में देखेंगे उसको. Yeah, Kraken only lost. I go to his game. This is the game chat. उसे किंग का तो आज पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया भाई शैंकलैंड ने. पूरे का पूरा भाई कत्लेआम मचा दिया भाई. इतना बुरी तरह मैंने किसी को हारते हुए देखा नहीं है पिछले 1 साल से. सो सॉरी, अनीश को देखा था कल. माय बैड. तो लेट्स गो टू द गेम ऑफ कार्लसन नाउ. Oh, Carlsen is not played here, really? Oh, Carlsen is not played. Very interesting. Carlsen also has like limited time on his clock now. Even Caruana. Let's go to the game of Vidit again. Oh, he played bishop h6. He played bishop h6. Oh my god, bishop h6 played. भाई अब क्या होगा भाई? अभी crazy attack आने वाला है. Does Vidit have an advantage? Yes, he does. He does. He does. He does. Totally, he does. टिकू भाई, यार टिपिट स्टॉर्म वो तो यार चैट का ही सपोर्ट है यार. मतलब इससे इनसेन. आई कांट इवन बिलीव इतना सपोर्ट मिला यार. I still can't believe it. Why? I still can't believe it. कि वहां पे 6000 की सुपर चैट लगी हुई है. It's insane and others as well. Insane भाई. Knight is only move. Yes, I do feel queen b4 is also a move possible. But knight g6 does make a lot of sense because first of all you keep your king solid. You don't want to open up your king. Second, you also kind of remove your knight from the attack of the rooks. That's also very important. So now, for example, bishop g7, king g7, knight g3 is white's plan. You could try to go for knight f5 check, knight h5 check, and rook e6, all possible. If rook e2 now, knight f5 check, king g8, and rook takes e2, and with queen h5 coming up, you know this is very dangerous. Knight h6 as well, rook e7 as well if this knight moves, h4, h5 as well. I think Vidit will have a huge attack here. So let's see what happens. What does Mamedyarov play? Judgment, हाँ वो एक बार आई थी. I think that was November 2020. एक बार आई 10K की. That was like one occasion ever. But I think वो तो एक वीडियो बना रहे थे. But yeah, that was awesome. But इतना सपोर्ट था मैंने आज तक कभी नहीं देखा भाई. It's insane. Want to make a move? Download Tinder. तरुण भाई यार, no offense, but cold my Tinder, yeah, I'm not so sure about it. I would highly suggest not going for it right now at least. Come on भाई Mamedyarov, कर दो ब्लंडर भाई. क्या ही खेलोगे यार, हार चुके हो. किंग तुम्हारा पूरा अटैक में है. यहाँ पे अटैक, यहाँ अटैक, यहाँ अटैक, यहाँ अटैक, सब अटैक भाई. हिकारू के आरो मारो भाई. कोई स्ट्रीम पे अभी ज्वाइन कर लगना चाहिए. हिकारू एनालाइज कर रहा है भाई. चलो लेट्स गो. सो this and this and this and chat and oh shit, कहाँ गए? एरो कहाँ गए? Okay, right, रुको. Let me make a lot of arrows, ठीक है? Lot of arrows. रुको भाई, रुको chat, रुको. I'll make a lot of arrows, ठीक है? रुको भाई, रुको. King नंगा, हाँ, queen नंगा, queen attack. Chat, रुको. Yeah, so chat, as we saw this variation, and then we can play knight f6 finally, and that with the finishing move, and with that black will have no clue. So this very simple variation that you saw just now, which I calculated in like 5 seconds, I think and ensures that Vidit should have an edge. So I do feel Vidit will win this for sure. So with this variation, I think Vidit will win. So I hope you all saw all of that, I think. सारे मूव तो वाइट के हैं. अरे भाई यार रक्षित भाई, क्वीन नंगा भाई. अरे भाई क्वीन नहीं भाई, किंग भाई, किंग. What is the point of taking so much time if you're not able to find this good move? Then this is Magnus really. You're correct there, bhai. Ashima, you're actually correct. That's the difference between Magnus and other players. He's very good time management. He's the best player in the world, and that's why he's the best. There are things really has to work on clearly. Time management is one of them, but I do feel he's much better here on position, even if time is not on his side. And I feel he has only 15 more moves to make when he will gain 50 more minutes. And if he can play the next 5 moves correctly, just 5,
I think he would probably have a much better position already. So then he can hurry with the 10 moves. So let's see if he's lucky. He can find the next moves very quickly. Let's see. Yes, Magnus West. I think we should take out merch जहाँ पे Magnus शक्ल होगी only for Anisha, like only for Anisha. I think she will keep ordering. I think chat NFT निकालो भाई, chat कोई अनीशा के NFT निकालो Magnus की शक्ल की भाई. I think she will buy it. Just joking भाई. Please explain after bishop takes. यार इतनी very simple version Manish भाई, you missed it. If pawn takes, the idea is knight f6, of course. You want to give a check, and now the rook is hanging. So rook takes f6, queen takes f6 should be completely winning for white. Rooks are entering the position. The h4 pawn is weak. Rook e3, rook g3 is completely winning. That's also gone. No, not NFT merge. Okay, direct Carlsen is here. Okay. Okay. Anisha, if you had a chance, let's put up a question. If you had a chance, all you have to do is take a flight, like let's say tomorrow or day after, and you would get to spend, let's say, 5 hours or like a dinner or lunch with Carlsen. Would you go? Like, would you go to Norway or any European country or Netherlands, for example? Let's say there's no COVID. Would you go? नहीं यार, अनीशा के लिए फोन नहीं करेंगे. Let her decide. Let her decide on किशोर भाई. Manners matters. Oh, nice. अनीशा गिरी, अनीशा गर्ल है. यस भाई, अनीशा गर्ल ही होगी. नो कौन बोलेगा यार, बहुत लोग नो बोलेंगे यार, खर्चा तो है ना. Times life matters. Anyway, Dad, let's go to the game of Anish now. अब बात आई है तो Anisha पे. Oh, he played e6 now. This bishop is a bit trapped here. Oh, he played 91. After g4, he played the move 91. And after e6, the bishop is kind of, a bit stuck. Yes, obviously, yes. Okay. I promise you, sometime I'll try to fix that through some means. I'll try to do that sometime. After COVID, of course. मुझे याद लाना. Channel पे regular लेना, please. I'll try to get that fixed at some moment. For sure. By the way, e6 played, and now he will try to probably play bishop f4, rook c1, knight d3, and so on. So, very symmetrical game, probably around equal, I feel. So, let's go to the game of, I was about to say Pragg, but that's already done. So, let's go to the game of Carlsen again. By the way, Carlsen, after the move c5, he played bishop to c6, trying to capture on f3. Caruana is like, Ghanta capture, tum kar lo capture. A4 played, trying to push his pass pawn, and I do feel Caruana has a slight edge. Let's see what happens here. 23 moves played, 23% discount guaranteed. VD game fast, really? Oh, he played queen d4. Nice. He did not play knight c6 now. Now chat, bishop f4. Let's go. इस चैनल का जेंडर रेशियो इंप्रूव हुआ है कि वही इंजीनियरिंग कॉलेज वाला है? आई थिंक सारे चेस चैनल्स का इंजीनियरिंग कॉलेज वाला ही होगा यार. I can check the ratio for you. रुको भाई, audience पे जाता हूँ and I will go to gender. अगर मुझे दिख जाए, female is 7%, male is 93%. I think that's understandable. Did he play queen g4? Did he blunder? Oh my god, did he blunder? रुको. He blundered! Fidi blundered! No! अबे यार, he missed queen defense g7. अरे पवन भाई, fuck! अरे पवन भाई, 5,000 रुपए भेज दिए, fuck! पवन भाई यार, that's huge. That's too huge भाई. अरे यार, अरे भाई, I don't know what to do. Thanks a lot, Pawan bhai. Means a lot, bhai, but that's a big amount, bhai. Thanks a lot, bhai. Thanks a lot. Bhai, he blundered. Fuck, he blundered. No, he missed queen defense g7. No, yeah, shit. अरे यार, f5 यार. Shit. Shit यार, अबे यार, ये क्या हो गया यार.
अबे f5 कैसे कर दिया भाई? अरे यार, he missed f5. Oh my God. पवन भाई, thanks a lot for super chat भाई, thanks a lot भाई, means a lot भाई, means a lot man. आज तो भाई crazy support भाई, I can't believe it. But yeah, that was the point chat. Now f5 defends the mate and attacks the queen, and the queen has to move. Unfortunately, it has no squares on the g file, and that means the bishop will be lost. Oh my God, did he blunder? By the way, Shark has seen it. Shark ने अभी ऐसे आंख उठाई और वीडियो को देखा ऐसे करके. I just saw it. He knows it's a blunder. f5 played. Crap. VD is lost. Crap. VD is lost, chat. Shit, yaar. Shit. That is shit. अरे यार. How could he miss it, man? Shit, man. How could he miss it? I don't know. Chat, that SC was for your emotional roller coaster. अरे पवन भाई, thanks a lot भाई. It means a lot, but बहुत बड़ा amount है भाई. I mean, I love it. Really feels me. अंदर से अच्छा लगता है सुपर चैट से. I will not be like, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है. It definitely feels nice because of two. It helps, and second because it means कि यार मतलब it's like अच्छा लगता है. It's like social approval, yeah, you're doing a good job. I think that's also very important. But 5K is a huge amount, bhai. But thanks a lot, bhai. Thanks a lot. Yaar, shit, man. VD has blundered, yaar. Usne chat, yaar, ye. Arey yaar. I don't care copyright, bhai. Still, yaar, shit, yaar. How can you miss f5? Arey yaar. Chalo, let's not look at it. अरे यार, that's just so bad. अरे यार, I mean, crap. ये क्या दिखा रहे हैं मुझे chat? Okay, I have to object to telecom scams. What the hell is this, by the way? They were showing somebody's ass now. Okay, I'm a bit doubtful of that. क्यों दिखाया उन्होंने? अरे यार, chat, he missed it. अरे यार, oh, he realizes. He just went like this. Oh my God, he just went like this. अरे यार, he realizes it now. Fuck. He's shaking his head. He's banging his head. अरे यार. That is so sad, man. That is so sad. He was so better, man. He was so much better. अरे यार. Yeah, he blundered, chat. He blundered. That is why it is very important, chat, to hold time on the clock. That is why it's so important, bhai. Time bacha ke rakho. It's really important. Take care of your clock. Always, I think a good rule of thumb is, chat, जितना टाइम ओपोनेंट के पास है उससे ज्यादा रखो. चाहे उसे 30 सेकंड ज्यादा हो, उससे नीचे मत जाओ. If your opponent has 44 minutes, you cannot have less than 40 minutes overall. अरे यार, that is so sad. यार, मेरा ऐसे दिल दर्द हो रहा है यार देख के. अरे यार, shit. अरे यार, I really feel sad. The thing is, chat, the bishop is kind of hanging. It's not hanging because the queen is spinning the pawn. But now the queen is attacked. The queen defends on g7. And now the issue is the queen has no squares on the g file. I hope everybody understands that. If the queen moves, I can now take the bishop or the knight. Both are winning. The queen needs to stay on the g file, and it has no squares. Bishop controls g3, bishop controls f7, and queen g5 is like, if queen g5, then I think I can just capture with the rook. So that's also an option. So the rook also attacks the bishop now, and it is lost. Arey, yeah, that is so sad. Yeah, but yeah, I know it's just a game, but this was a weird way to lose, I feel. Yeah. Queen g7 is best move. Yeah, but then it's resignable. If you play queen g7, you can pretty much resign because that's over. ऐसे बना तो मैं करता हूँ. Sweet bhai, I think what happened here was he just thought कि he just simply did not have any time on the clock, and he missed कि after f5 he missed. It's very simple to miss chess chat. It's simple to miss chat. After f5, queen defends the mate on g7. He thought queen g7 g4 खेलेंगे तो यहाँ पे mate हो रही है तो he cannot do anything. But he missed कि after queen g4 f5, the bishop is attacked, the queen is attacked, and the mate is defended.
and that's why he's lost. I think he will resign. He's shaking his head. He's still shaking his head. As you can see, he's very angry at himself, and he will resign. I feel he will resign. He will resign. He's very angry at himself. As you can see, very angry. Yeah, I hope Vidit can work on his chess a bit, because he's going to play the Grand Prix. He cannot afford such mistakes there. That would really cost him literally the candidate spot. So he has to be really, really careful. Chat, don't criticize VD. I think the thing is, it happens to everybody. हम लोग 10 बार दिन में blunder करते हैं ऐसा. The only reason I'm feeling bad is because he has such a good position. Yeah, he has such a good position, man. Such a good position. Just look at this position here, and now you could play Bishop F4. Let's say Bishop F4, then let's say Knight F4. These knights have kind of almost trapped the rook. Let's say Rook E5. And now you play Queen G4, because if F5, now comes Knight F6 check, and this is a lot more different. So now VD will have to resign, chat. I think he'll have to resign. There's nothing else. I like people who are 800 rating. Tarun, I think, see, I'll tell you what happens. I'll tell you what happens. We are used to criticizing people who are stronger than us. We do it all the time during cricket. So when people start criticizing somebody who's much stronger, I see it as something positive. Even if people don't play the game, don't understand the game that well, they still are passionate enough. They want really to win. It's like hidden admiration, yeah. But the only question is, it should not be hate. You can say, okay, really blundered, I'm disappointed. Yes, that's valuable. But to criticize really like, that's the problem there. So as long as your criticism is, logical, it's like constructive criticism, I think it's all fine. So I don't think just because they are dissing VD, it's a bad thing. It only means they are passionate about him. That's one positive sign. But keep it civil, keep it like constructive. That's the main thing. F in the chat, and I don't mean friendly. Arey yaar. VD brand, I'm disappointed. Yeah, that's probably a good way to put it. Overpressing caused him against Pragg, and same happened today. Unfortunate. Visual, but overpressing is the skill why Carlsen is the world champion. So overpressing should not be an issue. Like, of course, overpressing is wrong, but just kind of trying to win is not a bad deal. The only question is, he should have found this. He should have found this. F5 at his level is very elementary, I feel. So he should not have missed this. Knight F6, yeah, but Queen takes F6. It does feel like Queen is hanging. So if Rook F6, you do win with Queen G7 mate or Queen D4. But he can capture with the Queen, and that's the issue. So it doesn't work. Yeah, he's really sad. He's really sad. I am feeling sad for him. I am feeling sad for him. I'm literally sitting at home, and he's playing an event jahan pe he literally drew against Carlsen yesterday. Yeah? So that's a huge letdown for him. कोई बात नहीं. Tomorrow he plays one more game. That's really important. And he'll play one more against Kadakin. So let's see. I thought on top levels, blindness were uncommon. It is uncommon for me. It is really uncommon. I think I can assure you, if you are playing some 2650 Grandmaster chat, let's say तुम खेल रहे हो, and he has, let's say 2 minutes on the clock. ठीक है? You have 2 hours. And let's say your rating is 1500 or let's say 1800. Okay, you're 1800 per day and he's 2600 per day, and you have 2 hours, he has 2 minutes. It's very likely you will end up beating him. It's very likely. I mean, of course, he'll win most of the games, but ऐसा नहीं है कि it will complete whitewash. You will win some games for sure. Why? Because you have more time to calculate, and even with his 2600 ELO, he will not be able to figure out complicated positions really well, and he might blunder. So time is really important, and this is the problem he had. He completely missed after queen, after F5 queen defends the G7 pawn, and it only happened because he has less time. If he had, like, let's say 25 minutes on the clock, let's say 20 minutes more just, he would never blunder this. Never. Even when you see, you're sitting like this on a board, you look at the clock and your heart starts racing. Yeah, oh my god, I have 3 minutes. Oh my god, I have 3 minutes. I have to play fast. Oh my god, I have to play fast. And that really makes you, you are more focused on the clock than the board, and that causes these blind spots. Anish, thank you for that. Sad really losing, but Mohan Goban won Kolkata Derby. Sorry, Mohan Goban. Achha. Okay, Mohan Bagan. I hope I'm translating that correctly. Why? I hope so. It's because of time, Rishal bhai. For sure, if he had 20 minutes, he would not blunder this. Bishop takes pawn.
Black can just take back with the queen. He can even take on d3 now. And the problem is the queen is still attacked and you still don't have any squares. For example, queen g5, trying to keep it like this. Then you could play rook g6 and pick up the bishop. You could even technically capture here. Even this is not the end of the world. But I think rook g6 looks like a very natural move. Queen e7, fe4. And you can see black has 2 pieces, white has 1 piece. And that is a lost game with also some attack. Such a good position and 1 move. None of that's absolutely true. Chess का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है? You can play a marvelous game for like 5 hours and then lose it in 1 move. No, you are not, but it's fine because we won. Okay. So by the way, chat, let's go to Carlsen's game once we come to Vidit's game. Okay, nothing has happened. Only rook c8 happened. So 24 moves in Carlsen's game, 24% discount confirm. Okay, still less than 30%. Let's go to Anish's game now. Oh, Anish is trying to put some pressure, yeah. Queen on a7, b7, rook on a7. Yeah, Anish trying to put some pressure. Black also trying to put some pressure. So some counterplay building up here. All the pawns are symmetrical, so I do expect a draw still. Let's go to with this game again. Yeah. So chat now. Now it's all down to Vidi. Will he resign or will he play on? He's trying to find some strategy. Jahan pe, he should obviously use all his time now and try to come up with something. कोई trap, कुछ भी हल्का सा कुछ हो, जहाँ पे कुछ कुछ हल्का सा trap हो, जहाँ possible हो. Vidi just did a Caruana. No, Caruana was more simple. I think that was just a simple blunder. Yeah, Primo, he blundered. He has to do 30 minutes meditation or getting out of this game and be ready for tomorrow. Yeah, but I do feel sad. I really feel sad because, yeah, when I saw Queen G4, I was like, oh, that is so sad, yeah. I mean, time is not the issue, man. I like, BD would put, yeah, 17 seconds now. Will he resign? Shaq का expression देखो भाई. Shaq expression is like, I mean, तुमने खेल दिया. मेरी गलती नहीं है. He's like, मतलब ऐसे बैठा हुआ वो. He captures on G7 chat. He's playing on. Okay. Come on, Shaq, कुछ blunder करते भाई. Come on. What really important. That's really important. So I hope so कि इसको पूरा support मिलेगा. मजा ही आ गया. आजकल कार्लसन से बच गया था. अरे यार. आयुष भाई से मजे की क्या बात है. अच्छा कल. Okay. Shaq, please blunder. Yeah, I hope so. But यहाँ blunder करने के chances कम है यार. मुश्किल है. And he also has time. He also has 43 minutes on the clock. यहाँ पे कुछ 10 seconds होते तो हम सोचते भी. I agree, but he can do whatever he wants in his free time. Maybe he likes to chill by making vlogs, unlike other grandmasters who play chess. Tarun, yeah, I mean, he is a human. He can totally, chill out a bit. He's not forced to, prepare for like 24 hours a day. He can do this like what he wants to. And I do feel he's India's #1 prospect right now. And we have to support him unconditionally. There's no condition there. I think Marilyn Monroe का मैं बार-बार quote फेंकता रहता हूँ कि if you cannot handle me at my worst, you don't deserve me at my best, and that's the same case. But unfortunately here, this is one of the worst cases, and yeah, he has blundered. Queen G7 played, but okay, does he have any compensation here? 1, 2, 3, 4, 5 pawns. 1, 2, 3, 4. So 1 pawn for a piece. Knight G5. Rook E2 now. Rook E2. Okay, let him play Rook E2. Yeah, nothing, Yadav, nothing, I think. Because just Bishop D6 defending the knight, and that should be over. Knight ऐसे check queen पे discovery करके black queen ऐसा नहीं यार. अगर उस position if he had played knight f6, let me go back. Knight f6, just queen takes f6, and the queen defends d7, so that was not working. This is the current position, chat. Yeah, he took on e2. Now rook takes e2 will play. Who committed on Magnus while streaming with girls while thinking he can do whatever he wants? Yeah, of course he can do whatever he wants. That's not a problem. Is it possible Fabi can win this tournament? Manas, yes, he has to beat Carlsen for that though. I can win this against Vidi Shonak. Yeah, probably you can. Yeah, not a good position, chat. And the thing is, this pawn is hanging. This knight is kind of हवा में लटका हुआ है ऐसे करके. This pawn is weak. Yeah, the position also is not looking so great. Yeah, it's heartbreaking. Yeah, it is. Anyway, don't worry, chat. I mean, I think he will come back tomorrow. Kal Karakin not in good form. So I think he will definitely have some chances tomorrow. And जो भी है, I think we should
हमारा सपोर्ट अनकंडीशनल होना चाहिए यार, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। दिस इज द वीडियो गेम चैट। विदित ओपी यार, हार जीत आती रहेगी, हमने सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो हम एग्जैक्टली दैट्स रियली इंपॉर्टेंट यार। ऐसा मुंह करके बैठा है, शाक को ही बुरा लग रहा होगा यार, वो होता है यार, आई मीन वो होता है। आई थिंक इट्स हैपेंड टू मी एज वेल when I have blundered, yeah, my opponent has blundered, even I feel a bit sad. Knight g6 played, by the way. Okay, any chances क्या? Any chances, like any chance of a counter play? अगर ये pawn ना होता कुछ ना कुछ उम्मीद कर सकते थे, but with this pawn there's nothing. I do feel this is back to bonus match, surely pawn by. I mean we are humans, our psychology is going to definitely influence our decisions, and I do feel कि it's like ये कभी notice करना chat, especially in OTB tournaments. When you blunder in one game, in the future games, you try to prevent blunders. So every move you are like, am I blundering something? Am I blundering something? Am I blundering something? And this reason will cause you to blunder even more. Like that's so common in chess. So be very careful. I think the best way to come up over a blunder is, I think Fabi mentioned this once while he was playing the candidates. If you blunder something, you lose horribly. Don't look at the chessboard. Go out, watch a movie, talk to your friends, enjoy. Enjoy like chess means nothing to you. It sounds counterproductive, but that's the best way. Enjoy your life for a few hours, for a day if possible, and then come back and you'll play much better chess. That's what Fabi did, by the way. He saw a movie during the candidates. That's just saying. So, VD का क्या हो गया? Carlsen का लगा दो यार. We'll of course follow Carlsen game as well, but of course, Carlsen game it's going very slow. Queen to play by Carlsen now. And he's trying to go to g4 and trying to mate Caruana. So very interesting position now in both games. Caruana has to win if he wants to get first place. That's the only hope he has. Agar second, third pe khush hai to haan, draw is also fine. Let's go to Vidit's game again. Anish game, by the way. What has happened here? Rook C. Okay, after knight f6, rook a7, rook c4. Nothing has happened yet. Yeah, very balanced. Structure similar है यार, pawn structure बिल्कुल symmetrical है. That increases the probability कि draw होगा by a huge fraction. So let's go to the Vidit game again. Yeah, Vidit is like अरे यार ऐसे करके बैठा है. He's like अरे यार, yeah, it's breaking my heart. I don't know, it's breaking my heart. अरे यार, I hope he recovers. अरे यार. वीडियो हमें स्टार्टिंग में अच्छा खेलता है टूर्नामेंट में और फिर आखिर में हारकर, या आई मीन यार डोंट आरजी भाई, सिविल लैंग्वेज ऑलवेज. इट्स लाइक बी सिविल मैन. वीडियो हैज ऑल द मूव्स इन हिज नेपोस. अरे नहीं नेपो बेचारा क्यों रोस्ट आता है भाई? कुछ भी कोई भी घटिया खेले बेचारा नेपो रोस्ट जाएगा बीच में बेचारा. वो कह रहा है भाई मेरे को तोड़ना बंद करो भाई, हो गया वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हो गया, अगली वाली आने वाली है अब. सोचो भाई कल टिक्कू भाई से ऐसा हो, हमको फुल सपोर्ट करना है यार. मुझे क्यों गुस्से बैठ रहे हो? बट आई अंडरस्टैंड भाई. ड्रॉइंग अगेंस्ट मैग्नस, व्हाट ऑन यू अबाउट? या ट्रू. By the way, rook d8 played, excellent move by Mamedyarov. Yeah, going for counter play, not trying to defend like crazy. Vidi will probably just take on c6 now. Yeah, he takes on c6. And Nepo can just move the bishop, I feel. Maybe, for example, bishop b8 is a very good move. Yeah, he plays bishop b8. The best move is bishop b8 because it prevents rook c7. So there is no check. And oh, sorry, I played that. There is no rook c7 and you cannot pick up the pawn. And now the rook is coming into the game. And chat, I have a question for you. If knight b4, what is black moves? We'll play knight e1. What is black's move now, chat? If white plays knight b4, black's move. Come on, chat. Shaq, of course. Shaq, sorry, my bad. भाई टाटा स्काई टाटा प्ले हो गया है, ये क्या है भाई? ये शाक को नेपो बोल दिया. Yeah, rook d1 will be mate actually. That will be mate because the bishop controls h2. Very important. So that's why Vidi plays knight to e1 now. And his idea is to bring the king to e2 if rook d1. But it does feel like it should be lost because these pawns are connected. These pawns are weak. By the way, chat, the only way Vidi can hold this, if he can exchange these two pawns for these two pawns, then he has slight chances. Yeah, Vidi, अरे यार, that's so. अरे यार, he's put the head on his table यार, ऐसे करके बैठा है वो टेबल पे. अरे यार, that's so sad. I really hope he recovers for tomorrow because कल important game है.
and he has to come with the correct mindset into Grand Prix. He cannot really, have this mindset कि अरे blunder हो गया. VDS, okay. चेस में फिक्सिंग होता है, करते हैं भाई कुछ लोग राउंड रॉबिन्स में तो करते हैं भाई. That's why I don't play round robins, like at least for norms. कल भी जीतेगा भाई, I hope so. Magnus winning again, really? क्या बात कर रहे हो यार? ये मैग्नस क्या खा के आता है भाई? मैग्नस विनिंग अगेन भाई, क्या आदमी है भाई ये? सो आफ्टर द मूव क्वीन e2, Fabi apparently had to play knight f3, and after bishop f3 he had moved rook b2, and that kind of attacks the queen. That was the way for Fabi to play, but he played the move f3, and now comes rook takes d4, bishop takes d4, queen takes d2, and Carlsen is again better. That Carlsen, I think, is going to win the event, and I think he totally deserves it, because considering his play, how he has played in recent games, insane bhai, insane. And this just tells you कि वीडियो ने कल कितना बढ़िया खेला, because Caruana is playing with the white pieces and he's losing, and Caruana is supposed to be, the world number 2-3. So Vidit played really well yesterday, and Caruana is worse. So let's go to the game of Vidit now. Besides, I think really OP and hoping for his excellent performance in the Grand Prix 2-2. Magnus Bhaiya is in the. I think if I start a new channel वहाँ पे मैं stream करूँ Carlsen की games, तो I think अनीशा तो for sure आएगी. One viewer तो मेरा confirmed है. I think one thing really has to improve a lot is handling nerves when time trouble to get into that 2760 level. Yes, you will agree to this. I agree, bhai, agree. I think that's time management is something he has to work on. I feel. It's not. I think time pressure में सब लोग ब्लंडर करते हैं. It's much better if you just don't fall under time pressure. ऐसे बहुत लोगों ने मुझे बोला है, because I am also kind of a culprit there. I fall under time pressure quite a bit. So बहुत लोगों ने मुझे यही बोला है कि just don't fall under time pressure. Because ब्लंडर होंगे ही. They will happen at some moment. So the best way to avoid it is, of course, practice tactics, but also try to not fall under time pressure. That's very important. This is heartbreaking, true by true. Magnus should quit unfair on other players. ये बढ़िया भाई. माइकल जॉर्डन को बोल दे तुम खेलना छोड़ दो भाई. मोहम्मद अली को बोल खेलना छोड़ दो भाई, बिकॉज बाकी सारे लोग कह रहे हैं भाई चीटिंग. क्या से क्या हो गया. ये तो है यार. कहाँ हम कह रहे थे यार कि वीडियो अटैक करेगा. वी वर लाइक समवेयर हियर वी लाइक ओके नाउ क्वीन g4 knight f5 अटैक कमिंग. ओ माय गॉड बिशप f4 क्या अटैक, क्या ये किंग बचेगा. एंड सडनली yeah, it's like lost. अरे यार. Anish is winning, really? Let's have a look. I'm not sure if he's winning, to be honest. I do see this rook, which is a bit weirdly placed now. For example, let's say if I can defend this pawn. Also, interesting. So if I play rook da1, he takes on b2. That's a very interesting position here. And bishop c1, rook b3, bishop a3. Wow, rook e8, and now queen f7. अरे भाई क्या ही idea है. Bishop c1, bishop a3, nice. But I don't think Anish will find it. Not so easy to find this idea. Rook a1, rook b2, bishop c1, bishop a3, and takes on f8. Not easy at all. I don't think he will find this though. ये तो मुझे देख कर दर्द हो रहा है. वीडियोस 2 बजे तक पिएगा. अरे नहीं यार, कल भी मैच है. The Hills Are Alive सुना है क्या? Oh, he played queen to c6. Yeah, it was very difficult to find that move, by the way. And now probably Grindelis is fine. But I still feel he should be slightly better with some pressure on the queen side. But yeah, the b2 pawn is hanging at some moment. So let's go to the game of Carlsen again. कुछ खेला क्या Caruana ने? Oh, Carlsen played queen f4 again. He's putting pressure on this pawn. He will obviously like to capture this pawn and gain a very strong bishop here. Then he could go h5, h4, h3, break this pawn structure. And this pawn is a passed pawn. It keeps white's major pieces busy here. And he will combine an attack on the king and some pressure here. Chat, I'll be back in 9 seconds.
मेरी मॉम थी यार. Tankland won move 26 with move 26 5 क्या बात कर रहे हो? Really? 26 में किया क्या? ये पिज्जा नहीं है, क्रॉइसॉन टाइप है कुछ. हाँ थोड़ा बर्न्ट लग रहा है मुझे नीचे से, लेकिन डैड शायद बाहर गए थे आज. He went out after a long while because he had COVID, so today he went out and got something. जला हुआ तो लग रहा है नीचे से. By the way, chat, let me check it out. So basically, move number 26 पे Caruana blundered. Interesting. Then Karyakin lost in move 26 moves. Very interesting. And then VD blundered move 26. Really क्या? Let me check. Oh, सही बात है भाई. 26 move पे blunder किया था. By the way, yeah, chat. This is going to be lost. 91, 95, Rook E6, King F7, Rook H6, Rook D1, King F1, and Knight takes C4. And this is lost, of course, because VD loses one more pawn now. This is going to be lost. Arey yaar. रवि तेजा भाई, रवि तेजा आप आइए, आप वही रवि तेजा IM हो क्या? I've played against Raviteja IM. Is it the same IM or is it somebody else? Welcome to the channel भाई. कुछ नहीं, VD ग्रैंड पिक्स फाड़ देगा. बिल्कुल भाई, ग्रैंड पिक्स में VD भाई पूरा डन डनाडन लेके आएगा भाई. देखो तुम क्या पेलेगा. He's trying to defend, but the issue is, yeah, he needs to exchange these two pawns, man. ये दोनों pawn हरवा देंगे उसको. A7 and B6. That's the problem here. वंशी में उसका मजाक नहीं हो रहा भाई, उसका मजाक कब उड़ा यार. आई फील हार्ट ब्रोकन फॉर हिम. आई वांट हिम टू विन भाई. मैं मजाक क्यों रहूंगा? मैं तो कदाकिन का मजाक नहीं उड़ा रहा. अब वो तो ट्वीट करता है. या वीडी इज नॉट, या आई मीन दिस इज जस्ट सैड मैन. दिस इज सैड. चो वीडी इज क्राइंग फेस क्यों भाई? चैट. ओह, नाइट E3. अरे भाई कतले मूव. दैट्स ओवर चैट. डिजाइन्स किंग E2 ओनली मूव. Chat, King E2. If F takes, there is Bishop G3, and that is game over. Knight hanging, Rook hanging. And if you play the move King E2, chat, Black to play and win. Find the final move for Black. I think VD will resign now. The game is over. VD will resign, chat. He will resign. I feel. Let me show you. Yeah, he will resign. Arey yaar. Arey yaar. अरे यार, अरे he's actually crying. अरे यार, he's actually crying. छोड़ो यार, देखना नहीं है. अरे यार, he's actually crying. He's actually crying. Shit. अरे यार, अरे ऐसे वो दिल में ऐसे अजीब लग रहा है देख के. अरे यार, shit. He has such a great position, man. He has such a great position. Yeah, VD is going to resign, chat. He's going to resign. He's going to resign, I think. Yeah, he's going to resign. He's going to resign, I feel. Arey yaar. Yeah, he has resigned, guys. VD has resigned, and that means Shark has won. Chat पूरा गुड विशेस लिखना भाई VD को यार, हर जगह सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे टैग कर, ट्विटर पे भेजो, इंस्टा पे भेजो, where you can. Make him feel कि भाई it's not a, he can move on and he can come back. So it's really important. कल कार्सन को एक फ्री पॉइंट मिलेगा भाई. वन ऑफ द बेस्ट टीमर्स आउट देयर. आपके साथ बैठ के बैठे टाइम का पता ही नहीं चलता. अरे थैंक्स ऑल डे भाई, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स. साकेत भाई, ये बहुत लोग रोते हैं भाई. आई थिंक इट वाज वंस, एक बार कार्सन ने पूछा गया था कि आपने रोना कब स्टार्ट किया, रोना कब छोड़ा, लाइक जब कब बड़े हुए इतने कि रोना छोड़ दिया. वो कहता मैंने रोना कभी बंद किया ही नहीं है. सो इट्स वेरी कॉमन फॉर चेस प्लेयर्स टू फील दैट वे. इवन आई हैव फेल्ट इट, एवरीबॉडी हैज फेल्ट इट. या ही हैज रिजाइन्ड, चैट. सो VD हैज लॉस्ट हिज गेम. This is the move he blundered on, by the way. As you can see, F5 के बाद he thought after Queen G4 he's threatening mate, but after F5 the mate is defended and the rook attacks the bishop and the pawn attacks the queen, and he could not really save both the pieces. So that's why it was a kind of a fork, and VD has indeed lost, chat. He has lost. So पूरा support करना भाई, पूरा support करना. I don't think he's crying because of like toxic people or anything. Yeah, that's not the case. It's just
how you feel as a chess player when you lose a game jahan par you are much better. So that's a bit sad. Yeah, this is the final position and he has resigned because if king e2, then rook e1 check, king e1 and knight g2 and the rook is lost. So with that, Shakriya Mamedyarov has won against Vidit. We go to the game of Anish Giri once. Knight e4 played by Grandelius. Interesting. We go to the game of the challengers. Check out Surya's game now. Yes, in the stream with Butte's sisters, Magnus said that. Okay. मुझे ही सुना रहा है. Yeah, Sakib, I feel you, man. I feel you. Chat, by the way, Arjun has drawn his game. That means Arjun has won the challenger section. He's 1.5 points ahead of his competitors, and with the tiebreak, he has already qualified. He's already won the event and he is qualified for the Masters next year. Very important. Next is Surya Ganguly. Surya Ganguly is losing against Erwin Lamy. You can see the strong pawn on e4. Knight takes e4 coming up. Surya will lose today. That is very clear. Not a good tournament for Surya, I feel. Although Arjun had a great tournament, he will win the event. Vidit lost, Sakunba. He lost. This is the... एक second, bhai. Let me put up the final standings in the challengers. So in the challengers chat, as you can see, Arjun 9.5. He has won the event. Surya on 9th position. Not a great tournament for him. He will go further down. Now we come to the main section where Pragg won the game against Dubov by forfeit because Dubov has COVID right now. Jordan is playing against Duda right now. They're still playing. It's a balanced position. Shankran crushed Kraken today, and I expect it to eat in the next hour or so. Anish Giri playing against Grandelius. Anish is slightly better, but now he has made a mistake with knight d3, and now rook c4 gives Grandelius a slight plus somehow because the d4 pawn is hanging. So maybe Anish also losing today. Totally possible. Vidit has lost to Mamedyarov, a heartbreaking game. It was very sad to see him lose like this. Esipenko drew against Rapport in the rook endgame, and Carlsen is winning against Caruana in this position. So lot of surprising results today, to be honest, because I expected Carlsen Caruana to draw. I expected Vidit to at least draw, if not win, and Anish, of course, expected to win. But just as brutal sometimes, chat, this is not one of the best days we have had in terms of Indian players. But जो भी है कोई बात नहीं यार, it's not a big deal. Video will come back. अभी उसके पास Grand Prix है, बहुत important tournament है. That is really important, and yeah, I feel he can crush there. Sahil Bhai सारे Indians नहीं यार, ऐसे मत बोलो यार. I mean, I think Arjun had a great day. He has won the event, and it's not a bad day. You learn something. You'll probably VD का पॉइंट समझाओ. Okay. So VD game में he was playing this position where he could have played a move like bishop f4 and the material would be equal and he would be slightly better, but he played queen g4. The idea was to attack this, but he missed after f5. There is no mate on g7 because the queen defends the pawn, and now the bishop is hanging with the rook and the queen is hanging, so you cannot have the chance to defend both pieces. You can move the queen, but the rook will take the bishop and that is lost. So that's why VD had to go for some complications like this, but this is just a piece down, and Mamedyarov, of course, will convert this a piece up. So and we saw now 93, the crushing move, and that's game over. So VD lost this game. Stream end, I don't know, chat, because all Indians games have actually finished, because as you can see, Surya is completely lost. He will lose for sure. There's no way he's saving this game. Arjun has drawn, and in terms of Pragg has already won against Dubov, and Vidit has lost against Mamedyarov. So don't show this game. Yeah, man, I know, bhai, I know what you feel. I think Anish and Carlsen are remaining, but technically all the games by Indians have finished now. Duda won, really? Let me check. No, it's still a draw, yeah, still equal. Balanced material, both king are a bit weak, so I do feel it's balanced. So standings at the Masters ki chat. Standings very important. Let's refresh. And yes, Grand Prix Classical Tournament, by the way. And naam to suna hoga, haan, Erigaisi Arjun ka. So Carlsen is 7.5, chat, Mamedyarov 7.5, Rapport 7.5, Esipenko 6.5, and Anish 6.5. And that means Carlsen will win today. He will go to 8.5. He will also win. By the way, chat, with this, Carlsen will probably go to 9.5 points and win the event. So that's insane. That's an insane score by Carlsen, and he'll probably end up gaining some rating points, I guess. So a step towards 2900, I feel. And Mamedyarov and Rapport still have a chance to come second and third. And of course, depends if Anish wins today and Esipenko wins. So
These are the results. Anish losing. Yeah, Anish is slightly worse after rook c4, but still not completely lost. So I do feel he will have his own chances to come back, because he will probably end up winning the b6 pawn at some moment. So that I think I'll end the stream now. I'll end the stream at exactly 10 p.m. So if you have any questions, you can ask me. And thanks for the support chat. इतना support भाई. आज तो भाई super chat देख के मेरे को heart attack आने वाला था भाई. Thanks a lot भाई. Thanks a lot everyone भाई. पवन भाई, Aditya भाई, everybody, Nand Kishore भाई, I mean Akshat भाई, I mean everybody, Vivek भाई. Thanks a lot everyone. I helped a lot. And आज की game थोड़ी सी disappointing थी, but I think we will have tomorrow the final day and it will be a lot of fun. Do I see Anish losing now? Arey, I will not look at this. We'll get a Magnus game. ठीक है? Let's not look at Anish losing right now. वीडियो पे एंड चैट पूरा मतलब फैला दो यार, मतलब पूरा या सैटरडे प्रॉब्ली सैटरडे पूरा मतलब ट्विटर पे जाके सपोर्ट दो यार. वीडी वी लव यू ब्रो. लेट्स गो मैन, लेट्स गो. पूरा सपोर्ट करो. लाइक एक बंदा भी नेगेटिव कमेंट नहीं लिखना चाहिए. आई थिंक व्हेन पीपल सपोर्ट यू नो, तो अच्छा लगता है कि अरे यार इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं. दैट रियली फील्स नाइस. सो यहाँ पे तो ठीक है, बट आई थिंक उसको पूरा सोशल मीडिया पे सपोर्ट करो पूरा यार. कल चैट 4:30 राउंड है. टुमारो एटली 4:30 फाइनल राउंड. We'll know who the winner is. Maybe there'll be a tie break. Who knows? Vidit has not defeated any high ranked player in this tournament. Listen, that's true, but I think he drew against Carlsen. He drew against, I think, he defeated Dubov, by the way, who's also just as strong as anybody in this tournament. So he had a good tournament. I think he lost because of his time management, I feel. बीच में सब करेंगे भाई, करेंगे जल्दी करेंगे. I think time management से हारे वो. He lost against, I think, this game and also the game against, I think it was against Jordan, right? Rook c8. जहां ब्लंडर किया था टाइम. सो he lost 2 games clearly because of time pressure. 2 games, one he would have won and one he would have drawn. So that was the problem there. Erigaisi Arjun, कल relatives आ रहे हैं. अरे नाइस हमको बोलना यार. आप वो बोलेंगे ना, अनीशा शादी कब कर रहे हो? बस मैग्नस की कॉल का इंतजार है. Is Fabi completely losing? Not completely losing yet. But I do feel that practically with this pass pawn, it's very difficult to play for white. Black will also push this pawn. He will capture on e5. He will play e6, put the bishop on d5. So the bishops will be a complete beast in this game. Arjun has won chat. Arjun has won. He has drawn today, and that means he has won the event with a score of 9.5 already. Regardless if the opponent also scores like 9.5, because he has defeated Rinath on tiebreak, so I think he will still be the winner. He has been announced as the winner of the challenges, and he'll play the Masters next year. So chat, I will see you tomorrow. मैंने भैया से कैसे शादी करूं? It's in. अरे ठीक है. Sorry, my bad. Willie is literally crying. Yeah. I mean, he'll be sad today. I know he'll be sad today. He'll be sad today for sure. Is Grand Prix a classical tournament? Yes, it's a classical tournament. Yes, it's a classical tournament. Chat. Indeed, it is. VD OP यार पूरा सपोर्ट करो VD को. I think he will come back. We know how strong he is and he will surely come back. डुओ का फिर कुछ लफड़ा हुआ क्या कि वापस आ रहा ऐसे बोल रहे? शायद नहीं, कुछ लफड़ा नहीं हुआ भाई. डुओ इज फाइन. सो आई सी यू टुमारो चैट. लो लॉट नहीं है भाई. कल एक और गेम बाकी है. कल कराकिन से मैच है भाई. कल तो डबल इंसेंटिव है जीतने के लिए. सो बाय चैट. आई सी यू टुमारो एट 4:30 PM. कल 2 घंटा पहले है. Take care. Keep smiling as always. I'll see you tomorrow. Bye chat. एक बार अनीश की हम देख के आते हैं. Anish has drawn chat. Anish has drawn. बिल्कुल सही टाइम पे ड्रॉ ऑफर अनीश का. Anish has drawn his game. बच गया भाई. बाल बच गया अनीश. He was slightly worse after rook c4 because the d4 pawn is hanging. So Anish holds somehow, and hopefully I think video will come back tomorrow. So yeah, Grand Prix is waiting. It's definitely waiting. So bye chat. I'll see you tomorrow. Take care. Keep smiling as always. Bye chat. And thanks for the support, man. Means a lot. I'll see you tomorrow. Bye chat.